On your sound कर दो sound नहीं ठीक है याद रखिए 7 लाख रुपए माइक पोर्ट्रेट पे लेके तो जबरदस्त मैं ठीक है तो सारा दे दो ठीक है is one of our keynote speakers and special guests. Chairperson of Technical Session 1, Dr. Tan Negi. Co-chairperson, Dr. Savita Negi. Keynote speakers, esteemed participants, and scholarly delegates. On behalf of our college principal, Dr. Reckong Chauhan, and organizing committee, staff, CA and students, I extend a very warm welcome into this ceremony of International Culture and Conservation, Cyber Pathway to Sustainable Prosperity, being organized by our college in this beautiful town, Reckong. Dr. Gyanchand, Fact and Vehicle guide you to intellectual explorations has been running through insightful presentations and stimulating discussions. Let us remember that our purpose is to learn, collaborate, and catalyze change in the topic of this international conference. It's a golden opportunity for each one of us to enrich and enlighten ourselves. May I now request Dr. Uttam Chauhan, the working principal of the college, to facilitate special guest, Dr. Pankaj Sotia, principal college of we presented you a periodic chart into the traditional our guests and dignitaries by presenting the periodic chart and purpose. Sir, let me now invite Professor Janet Negi to facilitate Dr. Brajesh Chauhan, our special guest, keynote speaker, who is bringing a good level and organization of this trade international conference.
Our special guests, Dr. Raju, Niji, Associate Professor Activist Finance Program, give Sudi has some college in competition. But we are honored to have you as a special guest. And I would request you to presentate. Sorry, the professor as guest. Chairperson of Technical Session 1. So, you probably that's what means. Government college of Telugu. Most of South to my language, previously, but not in my years. By what a child China. I think that I have seen. Of Pakistan, government college of University. International conference. University is also from Ghana College of Bushare. ठीक है अगर आएगा तो मैं भी याद कर मैं बता रखूंगा ठीक ठीक है अच्छा ठीक है Wisdom and knowledge by writing a help of enlightenment through the invocation of Goddess Saraswati. I invite our special guest, Reckong and GDC by Dr. Chauhan, assisted by Dr. Brajesh Khan and Professor Saraswati. ठीक है जय जय देवी जय जय सागर सुजोग शोभित मुक्ता हमें इन रंजित पुस्तक हस्ते भगवती भारती देवी नमो नमः भद्रकाल नमो नित्यं सरस्वती नमो नमः वेद विभाग विद्या स्थान देव च एष चंदन पुष्पो गुणयो पत्रांजलि सरस्वती नमो नमः Saraswati grant us the knowledge of this universe, fill our hearts with knowledge, understanding, and wisdom. Grant us the courage to pursue our dreams, sharp our your guidance and divine blessings on us.
Hello. Hello, Dr. Brijesh. I take great pleasure to invite my college principal, Dr. Uttam Singh Chauhan, to deliver the welcome address, please. Honorable Dr. Mahavir Singh, Vice Chancellor of Madhya Pradesh University, distinguished dignitaries, especially the special guest from Kanpur College, Principal Professor Professor, revered guests, eminent scholars, esteemed international and keynote speakers, students and students present on this hall and across the virtual horizons. It is my privilege to extend with exuberantly joyful speech and an effusive welcome, resonating from the heart, most radiant reception
of this international conference on community culture and conservation, tribal pathway to sustainable prosperity and conservation. Tribal pathway to sustainable prosperity or institution ineffable pride knows the matter of hosting this conference for the very first time. This propitious location concerns the revealing of an academic landmark and emerges as a defining chapter in our productivity journey. मैं महाविद्यालय का प्राचार्य होने के साथ साथ और इस पूरे जो हमारा ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, हमारी जो पूरी टीम है और माय मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज टीएसकेडी गवर्नमेंट कॉलेज रिकॉन्ग की तरफ से मैं सोल से आत्मा से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को विदित है जिस तरह से जो मौसम की बात करें हम एकदम विपरीत परिस्थिति में होते हुए भी जो ऑफलाइन हमारे बीच में हमारे स्कॉलर्स जो अलग अलग कॉलेज से हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स और स्पेशली प्रिंसिपल रामपुर कॉलेज से आए हैं। आई आल्सो वेलकम प्रिंसिपल सरस्वती नगर मेहता जी, शी इज ऑन द वे टू डेस्टिनेशन। इतनी विपरीत परिस्थितियों में हमें लगा था कि शायद हमें ये जो हमारा ये कार्यक्रम है शायद पोस्टपोन, लेकिन की देवी माँ दुर्गी का मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ जिनके आशीर्वाद से बिना विघ्न के बिना बाधा के हमारा ये कॉन्फ्रेंस आज शुरू हो रहा है। कॉन्फ्रेंस इज एन इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ multi-dimensional pathways of vision, reaffirming that the tribal communities are not relics of a bygone past, but resilient guardians of ecological prudence and cultural community. Their pathway, deeply rooted in symbolic harmony with nature, offers us timeless lessons on a world where humanity stands as timeless. Humanity stands beloved by the existential crisis of climate change. Ecological determination and unsustainable models of degradation. In a sense, it proclaims that the path to sustainable future is not found only by technological innovation or economic expansion, but by resisting preserving the wisdom embedded in the life ways in the indigenous it's unequivocal delight. I once again extend a heartfelt welcome to you all and invite each one of you to engage wholeheartedly in this grand celebration of intellectual activities. Thank you very much. Thank you, Professor. May I now request our special guest, Dr. Pankaj Basotia, College Principal, keynote speaker, Dr. Brijesh, sir, to elaborate the souvenir of this 3-day. To present a brief introduction of this 3-day international conference, I now invite on stage Dr. Ramkoti, Assistant Professor of Geography, who is also the organizing secretary of this conference, is on stage to talk about this international conference. Thank you, Professor. It is my proud privilege to extend a heartfelt welcome to our chief guest and the chief patron, Professor Mahaveer Singh, Vice Chancellor in Madhya Pradesh University, whose august presence adds great value of this conference. We are equally honored
and we also acknowledge our President Japan, community coach, share all dignitaries, PTA president, participant, staff members, media person, and my dear students. It is my profound honor and privilege as the organizing secretary, I Dharamkirti Negi, to introduce the theme of the international conference, Community, Culture and Conservation, Tribal Pathway to Sustainable Prosperity, सामुदायिक, सांस्कृतिक और संरक्षण सब समृद्धि की ओर जनजातीय मार्ग. This conference holds historic significance for the Thakur Negi Government College as it hosting an international conference for the first time in collaboration with the district administration in Kinnaur. The theme highlights the timeless wisdom of the tribal communities whose tradition and culture, preservation, collective participation, and conservation offer a pathway of the biodiversity, protection, and sustainable prosperity of today's world. In this vision, the conference embodies a wide spectrum of sub-themes such as emerging technologies of the global ethics, climate and sustainability, development, livelihood and economics, models, well-being and longevity, globalization and the local identities, education and youth development, and society of the governance. These multidisciplinary dialogues aims to foster meaningful collaborations, knowledge sharing, and innovating solution of the sustainable and inclusive future. We are deeply honored the presence of 13 panel of international and national keynote speakers whose expertise will illuminate our discussion from the across of the globe. We warmly welcome Dr. Lobsang Tanjing, co-founder of Executive Director Center and Contributive Science of the Comprehensive-Based Ethics Ecology University, Atlanta, USA, Dr. Irina Yantilova from the Moscow, Russia, Dr. Mayur Bidu from United Kingdom, and Dr. Aparna Vedru, an IT professional from UK. Their global perspective will inspire us as a connect culture, technology, and human well-being of the transformation phase. From within India, we are privileged to host distinguished academicians and throughout the leaders, Professor Murli K. Abraham, Principal of GDC and College, University of Delhi, bring vast experience in the higher education leadership. Professor Ranveer Singh Ji from the Central Institute of Himachal Pradesh will be enrich us for the historical and cultural insights. Dr. Noor Negi Ji from the University of Delhi offers expertise of the sustainable economic models. Dr. Gulab Chand Sharma Ji and Dr. Sanjeev Sharma Ji from the Jawaharlal University, who will provide the valuable reflection of the environment and society. We also feel privileged to welcome Dr. Geeta from the University of Allahabad, Dr. Uttam Lal from the Sikkim University, Kanpur, and Professor Sunil Kumar from the Shaheed Bhagat Singh College, University of Delhi, and Dr. Rajesh Namaji, whose lasting contribution remain a source of pride, will be a deeper our collective understanding with their diverse academic perspective. Truly, this translation of the immediate speakers acts as a rich conference of the global knowledge and the local wisdom. The conference has also received an overwhelming response of the terms of participants. We have delighted to have with the 30 offline and through online modes 152 participants. The participants represent the wide geographical spread from the Punjab, Delhi, Uttarakhand, Maharashtra, and nearby 36 colleges of the Himachal Pradesh. The diversity is not only vibrant academic discussion but also meaningful collaboration. We are equally proud that many of these participants will be presenting their research paper during the session. They will be adding depth and originality of the deliberations. In addition, an essay writing competition was organized as a part of the conference. In the 56 participants took part their thoughtful contribution to the adult and esteemed jury panel, adding further riches of the academic celebration. Alongside, in future discussion, we are also organizing Kinori cultural program where all participants will come together to share and celebrate their artistic and cultural experiences. This unique blend of culture feels truly importance of the essence of our theme, community, culture, and conservation. We are deeply honored that Shri Jagat Singh Negi, Honorable Minister of the Revenue, Horticulture, Travel and Development, and Public Services Minister, Honorable Himachal Pradesh, will be the gracing with us the esteemed presence during the valedictory session of this conference.
On behalf of Organizing Secretary, I extend my warmest and most heartfelt welcome to each of one of you. I humbly invite your active participation, thoughtful insight, and creative contribution to this information conference memorable, meaningful, and historic success. And Jai Hind. Professor Dhanteji Neji, one of our keynote speaker and a special guest of the occasion. Dr. Brajesh Chauhan is a very distinguished academician, researcher, author, and mentor, spanning more than 3.5 decades of exemplary service in teaching, research, training, and skill development. His areas of specialization include intersection of physics, nanotechnology, neuroscience, longevity studies, and cyber psychology, which makes him a rare blend of scientist, educator, and motivator. He is consistently striving to integrate modern research with real-world applications. He pursued his PhD in nanotechnology, conducting advanced research at IIT Delhi and IUCU Indore. He has completed uh, his PhD research degree on these topics. He has completed specialized certification and international training programs at California, USA, and is a neuroscience coach under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India. Master practitioner, knowledge of academy, United Kingdom, and DMIT Test Spotlight Print Solutions, Himachal Pradesh. Мы вот как раз-таки сейчас шли на границе, Besides being a visiting professor at University College, IGMC Shimla, government college Gateway, and University Shimla, Dr. Chauhan has guided more than 50 hundred research scholars and more than 5 PhD scholars. He has also published more than 100 research papers in national and international journals. He has published 2 books. One is weather forecasting, and the other one is a concept of longevity. We are now inviting on stage, please, for these evaluations. Respected Vice Chancellor, Dr. Mavish sir, who was my guide also for PhD degree, and he is famous scientist of modern world in the field of nanotechnology and green energy. We welcome Professor B.K. Verma also, Dean Studies at University. He is also joined with us. Dr. A.S. Dhiman, Dean Planning at University. Dr. Mahendra Thakur, Chairman Forensic Science and Environmental Studies, Shimla University. And we have Dr. Irina Danilova. She was just messaging me that I am already in your conference. Dr. Vidhu Mayer from UK and Dr. Atejna Moleru from UK. During past few days, we had a pre-conference workshop also, in which we were supported by certainly worthy principal Dr. Uttam Chand, who is principal of the host college, Dr. Pankaj Basotia from GC Rampur, Dr. Lalita Rawat from GC Sima, Dr. Pramod Bhatyar from GC Sneeru. They all are joined with us. Dr. Gopal Chauhan from RGG GC Shimla, Dr. Ruchi Ramesh from Darlaghat, GDC Darlaghat, Dr. Anju Rani Chauhan from GC Dahiyara, Dr. H.L. Sharma from GC Nerua, Dr. Ravinder Chauhan from GC Chopal, Dr. Rajesh Thakur from Thakur College of Education, Dahiyara, Dr. Rajneesh Gautam from GGC Hamirpur, and Dr. Aditya Chauhan, Principal SMGC IGMC Shimla, Rashu Gupta, Principal GDC IGMC Dental College Shimla, Professor and officials from IGMC Shimla, Shimla University, and New Delhi University, and other eminent scholars from Russia, Japan, UK, Italy, US, Dubai, Sweden, Canada, and other countries. We got support from the school principals also. I want to specially thank Mrs. Sarla Khan, Shimla Public School, Shimla, Marika Samantha Roy, House School Girls, Shimla, and others. During past many years, I visited around 25 countries of the world
and top universities like Oxford, Cambridge, Imperial College, London Institute of Technology. On the basis of that, I want to give message to the students particularly. जिंदगी में प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है. Then only we are able to do some good things in life, and you have to find right persons in your life. और बुरे लोग मिलते रहते हैं लाइफ में, बट हेल्थ is also very important thing and financial freedom also. न्यूटन ने मरने से पहले कहा था, you know, न्यूटन was the real scientist, whatever in modern society we are doing. मरने से पहले न्यूटन ने बोला था कि मैं बहुत कम चीजों को जान पाया अपनी लाइफ में. भगवान ने अगर कुछ एक्स्ट्रा इयर्स दिए होते तो मैंने और भी कुछ करना था. So if Newton can be so humble just before dying, तो हम सब लोगों को इसके बारे में सोचना होगा. कभी कभी हम थोड़ा बहुत जान के बड़ा बड़ा ज्ञान देने लग जाते हैं, एंड we get egoistic also. तो इस माइंडसेट से हम इस कॉन्फ्रेंस में काम करेंगे कि जानने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है. Certainly, during this conference for students particularly, we have many books will be available, like concepts of longevity of life written by us. जिन लोगों को happy, healthy और long life जीनी है, ये बुक फॉरेन में भी बहुत सेल में चल रही है Amazon के थ्रू. तो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है. जो भी बुक्स लिखते हैं पूरे लाइफ का तजुर्बा उसमें रहता है. We have here a book written by शकुंतला. मेमोरी का भी बहुत इशू रहता है लोगों के साथ, भूलने की बीमारी बहुत है आजकल चली हुई, तो ऐसे लोगों को ये बुक पढ़नी चाहिए. We have this book by Robin Sharma, Who Will Cry When You Die. तो ये बहुत जबरदस्त बुक है, पढ़ेंगे आप लोग तो जिंदगी बदल जाएगी. And for students, this book is also very important. You can bring by ship Khera. And then we have other books also. ऐसी बड़ी लाइब्रेरी मैंने तो अपने घर में बनाई है, equivalent to the libraries which we have in universities and colleges. Think and Grow is another book. Is by Ramanujan. These books will be here. 10 books को daily display करेंगे पढ़ने के लिए. We have Why Bharat Matters by S. Jaishankar, Foreign Minister of India. जो भी यूपीएससी आईएएस के एग्जाम्स वगैरह देते हैं, स्टेट एग्जाम्स देते हैं, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आजकल आते हैं एग्जाम्स में. हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये भी अच्छी बुक है. इसको पढ़ के हमने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं. I have around 25,000 students connected with me from North India, 5-7,000 professors and principal. तो ये बुक बहुत हेल्प करती है लोगों को कैसे आप फ्रेंड्स बना सकते हैं और काम कर सकते हैं. Then Dopamine Detox is another book. इसको पढ़ेंगे आप तो बहुत कुछ पता चलेगा. And The Awakening by Dr. P. Madhurima Reddy. She is my friend from Hyderabad. बड़े-बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये लोग काम करते हैं. तो मुझे 5 मिनट मिले हैं, 5 मिनट में क्या क्या फिनिश करें. ओके, लोगों का एक टीम वर्क कर रही है नॉर्थ इंडिया में. एक तो हम DMIT टेस्टिंग करते हैं. आई एम द ओनली पर्सन इन आवर स्टेट हु गॉट ट्रेनिंग इन हैदराबाद टू फाइंड डिकोड इनबॉर्न टैलेंट. मल्टीपल इंटेलिजेंसीज पता लगते हैं उससे, एंड लर्निंग स्टाइल पता लगती है, और we get output in the form of percentage. Your EQ, your IQ, your AQ, adversity quotient, and that CQ, creativity quotient. तो जिन भी प्रोफेसर लोगों को, प्रिंसिपल लोगों को अपने इनबॉर्न टैलेंट पता लगाने हैं, I will work for that with the help of some students. तो हम वो पता लगाएंगे. Then we have a body analyzer also, where we can find out body age. कभी कभी क्या होता है, I am 60-year-old now, but have full energy, and body biological age is very less as compared to my chronological age. तो ऐसे आपको भी अगर पता लगाना है कि आपकी बायोलॉजिकल एज क्या चल रही है, whether you are very old, even in young age, or you are okay, or your body is functioning properly, उसका भी हम टेस्ट करेंगे इधर. और इसके साथ साथ में
job opportunities find out करने के लिए we have one big organization working with us. उसमें job का तो पता करते ही हैं. We have a group of people जो PhD करना चाहते हैं. We have group of people जो PhD करवाना चाहते हैं. And I am associated with many universities of India, Shimla University also. तो उसमें भी हम काम करेंगे आने वाले टाइम में. और स्नो शू एसोसिएशन को मैं देख रहा हूँ अभी. आई एम प्रेसिडेंट ऑफ स्नो शू एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश. और आई प्रपोज टू वर्क द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉन्ग कि यहाँ हमारी एक टीम जानी है अभी यूएस और यूरोपियन कंट्री का. उनका ट्रेनिंग कैंप लगना है तो हम यहाँ लगाते हैं. दैट विल बी फंडेड बाय द नेशनल स्नो शू एसोसिएशन. उसमें हम काम करेंगे. एक चर्चा हम इस कॉन्फ्रेंस में जरूर करना चाहते हैं कि हमारे देश का एजुकेशन इंडेक्स बहुत कम चल रहा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. हेल्थ इंडेक्स इज आल्सो पुअर. पेटेंट रेशियो, मेंटल हेल्थ issues, longevity of life, and EMIT एक बहुत बड़ा टेक्निकल साइंटिफिक टूल है जिससे हम आदमी के बारे में पता लगा सकते हैं. 1823 से ये मार्केट में है इंटरनेशनली. हमारे देश में बहुत कम जगह पे इसको कर रहे हैं. राजस्थान, गुजरात और अदर स्टेट में. तो वी आर डूइंग इन आवर स्टेट. हैप्पीनेस का भी इशू है. बायोलॉजिकल एज मैंने बताया. डाइट की बात करें, सोने की बात करें, नींद नहीं आती है लोगों को रात को. ऐसे ही इधर उधर पलटी मारते रहते हैं. they don't know how to sleep properly. This is also big issue. Stress management is another issue. इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. और I call upon students, faculty members of school, colleges and universities across India and abroad to participate in this conference with full energy and strength and make this conference a success. Together we can move towards a future that combines science, creativity, wellness for betterment of individuals and society. Thank you very much. Thank you, Dr. Rajesh Chauhan, for your message and insights. To stage Dr. Pankaj Basotia, our special guest, Principal Government College for his message and blessings. बहुत टाइट है. जैसे 2-3 मिनट मिले हैं तो मैं 2-3 मिनट की बात कहना. सबसे पहले मैं जो आयोजक हैं उनको सम्मिलित तौर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. इतनी शानदार कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज की है, ये तो है ही. इसकी तारीफ में जितना कम कहा जाए. कोई भी नहीं कह सकता कि ये एक इतना भारत के इतने अंदरूनी इलाके में एक कॉन्फ्रेंस. बम्बई जैसी जगहों में जो ऊंचे ऊंचे संस्थान है वहां पे जिस तरीके की सुविधाओं के साथ कॉन्फ्रेंस होती है वो सब यहाँ पे उपलब्ध करवाए हैं उन्होंने. इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. और ये आयोजकों को, विशेषकर टीम को, जिसमें धर्मकीर्ति जी, ब्रजेश चौहान जी, जनक सर और पूरे रिकॉन्ग कॉलेज के स्टाफ को, टीचिंग मोहन जी, सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद. जो भी आपने यहाँ आने का अवसर दिया इसके लिए भी बहुत बहुत अधिक औपचारिकता न बरतते हुए मैं सीधे सिर्फ टॉपिक पर 1 मिनट कुछ कहना. फैसिनेटिंग टॉपिक लगा मुझे ये. कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो इसमें सामने आई वो आप अगर देखें ये कॉन्फ्रेंस किस तरीके से अलग है. तो सबसे पहले जो इसका जो अंतिम शब्द इन्होंने काम में लिए हैं अपने थीम में, सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी, ये मुझे बहुत अपीलिंग लगी. हम आज तक जो चर्चा करते हैं अधिकतर वो करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में. वो एक तरीके का पर्दा है जिसके भीतर जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो एक्चुअल में ज्यादा प्रॉस्पर होने के लिए एस्पायर करती है. तो ये बहुत अच्छा इन्होंने एक जो मतलब एक चीज को खोल दिया है उस पर्दे को. असली बहस जो है वो डेवलपमेंट के बारे में नहीं है. असली बहस इस बारे में है कि मनुष्य सभ्यता और जो आज का समुदाय है वो किस तरीके से प्रॉस्पेरस होना चाहता है. और इस तमाम मानवीय सभ्यता ने जो संकट पैदा कर दिया है विकास की और समृद्धि की अंधी दौर में, वो संकट हमारे सामने है. इसलिए हम धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की चर्चा करने की बजाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी है. एक ऐसी बात है जो हमारे प्राचीन समुदायों के पास
जिसमें मैं सिर्फ आदिवासी समुदाय को शामिल नहीं करता, जनजातीय समुदाय को शामिल नहीं करता। हमारी जितनी भी प्राचीन परंपराएं हैं उन सबके पास ये बुद्धिमत्ता पहले से उपलब्ध थी। इसलिए तो कभी भी अंधाधुंध दौड़ जो है विकास की और प्रगति की या समृद्धि की, उस अंधाधुंध दौड़ में वो कभी नहीं आए। उस अंधाधुंध दौड़ में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारी जो माता है पृथ्वी, पृथ्वी माता पृथ्वी पुत्रो हम प्रतिज्ञा, ये जो माता पृथ्वी है इसको हमने एक भौतिक वस्तु की तरह इसका जो दोहन किया है, उससे हम सब पृथ्वी के साथ साथ हम सारी प्रजातियां जो है उनके अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। ऐसा लगता है कि पता नहीं अस्तित्व कुछ सालों के बाद, मतलब 100-50 साल के बाद भी बचेगा या नहीं बचेगा, इतना बड़ा संकट खड़ा। पिछले 1-2 महीने से हम हिमाचल प्रदेश में जो देख रहे हैं त्रासदी, ये त्रासदी अब ये मानव निर्मित त्रासदी है, इसके बारे में आपको शंका रही ही नहीं। मैं सोच रहा था कि कैसे लाखों या हजारों साल पहले लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करना पड़ा होगा, 1000 किलोमीटर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाना पड़ा होगा। हो सकता है आज से 50 साल बाद, 40 साल बाद जो हम देख रहे हैं वातावरण, उसका यहाँ के लोगों को या नीचे के लोगों को, या तो नीचे के लोग इधर आएंगे जो परिस्थितियां बन रही है उनको इधर आना पड़ेगा, या यहाँ के लोगों को पहाड़ों में अगर कुछ ऐसी कैलेमिटी होती। तो मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये संकट जो है ये हल्का संकट, ये एक बहुत भारी संकट है, इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं दोबारा आपको बधाई देना चाहता हूँ, जो पहले 3 शब्द आपने काम में लिए इस कॉन्फ्रेंस के थीम में, कम्युनिटी, कल्चर एंड कंजर्वेशन, इन्हीं से वो रास्ता निकल सकता है जो सिर्फ उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं, पूरी की पूरी मैनकाइंड के लिए एक रास्ता है। और वो रास्ता है कंजर्वेशन, मतलब वो रास्ता अंधाधुंध समृद्धि और अंधाधुंध विकास का नहीं है। वो इस प्रकृति को माता के रूप में जो भी हमें, हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध है, उन वो साधन हमारे को, जब गांधी जी ने कहा था ट्रस्टीशिप, इन साधनों के दोहक और शोषक के रूप में नहीं, इनके ट्रस्टी के रूप में काम करें, तभी जाके ये जो है कुछ एक संभावना भविष्य की बनती है। मैं आपको फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Dr. Pankaj Basotia sir, for your message and the explanations on the theme of this international conference. It is immensely delighted to have Professor Mahavir Singh, Working Vice Chancellor of Himachal Pradesh University Shimla, as chief guest of the opening ceremony in this 3-day international conference. Mahavir Singh is a very dynamic and versatile Vice Chancellor of Himachal Pradesh University, who assumed his office on 2nd June 2025. A native of Himachal Shimla district, he is a distinguished physicist specializing in nanotechnology, magnetic materials, thin films, and multi-ferrite materials. He earned a PhD degree from IIT Delhi. His professional and academic career spans more than 33 years, besides having research experience of 31 years. So far, he has published 250 research papers and guided many entrance and PhD research scholars. His academic genius is acclaimed worldwide as he was listed among top 2% scientists of the world by Stanford University in 2024. Famous for his academic leadership and research excellence, Professor Mahavir Singh is committed to making Andhra Pradesh University Shimla one of the topmost institutions of higher learning with his experience, vision, and wisdom. The chief guest, Professor Mahavir Singh, who connected the I request Professor Ruben to contest the arrangement so that Professor Mahavir Singh may join us.
Sir, request you to begin with your blessings in the ceremony. So, am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So thank you, Dr. Uttam Negi ji, Principal, TS College, Reckong PO, for inviting me as a chief guest for this academic event. I'm sorry that I'm not there as a physically, but due to weather constraint and other administrative commitments, so I'm not there physically. So I'm sorry for that. But congratulations to principal and his entire team for organizing this international conference. The theme of this conference is interesting. That is community, culture, and conservation through tribal pathway for sustainable growth and sustainable approach. But at the same time, since I am also experimental person, this theme is very big. I don't know whether we will justify it or not. ये कागजों में नहीं रहनी चाहिए कॉन्फ्रेंस, क्योंकि थीम बड़ा है. जिस तरीके से आप कम्युनिटी से कंजर्वेशन की तरफ जा रहे हैं थ्रू ट्राइबल पाथवे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. आज के टेक्नोलॉजिकल एरा में जब बहुत सारी चेंजेस हो रही है वर्ल्ड लेवल पर, कैसे कैसे चेंजेस हो रही है और कैसे कैसे इश्यूज अमर्ज हो रहे हैं, वो चाहे ग्लोबल वार्मिंग है, चाहे वेदर का अबनॉर्मल बिहेवियर है, चाहे बहुत सारी चेंजेस है. जिस तरीके से आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम लास्ट फ्यू इयर्स कि मॉनसून जो है अब ट्राइबल एरिया में भी क्रॉस कर रहा है. दिस इज न्यू नॉर्मल. जनरली मैंने काफी समय से देखा है कि आपका चाहे किन्नौर एरिया था, चाहे लाहौल स्पीति एरिया, उसमें मॉनसून में बारिश बहुत कम होती थी, कोई क्लाउड बरस नहीं होता था. लेकिन जिस तरीके से अब मॉनसून एंटर कर रहा है ट्राइबल में, ये बहुत ही चिंता का विषय है. दैट मीन्स इसमें बहुत सारा इश्यूज है जिनको स्टडी करना जरूरी है. क्यों ये एंटर हो रहे हैं, क्यों ये क्रॉस कर रही है, जो 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 आज के डेट में जो विंड है, जो हवा है, वो क्यों इतना अबनॉर्मल बिहेवियर दिखा रही है. इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट के पैरामीटर्स है, वो चाहे ग्लोबल वार्मिंग है, चाहे बहुत सारे अदर पैरामीटर्स है, जो इकोसिस्टम है वो अगर डिस्टर्ब हुआ है, तो व्हाट आर द रीजन, क्यों ये हो रहा है. आई थिंक उस दिशा में इस कॉन्फ्रेंस का जो टाइटल है कम्युनिटी, कल्चर एंड कंजर्वेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज आई मेंशन व्यक्तिगत रूप में मैं अपने आप को बहुत कम समझता हूं कि हम इस टॉपिक को जस्टिफाई कर पाए, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर हम ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराएं तो हमें स्पीकर भी उस तरह से लाने पड़ेंगे, वो फॉर्मेलिटी ना रहे. ये मेरा आग्रह रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा एरिया है. तो मैं प्रिंसिपल साहब के ऊपर ये छोड़ता हूं कि 3 दिन में आप कॉन्फ्रेंस ऐसी कराएं ताकि मुझे अच्छा लगेगा बीइंग ए मतलब चीफ गेस्ट. और इसकी जो क्लोजिंग है वो हमारे आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर जगत नेगी जी करेंगे. तो मेरा आग्रह रहेगा प्रिंसिपल साहब से कि 3 दिन में ये कॉन्फ्रेंस
मेरे एथिकली रखें, आप पूरा डिस्कशन रखें, फॉर्मेलिटी के तौर पर ना रखें। मैं व्यक्तिगत रूप में, मैंने यूनिवर्सिटी में भी कहा है कि अगर हम एकेडमिक इवेंट कराएं कोई, वो दिखना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस दिखनी चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं दिखनी चाहिए, तब शायद मुझे दुख होगा। मैं आपके ऊपर नहीं ये कह रहा हूं, मैं अपने आप को भी उसमें डाल रहा हूं। क्या मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा इस कॉन्फ्रेंस के नाते? हो सकता है कि मैं चाहूंगा कि बीच में मैं कोई टॉक भी दूं अगर समय लगेगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से आपने स्पीकर है, किस किस एरिया के हैं, क्योंकि टॉपिक आपने बहुत बड़ा चुना है जो कि ट्राइबल पाथवे के साथ जुड़ता है। तो क्या हम उसको जस्टिफाई कर पाएंगे? क्योंकि बहुत बड़ा आपने टॉपिक चुना है, आपके लिए बधाई है, लेकिन ये भी साथ में, क्योंकि मैं भी इस कॉन्फ्रेंस का पार्ट हूं, क्या हम जस्टिफाई कर पाएंगे ताकि हम मंत्री जी को हम बता सके कि हमने इन इन इश्यूज के ऊपर चर्चा की और यहाँ की जो रिकमेंडेशन है वो हम मंत्री महोदय को दे सके? क्योंकि बहुत सारे इश्यूज है, चाहे वो कम्युनिटी से लेकर कंजर्वेशन तक। क्यों आज किन्नौर में आपदा आ रही है, क्यों क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैंने 3 दिन पहले यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई थी, जो कि डिजास्टर आ रहे हैं हिमाचल में, हिमालयन रीजन में, क्यों ये आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसमें बहुत कंसर्न है, मतलब पूरी सरकार इस टाइम चिंतित है कि क्यों ये चीजें हो रही है, हिमालयन रीजन में क्यों ये क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे यूनिवर्सिटी है चाहे कॉलेज है, जब हम इस तरह के इवेंट कराएं तो बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हमारे जो लोकल कम्युनिटी है वो किस तरीके से भयभीत है, ये हमें उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि क्यों ये ऐसी आपदाएं आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसको हमें रिजॉल्व करना है थ्रू सच काइंड ऑफ एकेडमिक कॉन्फ्रेंस। तो जो यहाँ पर इनवाइटेड स्पीकर्स है, चाहे ऑनलाइन मोड से जुड़े हैं चाहे ऑफलाइन मोड से जुड़े हैं, चाहे स्टूडेंट है कॉलेज के, नियर बाय कॉलेजेस के, और जो डेलीगेट्स है, उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूं आज की डेट में। इफ यू वांट टू ग्रो इन एकेडमिक फील्ड, अगर आप एकेडमिक फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, सो डियर डेलीगेट्स, हर एक को आज की डेट में कोलैबोरेटिव होना पड़ेगा। One has to be collaborative in his behavior. You should not pick only individual subject. अब वो जमाना चले गया, वो वक्त चले गया जब इंडिविजुअल सब्जेक्ट के साथ हम पढ़ा करते थे। आज वो वक्त नहीं है। आज आपको बहुत सारे सब्जेक्ट को इकट्ठा करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि समय बहुत तीव्रता से चेंज कर रहा है। तो हमें, चाहे वो सोशल साइंस है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे मेडिकल साइंस है, चाहे बेसिक साइंस है, इन सबको इकट्ठे होकर सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे एजुकेशन रिफॉर्म्स हो रहे हैं, अब वो नहीं है कि हिस्ट्री का बच्चा भी अब साइंस पढ़ सकता है और साइंस का बच्चा भी सोशल साइंस पढ़ सकता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है, सोशियोलॉजी पढ़ सकता है, मैनेजमेंट पढ़ सकता है। हर एक स्टूडेंट को हर एक नॉलेज होना आज की डेट में बहुत जरूरी है। अगर अपने आप को, आपने समाज में सक्षम बनना है, तो आपके पास कोलैबोरेटिव टैलेंट होना चाहिए, कोलैबोरेटिव स्किल होनी चाहिए। अगर आपने समाज में इफेक्टिव बनना है तो आपको कोलैबोरेटिव होना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के साथ नहीं बैठ सकते। जहां तक मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, पिछले 30 सालों से मैंने फिजिक्स को, चाहे कम्युनिकेशन में, चाहे इलेक्ट्रिकल में, चाहे मेडिकल साइंस में, चाहे सोशल साइंस में, इस फिजिक्स को जोड़ा है। आज का जो प्रेजेंट युग है, अब वो वक्त चले गए जब साइंस से लोग डरते थे। साइंस बहुत ही सिंपल है। मेरे को तो कई बार लगता है मुझे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और मैनेजमेंट टफ लगती है, साइंस उतनी टफ नहीं है। इसको सिंपल करना पड़ेगा। और जिस तरीके से टुडे, एज यू नो, एआई इज एंटरिंग इन एवरी एरिया, जिस तरीके से एआई आ रहा है, इस एआई ने इतना सिंपल कर दिया, इतना हमारे को कंट्रोल कर दिया है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। अगर आपने एआई से आगे सोचना है तो आपको कोलैबोरेटिव होना पड़ेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट में पकड़े रखोगे तो एआई आपको नहीं बढ़ने देगा।
एआई आपकी ग्रोथ नहीं करेगा। आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करोगे, कोलैबोरेट करोगे, जब आप अपनी रिसर्च को, अपने अपने एकेडमिक को सोशल इवेंट के साथ जोड़ोगे। अब आज की डेट में बच्चों, ये इंपॉर्टेंट इश्यू है आपके सामने कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है वर्ल्ड लेवल पर। एनवायरमेंट, बड़े बड़े समिट हो रहे हैं, क्यों ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्यों किन्नौर में क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। मैं देखता हूं कि किन्नौर में जिस तरीके से 4-5 साल में चीजें चेंज हो रही है, ये एकेडमिक का इशू होना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है व्यक्तिगत रूप में कि जो हम पाठ्यक्रम भी पढ़ाएं उसमें कुछ न कुछ लोकल इश्यूज भी डिस्कस होने चाहिए। जैसे आप कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं तो यहाँ पर जो लोकल इश्यूज है वो भी एड्रेस होने चाहिए। वो आपने टॉपिक में तो लिया है कम्युनिटी से कंजर्वेशन तक, क्या हम प्रैक्टिकली उसको जस्टिफाई कर पाएंगे ताकि रिकॉन्ग पीओ से जो आवाज निकलेगी, जो एक एकेडमिक रिकमेंडेशन जाएगी, वो किन्नौर ना बल्कि पूरे हिमाचल, पूरे हिंदुस्तान के लिए एग्जाम्पल बने। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होती है आज की डेट में, स्पीकर का, इनवाइटेड स्पीकर का ऑफ द प्रॉपर एरियाज ऑफ कंसर्न। तो ये एक थोड़ा सा मेरा कंसर्न है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो डिस्कशन और डेलिब्रेशन होंगे वो एक अच्छी एक बुकलेट बने, अच्छी आप उसको समावेश करें ताकि मंत्री जी के समक्ष भी हम रख सकें कि किस तरीके से हमने एकेडमिक चीजें डिस्कस की यहाँ पर। तो जितने भी स्पीकर्स होंगे, मुझे आशा है कि उनके साथ जो भी डेलीगेशंस की इंटरेक्शंस होगी, डेलिब्रेशंस होगी, वो हम सब के लिए कारगर साबित होगी, हम सब के एकेडमिक को वो अपग्रेड करेगी। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, अब मुझे नहीं पता कि ये इंटरनेशनल है या नेशनल है, क्योंकि इंटरनेशनल के नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं। क्योंकि आई एम सॉरी टू से प्रिंसिपल साहब, क्योंकि मैं अलग तरह का इंसान हूं। मैं थोड़ा सा, जब एकेडमिक की बात होती है तो आई रिमेन 100% मतलब ट्रांसपेरेंट। क्या इंटरनेशनल के नॉर्म्स भी होते हैं, क्या वो आप लोग कर पाएंगे कि नहीं? मैं तो व्यक्तिगत रूप में, अगर मुझे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में करानी है तो मुझे 1 साल का समय चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। आई डोंट नो कि आप उन चीजों को करेंगे, आप समझ गए होंगे, होती है यहाँ पर। लेकिन व्यक्तिगत रूप में मैं तो अपने आप को असहाय महसूस करता हूँ। आप लोग बनी किस तरीके से, दिस इज ए बिग इंटरनेशनल, जब हम कहते हैं इट्स ए बिग एरिया, और जिस तरीके से आपने टॉपिक लिया, इट्स ए बिग चैलेंज। आई डोंट नो कि कैसे हम इसको मतलब करेंगे, क्योंकि इसमें टॉपिक आपने इस तरीके से लिया है। एक तरफ आपको कम्युनिटी के चीजों को हैंडल करना है, दूसरी तरफ आप कंजर्वेशन, एनवायरमेंट की चीजों को करना है, और तीसरा जो है कम्युनिटी कल्चर को करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर के एक्सपर्ट को करना है कि कैसे कल्चर से हम एनवायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम कम्युनिटी को अपग्रेड कर सकते हैं। प्रिंसिपल साहब, मेरा अच्छा सुझाव रहेगा कि आप थोड़ा सा रिकॉन्ग पीओ के या किन्नौर के जो भी स्टेक होल्डर्स है, जो एनवायरमेंट के प्रति जुझारू रहते हैं, जागरूक रहते हैं, उनको भी इस कॉन्फ्रेंस में बुलाइए, ताकि मंत्री जी को भी अच्छा लगेगा जब आप वहां के लोकल लोगों को जोड़ेंगे कि जो कंसर्न है क्यों आ रहे हैं, हो सकता है उनके व्यूज भी आपकी कॉन्फ्रेंस के लिए इनपुट देंगे। प्रैक्टिकली मेरा सुझाव रहेगा कि आप लोकल लोगों को भी इन्वॉल्व करें इसमें। डेफिनेटली किन्नौर में बहुत जागरूक लोग हैं, जुझारू लोग हैं, उनको भी आप सम्मिलित करिए। एकेडमिक के साथ साथ ये लोग, इन लोगों की इनपुट भी जरूरी है, क्योंकि वो आपको ग्राउंड की रिपोर्ट देंगे। अगर उनको भी हम सम्मिलित करेंगे, मेरा व्यक्तिगत रूप में हो सकता है कईयों को ये थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, क्योंकि मैं भी इस कॉन्फ्रेंस का अपने आप को हिस्सा मान रहा हूं। अगर इस कॉन्फ्रेंस के उतने इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो मेरे को भी वो व्यक्तिगत रूप से पीड़ा होगी, क्योंकि मैं क्योंकि ग्राउंड का आदमी हूं, ग्राउंड पर जुड़ा हूं। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप थोड़े से स्पीकर लोकल लेवल पर भी इनवाइट करें, जो एनवायरनमेंट को समझते हो, जो कम्युनिटी को समझते हो, जो कल्चर को समझते हो। और मैं तो आपके माध्यम से इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर हमने 5 सेंटर खोले हैं, जिसमें कल्चर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर।
इंडियन नॉलेज सिस्टम इज वन ऑफ द सेंटर, और जो साइबर सिक्योरिटी है दैट इज वन ऑफ द सेंटर, जो हम डेटा की बात करते हैं, देन डिजास्टर इज वन ऑफ द सेंटर एंड ग्रीन एनर्जी इज वन ऑफ द सेंटर। और आई थिंक वो जो पांचों सेंटर है वो आपके इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉपिक के साथ मैच करते हैं, वो चाहे कम्युनिटी है, चाहे कंजर्वेशन है, चाहे कल्चर है। तो ये जो पांचों ये जो 3 टॉपिक, और सबसे बड़ी बात है कि आपने पाथवे भी दिया है, जो ट्राइबल पाथवे दिया है फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, जो आपने एक पाथवे भी दिया है, तो उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हमारा 5 सेंटर है, डेफिनेटली ये जो आप डिस्कशन करोगे यहाँ पर, इससे जो भी डिस्कशन होगी आप हमारे 5 सेंटरों के साथ भी ये इनपुट दे सकते हैं। और यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा है, प्रिंसिपल साहब आपके ऊपर मैं दायित्व तो छोड़ रहा हूं, और जैसे आपका नाम ही उत्तम है, तो मैं आशा करता हूं कि आपकी लीडरशिप में ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है डेफिनेटली ये एक मील का पत्थर साबित होगी, और हम सब के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बस मेरा व्यक्तिगत रूप से ये रहेगा आग्रह कि आप जब भी एकेडमिक एक्सरसाइज कराएं उसमें खूब डिस्कशन करें, फॉर्मेलिटी ना हो, जिस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को मानता हूं कि फॉर्मेलिटी ना रहे, इसमें अच्छी डिस्कशन करें, एक डॉक्यूमेंट बनाएं, उस डॉक्यूमेंट को आप सबमिट करें, यूनिवर्सिटी को भी दें, ताकि हम उससे अपने आप को आगे कैसे इस एरिया को बढ़ाना है थ्रू ट्राइबल पाथवे। क्योंकि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं प्रिंसिपल साहब, हम अभी जल्दी पू के लिए आने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी डिफेंस के साथ एक एमओयू कर रही है, जिसमें कि ट्राइबल कल्चर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इस कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जल्दी हम, क्योंकि वेदर की वजह से आपने देखा होगा पिछले हफ्ते किन्नौर में रास्ता बंद हो गया था, तो हम आ नहीं सके, हमने पू में आना है ब्रिगेडियर साहब के साथ, और हम लखनऊ जा रहे हैं, जल्दी हम नेक्स्ट वीक लखनऊ जा रहे हैं। तो डिफेंस के साथ हमारा यूनिवर्सिटी का एमओयू होने वाला है, जिसमें कि किन्नौर का जो बॉर्डर कल्चर है, जो भोटी लैंग्वेज है, हम यूनिवर्सिटी के अंदर भोटी लैंग्वेज है, उसको भी हमने आगे बढ़ावा देना है। कैसे कल्चरल एक्सचेंज को डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो वहां पर कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, जो ड्रोन है, जो रडार है, उसको कैसे हमने प्रोग्रेसिव करना है, कैसे उसको इफेक्टिव करना है, उस दिशा में भी हमारा एमओयू उनके साथ होना है। तो उस दिशा में मैं चाहूंगा कि जब हम पू के लिए आएंगे तो डेफिनेटली डॉक्टर उत्तम जी, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके कॉलेज आऊंगा, और वहां पर आपके स्टूडेंट के साथ मैं एक लेक्चर भी करूंगा, लेक्चर एड्रेस करूंगा, आपके बच्चों के साथ पर्सनली इंटरेक्ट करूंगा। जैसे मैंने कहा, व्यक्तिगत रूप से मैं वहां नहीं हूं, लेकिन मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आई एम देयर। जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि अच्छा लगेगा जब आप 3 दिन के बाद मंत्री जी के सामने जब आप बताएंगे, मैं भी व्यक्तिगत रूप से जगत नेगी जी को बताऊंगा, जिस तरीके से आपने टॉपिक लिया है बहुत अच्छा है, टॉपिक बहुत बढ़िया है, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द टॉपिक। ऐसे ही टॉपिक की आज की डेट में जरूरत है। लेकिन फिर मैं कहूंगा आखिरी में, चुनौती बहुत है कि क्या इस टॉपिक को हम 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में जस्टिफाई कर पाएंगे। एज ए एकेडमिशियन शायद आप भी फील करेंगे, मैं भी फील करता हूं, तो मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूं। आई थिंक आप इसको कमिटमेंट के साथ इन 3 दिन के इवेंट को इफेक्टिवली करेंगे। जैसे डॉक्टर चौहान ने बताया कि वर्कशॉप भी करा रहे हैं, तो मेरा फोकस रहेगा कि आप टाइटल के ऊपर ही रहें, इधर उधर ना जाएं। अगर कॉन्फ्रेंस का जो टाइटल है वहीं रहना है, तो स्पीकर आप ऐसे चुने जो टॉपिक पर हो, इधर उधर के नहीं होने चाहिए, तब शायद मेरे को थोड़ा सा तकलीफ होती है। जो आपने टॉपिक चुना है, आप स्पीकर उसी टॉपिक के पर रखें तो अच्छा लगेगा। एक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कॉन्फ्रेंस की, आपके पास एक डेटा आएगा, उस डेटा के बेस पर आप कह सकते हैं कि डॉक्टर उत्तम ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई थी, जो कि विश्वविद्यालय के लिए और सारे कॉलेजेस के लिए एग्जाम्पलरी होगा। तो ज्यादा ना कहता हुआ, मैं इंटायर टीम को, रिकॉन्ग पीओ कॉलेज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सारे जितने भी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जितने इनवाइटेड स्पीकर है, जितने डेलीगेट्स है, सबके लिए बधाई देता हूं। जो भी इस कॉन्फ्रेंस के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो जुड़े हुए हैं, सबकी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, बधाई। और शायद 3 दिन के बाद जब आदरणीय मंत्री महोदय
इसका क्लोजिंग करेंगे तो हम उनके समक्ष जो है एक डाटा रख सकें तो अच्छा लगेगा। विद दीज वर्ड्स मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बेस्ट विशेस वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। कहना चाहूंगा जैसे आपने कहा यू आर सो प्रैक्टिकल, सर आप डोंट फॉरगेट सर, आई एम योर pupil. I'm just following you at every step of my life, and I'm following and I'm following you, sir, and Thank I'm you. following you, sir. थैंक यू। तो मैं बात करना चाहूंगा अपने पूरी टीम की तरफ से वादा करता हूँ सर, आई प्रॉमिस यू कि हम जस्टिफाई करेंगे इस टॉपिक को। और बात जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर की है सर, हमने पूरा कोशिश किया है, 5 हमारे जो अलग अलग प्रोफेसर हो इसी हमारे इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ऑनलाइन जुड़ेंगे। लेकिन सर सच्ची बात यह है कि अगर आप फिजिकल नहीं होते तो जो बात हम आपसे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर ये क्योंकि हमारे यहाँ तक मुझे लगता है 150 हमारे ऑडियंस या रिसर्च पर जो प्रोफेसर्स बैठे हैं, अगर आप यहाँ होते तो आप थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो पाता कि हम क्या करने वाले हैं। हमारे सामने मैंने जूम किया था, हमारे साथ इस 80 प्लस बहुत अच्छे राइटर हैं, गोदा जी एक बार कैमरा कीजिएगा उनकी तरफ। थैंक यू। कम्युनिटी को जोड़ने का पूरा प्रयास किया है सर। एक बार जूम कीजिएगा सर, आप देख पा रहे होंगे सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत ही सम्मानित हमारे और के बहुत माने हुए रेनॉल्ड पर्सन है सर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनको मेरा नमस्कार। देखो आपने ये बस यही चीज है कि ऐसे महारथियों को आप जोड़ा करें। मुझे अच्छा लगता है जब ग्राउंड के लोग ऐसी कॉन्फ्रेंस में जुड़ते हैं। आई फील प्राउड कि जब आप ग्राउंड के लोगों को जब आप जोड़ते हैं, बहुत अच्छा लगा। वैसे सर, और ये जो हमारा यंग प्लेयर जो हमारे जो यंग प्लेयर है, हमारे प्रोफेसर हमारे यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ, तो 7 लोग हमारे साथ, 7 लोग जो हमारे रिसर्च स्कॉलर से जुड़े हुए हैं और इसी टॉपिक के ऊपर अपना रिसर्च प्रेजेंट करेंगे सर। थैंक यू। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा पूरा प्रदेश आपका इंतजार करेगा। आप अभी मुझे लगता है अगले महीने इसका प्रॉमिस किया आपने। मैं डॉक्टर उत्तम जी डेफिनेटली जल्दी आपके पास आऊंगा, पूरे दल बल के साथ आऊंगा। विश्वविद्यालय के जब हम एमओयू के लिए पू के लिए आएंगे तो एक दिन हम रिकोंग पीओ आएंगे और पूरे किन्नौर के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा और अच्छा भाषणबाजी भी करेंगे, वहां के लोकल लोगों से भी मिलना चाहूंगा। जी सर, थैंक यू। तो बात करना चाहूंगा सर, हमारा जो शेड्यूल उसको बिल्कुल बाइंड करके रखा है। आज हमने करना तो आज था उसका, लेकिन क्योंकि मंत्री महोदय जी, सामान्य मंत्री महोदय जी अभी प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं, तो शेड्यूल हमने बिल्कुल बाइंड कर दिया है और उसकी कॉपी सर विद APR रिपोर्ट आपको सबमिट की जाएगी सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। क्योंकि धन्यवाद सर। प्रिंसिपल साहब आपको पता है जगत नेगी जी बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं। जी सर, वो मेरे से जरूर पूछेंगे कि कैसे कैसे है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। सो विद दिस सर एक बात मैं भी बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा ब्रॉड टॉपिक है, दैट इज सर्टेनली ये कल्चर, कम्युनिटी और कंजर्वेशन, बट इन सब थीम्स वी हैव emerging technologies and global ethics also as one subtopic. Another subtopic is climate and sustainability, and the next topic is human well-being and longevity. Next one is globalization and local identities. Then we have education, youth development, society and governance. इसके साथ साथ में we conducted one online international essay writing competition in which we had students from all over India and foreign countries also. उनके लिए हमारे जो टॉपिक्स थे, they were इंडिया एट 2047, जब भारत देश 100 साल का हो जाएगा, एंड OTT प्लेटफॉर्म्स वर्सेस सिनेमा हॉल्स, रोल ऑफ नर्सिंग इन शेपिंग ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम। देन वी हैड फैशन, ब्यूटी, मेंटल हेल्थ, स्टूडेंट्स लाइफ, AI, ई-कॉमर्स, साइबर साइकोलॉजी, सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ, लाइक दिस। तो इसमें क्या है कि एक तो हम जब आप लोग यूनिवर्सिटी में करवाते हैं ना सर, वहाँ तो स्पेशलाइज रहते हैं, फिजिक्स वाले करवाते हैं दूसरे। यहाँ तो हमारे फिजिक्स के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, आर्ट्स के भी हैं, और बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो वी हैव वेरी थिंग्स टू डू, और हम सुबह से लेकर शाम तक तीनों दिन तक हैवीली वर्क करेंगे। थैंक यू चौहान साहब। थैंक यू चौहान साहब। यहाँ प्रिंसिपल रामपुर के बैठे पंकज जी है, और शायद प्रिंसिपल नेगी जी और है, जोगिंदर नेगी के छोटे भाई भी बैठे हैं, मुझे दिख रहे हैं शायद।
और शर्मा जी बैठे, मैथमेटिक्स शर्मा जी भी बैठे हैं, दिख रहे हैं आप। चलो अच्छा लगा, चलो आपका दिखा, जिनको मैं देख पा रहा हूँ अच्छा लगा। आप लोगों के साथ में चलो ऑनलाइन बहुत अच्छा तो तब होता मैं अगर फिजिकली आप लोगों के साथ होता। थैंक यू। Thank you, sir, for your thought-provoking and illustrating address and setting the perfect platform for our keynote speakers. Thank you, Principal Sir and Dr. Brajesh Chauhan for communicating the. Thank you. Next keynote speaker of the day is the Professor Chandradeep Singh, Department of History, Central University, Himachal Pradesh. Professor Chandradeep Singh is a historian and clinician with specialization in modern and contemporary Indian history as well as Hindu cultural nationalism. Currently, he is serving as head of history department at Central University, Dharamshala, with over 19 years of teaching experience and 21 years of research experience. He has authored many chapters and co-edited an anthology of discourses on Bharat, 2023. Allocates include a UGC fellowship in 2004 and prestigious B. Savarkar Samiti Samman in 2019. He has guided many and PhD scholars. Professor Chandradeep sir, you are humbly invited to deliberate upon your topic, that is globalization and indigenous identity, decolonizing the Indian communities. Please, sir. Good morning. Am I audible? Yes, sir. Yes. Please continue. Okay. Good morning, everyone. My humble regards to the Honorable Vice Chancellor, Himachal Pradesh University, Shimla, the guests present over there at the international conference, the organizers of the conference, especially Dr. Uttam Chandji. We have planned to come to this place in a physical mode, but due to weather conditions, our plan was could not be fulfilled. So, I think my video is visible or not? Now visible. अब visible sir. Visible है. हाँ, यहाँ पे बिजली चली गई है तो इसलिए थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो आई बेग यू पार्डन फॉर दैट. हाँ, so without wasting much time, let me come to the topic of my presentation today. My topic is globalization and indigenous identity, decolonizing the Indian modernity. So basically, I'll keep my presentation bilingual because students are also there and there are many people who understand Hindi well. So मेरा जो विषय है वो तीन चार बिंदुओं के ऊपर केंद्रित है, चूंकि यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक है, इट इज अबाउट tribal communities and their conservation and preservation and sustainability. I've tried to give a meta narrative of an overarching picture that will subsume what constitutes indigenous identity, how globalization is influencing that identity, and how Indian modernity is negotiating between indigenous identity on one hand and global forces on the other hand. So basically, I'm talking about how Bharat, which we call India, is negotiating and moving forward on this tightrope where indigenous identity is benefiting from globalization, but indigenous identity is also threatened by the forces of globalization. So let me start. So for the long time, we have seen that globalization as a process is not only a historical process, but it is also have become a contemporary reality, and it has influenced the trajectories of culture, identities, and socio-political formation, not only in this country, not only in Bharat, but across the world. And when we talk about our country, about Bharat or India, we have seen that globalization is an impact of
the colonial encounter that we have faced for last 200 years when the various East India companies came to India. So our globalization and our modernity is very much closely entangled with the process of colonization, and the process of decolonization, which politically has ended in 1947, is still continuing today because colonization has changed its form. It has become neocolonization, and globalization is sometime we have seen is perpetuating that neocolonial tendencies. So this, my presentation examines the interconnection between globalization, indigenous identity, and the imperative of decolonizing the Indian modernity. We have seen modernity in separate terms, and we have generally uh, understand modernity in European or Eurocentric terms. We need to understand that modernity is not westernization. As far as civilizational nation like India is concerned, our modernity transcends from our traditions, and it extends to the contemporary times as well. So, how globalization is impacting our cultural identity? Uh, uh, Globalization, as we understand today, is an interconnectedness of economic forces, of political relations, of technology, of media, and of culture. So everything is so much interconnected that no country, especially the country like India, can remain isolated or separate from the forces of globalization. Scholar Anthony Giddens, he has talked about globalization in 1990s, wherein he has said that the globalization has intensified the worldwide social relations as well. And when there is intensification of social relations, we have seen that intensification of social relations have uh, changed localities, the localities which were local to global, and the changing of localities from global to local has also changed the realities of contemporary world. In India, we have seen that globalization has manifested itself in rapid economic reforms, spread of consumerist culture, expansion of media, and last but not the least, digital connectivity. And as Honorable Vice Chancellor has said, we are living in the age of artificial intelligence. So artificial intelligence has removed all the barriers which were hitherto there among the nations. So, on one hand, we have seen that globalization has created the avenues for a cultural dialogue. But on the other hand, we are also seeing that globalization has also led to the homogenization and marginalization of what was indigenous. जो हमारा खुद का था, जो इंडिजिनस था, ग्लोबलाइजेशन ने उसको फैलाया भी है, लेकिन उसके लिए एक खतरा भी उत्पन्न किया है, और वो खतरा ऐसा है कि जो होमोजेनस टेंडेंसीज होती हैं कि सभी को एकसार करने की टेंडेंसीज होती हैं, जिसमें जो डिस्टिंक्टिवनेस होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। और इसके साथ ही ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हम देखते हैं कि अंग्रेजी दुनिया की लिंगुआ फ्रैंका बन गई। तो अंग्रेजी या इस तरह की बाकी लैंग्वेजेस ने, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विश्व के अन्य देशों की भी बात कर रहा हूं जो कभी ना कभी कॉलोनियल पावर्स के अधीन थे, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो या अफ्रीका हो या एशिया के दूसरे देश हों। उन्होंने लोकल सिस्टम्स को, लोकल कल्चर को, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे नॉलेज सिस्टम हो, सभी को मार्जिनलाइज कर दिया है। सो ग्लोबलाइजेशन देयरफॉर इन प्रेजेंट टाइम्स एक्ट्स एज अ डबल एज्ड सोर्ड। इट हैज इट्स प्रोज एंड इट हैज इट्स कॉन्स ऑल्सो। 1991 में हम देखते हैं दैट वी ओपन आवर मार्केट्स टू द इंटरनेशनल multinational corporations by the way of LPG, liberalization, privatization, and modernization, globalization, and through different scapes, if I may use the term of Arjun Appadurai, कि हमने अलग अलग स्केप्स, चाहे वो एथनोस्केप हो, मीडिया स्केप हो, आइडियोस्केप हो, यानी कि इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटीज, इन टर्म्स ऑफ मीडिया, इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, ग्लोबल फ्लोज ने हमारी लोकल आइडेंटिटीज को शेप किया है। और हम ये आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि ये शेप कर भी रहा है और बड़ी तेजी से शेप कर रहा है। तो पैराडॉक्स हमारे सामने उत्पन्न हो गया है कि एक तरफ तो हमारा कल्चर है वो हाइब्रिड होता जा रहा है, और हाइब्रिडिटी होने के कारण हमारी जो इंडिजिनस डिस्टिंक्टिवनेस है
वो खतरे में आ गई है। एंड ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो सी द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कल्चर टू द वर्ल्ड बाय डिफरेंट वेज, क्योंकि हमारे कल्चर को कई प्लेटफॉर्म्स मिले हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, चाहे वो हमारा योगा हो, चाहे हमारी हिंदी फिल्म्स हो, चाहे हमारी स्पिरिचुअलिटी हो, इसको इंटरनेशनल टेकर्स मिले हैं। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का ही एक कह सकते हैं एक कॉन्सिक्वेंस है। तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही है। ग्लोबलाइजेशन का लाभ भी हो रहा है कहीं ना कहीं भारत को, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत के कल्चर को थ्रेटन भी किया जा रहा है। और एक इसमें बहुत बड़ा जो आलोचना हमें देखने को मिलती है कि ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं नियो कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा दिया है। जो नव उपनिवेशवाद है, हमने एक प्रकार उपनिवेशवाद देखा जब अंग्रेजों के अधीन हम गुलाम थे, वो 1947 में समाप्त हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थे जो स्वतंत्र हुए। लेकिन कॉलोनाइजेशन एक नए फॉर्म में भारत में आया है। एक तो जो ऑलरेडी कॉलोनाइज्ड हम थे, उसकी जो कॉलोनियलिटी है वो आज भी है, और उसी कॉलोनियलिटी को परपिचुएट करने के लिए न्यू कॉलोनियलिज्म भी आ गया। और न्यू कॉलोनियलिज्म का एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबलाइजेशन। न्यू कॉलोनाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन जिसमें आप फिजिकली दूसरे देश में नहीं जा रहे हो, लेकिन आप उस देश की राजनीति को, उस देश की अर्थव्यवस्था को, उस देश की विदेश नीति को, उस देश की बहुत आप घुस जाओ उस देश में तो वहां की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को भी आप मैनेज कर रहे हो, अपने हिसाब से चला रहे हो, जो हम देखते हैं कि अमेरिका करता है या यूरोप के अन्य देश करते हैं। सो दिस कल्चरल हेgemony of the cultural hegemony that comes due to globalization reinforces all those colonial obligations जो हमारे ऊपर पहले थी। और ग्लोबल जो कैपिटल का फ्लो है किसी भी देश में, भारत उसमें से एक है, वो बहुत सारी हमारी चीजों को मार्जिनलाइज कर रहा है। विशेष रूप से हमारी जो ट्राइबल, जो जनजातीय हमारी चीजें हैं, उनको मार्जिनलाइज कर रहा है। हमारा जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है उसको, या इंडिजिनस नॉलेज ट्रेडिशन है उसको मार्जिनलाइज कर रहा है। और हमारी जो सिविलाइजेशनल आइडेंटिटीज हैं वो उसको भी मार्जिनलाइज कर रहा है। हम आगे बात करते हैं कि कैसे जो भारतीय मॉडर्निटी है वो कुछ हद तक जो कॉलोनियलिटी है भारत की, या जो कॉलोनियल टाइम्स में थी, उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, उसका एक अपने आप में आया हुआ एक प्रभाव है, चाहे वो अनवांटेड प्रभाव भी क्यों ना हो। और 1983 में 1980s में आशीष नंदी एक स्कॉलर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जो पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी और ऐसी बहुत सारी चीजों पे लिखते हैं, हिस्ट्री पे। वो कहते हैं कि जो कोलोनाइजेशन था भारत के ऊपर, उस कोलोनाइजेशन ने हमारे अंदर एक ऐसा सॉर्ट ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया कि हमने अपने आप को कोलोनाइजर के वे में मिमिक करना शुरू कर दिया। यानी कि वी हैव ट्राइड टू मेक आवरसेल्व्स जस्ट लाइक आवर कॉलोनियल पावर्स। और जो भारत में मॉडर्निटी आई है, दैट इज मीडिएटेड थ्रू द कॉलोनियल प्रोसेसेस बाय देयर सिस्टम ऑफ नॉलेज एंड बाय देयर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और ये हम देखते हैं कि ये बहुत सही भी है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जो मैकॉलियन एजुकेशन सिस्टम था उसको हमने लंबे समय तक ढोया है। आज भी लगभग उसके वेस्टिजेस हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन अभी भी जो मैकॉलियन एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें अंग्रेजी को बाकी भारतीय भाषाओं की तुलना में ऊंचा समझा जाने लगा, अंग्रेजी को बुद्धिमत्ता का परिचायक समझा जाने लगा कि आप अंग्रेजी जानते हो तो यू आर नॉलेजेबल। तो नॉलेज को हमने लैंग्वेज के साथ कनेक्ट कर दिया और वो लैंग्वेज इंग्लिश बन गई। तो इस तरीके से हमारी जो मॉडर्निटी थी वो बड़ी अलग तरीके की मॉडर्निटी हमने इनहेरिट की आफ्टर 1947, जिसने कोशिश की कि हमारी जो सिविलाइजेशनल इथोस थे उससे रप्चर हो जाए। वी वी ट्राई टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सिविलाइजेशनल एथिक्स। जिस सिविलाइजेशन और कल्चर को हमने इनहेरिट किया था, हम उनसे अलग हो जाएं। और जब उनसे अलग हो जाएंगे तो फ्यूचर की हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी होगी, जो हमारी प्रोग्रेस की ट्रेजेक्टरी होगी, वो भी फिर वेस्टर्न टर्म्स में होगी। हमारी जो इंडिजिनस टर्म्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगी या वो समाप्त हो जाएंगी। तो इसी प्रकार जो कोलोनाइजेशन था, उन्होंने हमारी मॉडर्निटी को बहुत हद तक प्रभावित किया। और उस प्रभाव से ये हुआ कि पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में हम एक प्रकार से अपने ही कल्चर और अपने ही जो एपिस्टेमोलॉजीज थी, हमारे जो नॉलेज सिस्टम्स थे, उससे हम एलियनेट होते गए।
हमने अपने डेवलपमेंट को वेस्टर्न फ्रेमवर्क्स के हिसाब से समझने का प्रयास किया, और हमारे जो इंडिजिनस वर्ल्ड व्यूज थे, जैसे हमने बोला कि अभी किन्नौर के बारे में बात हो रही, तो क्या किन्नौर के लोकल जो गणमान्य लोग हैं वो हैं कि नहीं? क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स हैं अपनी डेवलपमेंट में और ग्रोथ में। यदि हम ही उसे अछूते रहेंगे, क्योंकि हमने एक ऐसी व्यवस्था कायम कर दी जो उनकी समझ से बाहर है, और वो ऐसी व्यवस्था है जो वहां पर लागू भी नहीं हो सकती पूरी तरीके से, क्योंकि वो यूरोसेंट्रिक है, वो यूरोपियन परिस्थितियों के मुताबिक या अमेरिकन परिस्थितियों के मुताबिक बनाई गई है और उसे वहां पर इंप्लीमेंट किया गया है। तो हमारी मॉडर्निटी ने बड़े गलत फॉर्म में खुद को मैनिफेस्ट किया, और हमारा कल्चरल एलिनेशन होता क्या, विशेष रूप से हमारे यूथ का, और कल्चरल एलिनेशन से हमारा जो जो कॉलोनियलिटी थी वो परपिचुएट होती गई, वो समाप्त नहीं हुई। इसमें और काम किया जो डिजिटल कंज्यूमरिज्म आ गया। आज के समय में हम इतना डिजिटली एडिक्टेड हैं, हम बात भी डिजिटल मोड से ही कर रहे हैं, कि उसने हमारी जो मौलिकता थी उसको चैलेंज कर दिया और उसको लगभग लगभग रिप्लेस कर दिया। इसी प्रकार चाहे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के माध्यम से हमारी इकोनॉमी पर प्रभाव हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हमारे पूरा जो मीडिया तंत्र है उस पर प्रभाव हो, हमने देखा कि अलग अलग समय में मीडिया कैसा नैरेटिव चलाता है कि जो भारत का अपना नेशनल नैरेटिव होता है वो गौण हो जाता है, और जो मीडिया का नैरेटिव है वो सारी दुनिया में सुना जाता है और उसको उस पर विश्वास भी किया जाता है। ये इन सब चीजों ने हमारे, और साथ में अंत में एकेडमिया, कि हमारे एकेडमिया को किस प्रकार इस न्यू कॉलोनियल मॉडर्निटी ने कैप्चर किया है, कि हमारे एकेडमिया में भी जो हमारी जो ट्रेडिशनल विजडम्स थी, जो हमारी कन्वेंशनल विजडम्स थी, हमने उसको कहीं ना कहीं नकार दिया, और जो इंपोर्टेड विजडम थी, चाहे वो वेस्ट से हो, चाहे वो अन्य विचारधाराओं से हो, जो वेस्ट जनरेटेड विचारधाराएं हैं वहां से हो, उसको हमने उससे रिप्लेस कर लिया। और फिर एक प्रकार से जब आप एक वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं, जब आप ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का हिस्सा बन जाते हैं, तो आपके ऊपर अनड्यू प्रेशर्स आ जाते हैं टू कंफर्म टू द ग्लोबल नॉर्म्स, कि जो ग्लोबल कुछ मापदंड हैं, जो पैराडाइम्स हैं, आपको कंफर्म करना पड़ता है। अगर आप उससे इतर जाओ, उससे अलग जाओ, तो मे बी आप फिर थोड़े अलग थलग कर दिए जाते हो। जैसे अमेरिका कोशिश करता है कि रशिया से तेल बंद कर दो, नहीं तो सैंक्शंस लगा देंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जब हमें ग्लोबल डिक्टेट्स के सामने हमें कॉम्प्रोमाइज होना पड़ता है, और हमारी कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री आफ्टर 1947 इस बात का बहुत उदाहरण देती है कि किस प्रकार से हमने अपने कई बार नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया है ड्यू टू ग्लोबल प्रेशर्स, प्रेशर्स ऑफ द स्ट्रॉन्गर कंट्रीज और मोर डेवलप्ड कंट्रीज। तो हमारी जो इंडिजिनस आइडेंटिटीज है, वो जिसमें ट्राइबल आइडेंटिटी है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस में, जो म्यूचुअलिटी में, जो कम्युनिटी सॉलिडारिटी में, जो फैमिली सिस्टम में, जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में रची बसी है, इट इज बीइंग चैलेंज्ड, और बहुत जगहों पे ये अपरूटेड भी हो गई है। आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे तो मेट्रो सिटीज का जो कल्चर है वो होमोजेनाइज हो चुका है। मेट्रोज में अगर आपको बाल गंगाधर तिलक की हम बात करते हैं, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको मैं लेके जाऊं, तो बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी और गणपति उत्सव का मनाना शुरू किया था 1880 और 90 के दशक में, ताकि भारतीयों में स्वदेश और स्वदेशी संस्कृति और भारतीय धर्म के प्रति एक जागृति हो, और वो उसका प्रयोग करें कॉलोनियल पावर को चैलेंज करने में। लेकिन उन्हीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अब एक प्रकार से जो भारतीय कल्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप वहां का लाइफस्टाइल हो, यूथ का लाइफस्टाइल हो, चाहे उनकी लैंग्वेज हो, उसमें भारतीयता की झलक आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि वो वही लिंगो फ्रैंका अपना रहे हैं जो मे बी लंदन में अपनाया जाता हो, या उनको कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा तो नहीं बन पा रहे, पर कहीं ना कहीं उसी ढर्रे पर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी इंडिजिनस आइडेंटिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब अपने को इस, चूंकि मेरे पास समय कम है, केवल 15 मिनट का समय है, तो हमारी जो मॉडर्निटी है, जो इंडियन मॉडर्निटी जिसे हम बोलेंगे, उसको हम कैसे डीकोलोनाइज करें, और कैसे वो हम इंडियन मॉडर्निटी को हमारी जो इंडिजिनस ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी इंडिजिनिटी है, उसके साथ जोड़ के देखें। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने को यह समझना पड़ेगा दैट ग्लोबलाइजेशन का अर्थ वेस्टर्नाइजेशन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ यूरोप का अनुसरण करना या अमेरिका का अनुसरण करना नहीं है। डीकोलोनाइजेशन के लिए जो हमारी सबसे पहली प्री कंडीशन है, और जब मैं डीकोलोनाइजेशन की बात कर रहा हूं तो इसमें भारत का हर प्रकार का जो प्लूरल समुदाय है वो सब कुछ आता है। मैं डीकोलोनाइजेशन का जिक्र भारत एज अ सिविलाइजेशनल नेशन के रूप में भी कर रहा हूं, लेकिन उस सिविलाइजेशन के भीतर जितने सारे छोटे छोटे सब कल्चर्स हैं उनका डीकोलोनाइजेशन की बात भी कर रहा हूं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये एक मेटा नैरेटिव है जिसको हम अपने
जो भी हमारे लोकल नैरेटिव्स हैं, हमारी जो इंडिजेनिटीज हैं, स्मॉलर इंडिजेनिटीज हैं, चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे दक्षिण में हो, चाहे पूर्वोत्तर भारत में हो, वहां पर ये सब चीजें लागू होती। तो हमारी जो ट्रेडिशनल एपिस्टिमोलॉजीज हैं कि ज्ञान को हम कैसे समझेंगे, ज्ञान को हम कैसे लेंगे, ज्ञान का प्रचार प्रसार कैसे होगा, वो हम रिक्लेम करें, वो इस समय हमारे हाथ से जा चुकी है। हमने आईकेएस के मदद मदद से, एनईपी की मदद से उसको रिक्लेम करने की कोशिश तो की है, लेकिन अभी भी जो रॉट है वो बहुत ज्यादा गहरा है, क्योंकि मैकॉलिन सिस्टम और बाद में एक प्रकार से उसी Chandradeep sir, जी जी your time is over, sir, but we will have few questions. Kindly give few final remarks about your presentation. ओके ओके ठीक है, मुझे लग रहा था कि समय हो रहा है। तो हाँ जी, मैं thank you, कुछ sir. जो कुछ हम अप्रोचेस अडॉप्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है उसमें सबसे पहले तो एपिस्टेमिक डिकोलोनाइजेशन होना चाहिए। हमारी जो इंडिजिनस फिलोसफी है, चाहे वो हमारी अद्वैत वेदांत की फिलोसफी हो, चाहे बुद्धिस्ट फिलोसफी हो, चाहे हमारी जो ट्राइबल कॉस्मोलॉजीज हो, चाहे हमारा जो कंटेम्प्रेरी नॉलेज सिस्टम है जो बाद में उभरा है, उसको हमें इंटीग्रेट करना है। जो हम ग्लोबलाइज्ड नॉलेज सिस्टम है उसके साथ हमें अपने को नहीं छोड़ना है। हमको एम्पिरिकल सोच भी रखनी है, और हमें जो हमारी इंडिक एपिस्टेमोलॉजी है, जिसमें श्रुति की बात होती है, स्मृति की बात होती है, अनुभव की बात होती है, हमें उसको भी लेकर चलना है। उसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो पुराना है, या वो इंडियन है, या वो ग्लोबल नहीं है। एक्चुअली उसको ग्लोबल करने का समय आ गया है। दूसरी बात जो हमारी होगी वो होगी लिंग्विस्टिक रिफॉर्मेशन, कि भाषा अंग्रेजी, या बहुत जगहों पर हम ये भी बात करते हैं कि हिंदी भी एक प्रकार से डोमिनेट कर रही है चीजों को, वो एक उसके लिए अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो हमें ये मान के चलना है कि वी आर पॉलीफोनिक, हम बहुभाषीय देश हैं, तो जिसमें मल्टीपल लिंग्विस्टिक और उन लैंग्वेजेस निकली हुई फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस भी हैं, और रीजन्स में वो बिल्कुल उनका प्रचार प्रसार है। तो हमें उसको दोबारा से अपनाना है, और जो एक्सक्लूसिव डिपेंडेंस है ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, उसको अपने को थोड़ा सा समाप्त करना है। और हमारी जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस हैं वो इंग्लिश से हटाकर हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, हमारी जो नेशनल लैंग्वेजेस हैं, उसमें हमें वो लेकर आनी है। तीसरी, इकोलॉजिकल मॉडर्निटी। हम, और इससे ज्यादा पर्टिनेंट और टॉपिकल बात हो नहीं सकती, क्योंकि हम इकोलॉजिकल डिजास्टर्स देख रहे हैं। तो कैसे अपने को जो डेवलपमेंट है वो अपनी इकोलॉजी के साथ उसको मिलाकर देखना है, वो अलाइन करना है। इस समय हम बड़ी अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, जिसका जो नतीजा है हमारे सामने आ रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो, वो गोल्स का अचीवमेंट धर्म सेंट्रिक होना चाहिए। और धर्म में हमारी प्रकृति को हमने एक्सप्लॉयटेशन की वस्तु नहीं माना है, पूज्य वस्तु माना है। हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं धरती को, हम धरती को एक रिसोर्स का साधन नहीं मानते हैं। तो जो भी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी डिबेट्स हैं, उसको अपने जो हमारा इंडिक वर्ल्ड व्यू है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज पे हो, बायोडाइवर्सिटी पे हो, हमें उसको लेकर आना है। अगली बात, जो हमारा डिजिटल स्वराज है, हम बहुत सारी चीजों पे, हम गूगल पे बात कर रहे हैं, हम जूम पे बात कर रहे हैं, बाकी चीजों पे बात कर रहे हैं, ये हम सारे फॉरेन एजेंसीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अपने को अपना जो साइबर स्पेस है और जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें एक आत्मनिर्भरता लानी है, सेल्फ सफिशिएंसी लानी है। चाइना का एग्जांपल हमारे सामने है, जिसको हम भारत में भी उसको हम इमिडिएट कर सकते हैं। और हमारी जो मॉडर्निटीज है, हमारी मॉडर्निटी एक मॉडर्निटी नहीं है, हमारी प्लूरल मॉडर्निटीज है। तो वो मॉडर्निटीज हमारे अलग अलग समय पर अलग अलग विचारकों ने वो मॉडर्निटीज दी है। मॉडर्निटीज है मतलब की जो ट्रेडिशन है, उसकी कंटिन्यूटी विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, उसके साथ उसको मिलाकर हमको वो आगे लेकर जाना है। तो हमारी जो प्लूरल मॉडर्निटीज है, जिसमें हमारा फिलोसॉफिकल डिफेंस भी है, हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है उसको रिक्लेम करना है, और उसको मॉडर्न नॉलेज सिस्टम के साथ जोड़ के देखना है। तो मुझे लगता है कि इन सारे टूल्स और टेक्निक से हम जो इंडिजिनस मॉडर्निटी है और जो हमारी इंडिजिनस ट्रेडिशंस हैं और ग्लोबलाइजेशन के साथ हम अपना एक अच्छा नेगोशिएटेड पाथवे हम अपना सकते हैं, जिसमें हमारी जो नेटिव चीजें हैं, हमारी जो इंडिजिनस चीजें हैं, हमारी जो लोकल चीजें हैं, उसको हम समाप्त ना कर दें, रिक्लेम करें जो हाशिए पर जा चुकी हैं। और साथ ही साथ जो ग्लोबल वर्ल्ड के प्रति हमारी जो जवाबदेही है, जो हमारी उत्तरदायित्व है, हम उसको भी निभा पाए। ये दोनों तरफ विन विन सिचुएशन हो, हमें एक ऐसी परिस्थिति की ओर लेकर जाना है। हम जा भी रहे हैं, लेकिन अभी बहुत रास्ता तय करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। थैंक यू, आई हैव कंक्लूडेड। Thank you for your presentation. We will go through on sharing your valuable exploration, sir. Thank you very much once again.
We feel immensely delighted to have with us Mr. D.S. Golda, retired judicial magistrate from District Innor. He is also a benefit and notable writer. Very well welcome, and we are delighted to have you in the first day of his conference. Our next keynote speaker is Dr. Sandeep Sharma, Associate Professor, CSRE School of Science, Social Science, JNU New Delhi. He is Associate Dean of Students, JNU, and Assistant Director, UGC HRDC, JNU. He completed his PhD from HPU Shimla, postdoctorate from IISER Mohali, and from Environmental Law and University from research expertise on human ecology, environmental impact, management and management, disaster management, tribal studies, policy planning, and nature conservation. FST building is also one of the specialization for him. Dr. Sandeep Sharma sir, you are welcome on stage. Please go with your presentation on the topic. Reconceptualizing the perspective of development from the lenses of the tribal community for conservation of culture and sustainability in the geographical context. Like kindly take care of time limit. Your time should not go beyond to 10 to 15 minutes, please. Thank you very much, and my namaste and regard to all of you. I may hope that I am clearly audible to all of you. So the first of all, I'm audible to all of you. Yeah. So thank you very much. And the first of all, I'm very grateful to the principal and the convener of this conference, the coordinator and the organizing secretary for giving me this opportunity to share my views. And as the host already has that given me 8 to 10 minutes for whatever to share my experience and the thought with you. So maybe I am not able to share everything with you, but I would also happy to share with you that I'm a tribal, Gadi tribal, belong to Brahmaur. And whatever I will share with you, that is on the basis of my experience. And I have traveled a lot in the Kinnaur. I think I have visited each and every village, and evenly I have visited and tracked in the high reaches of the Kinnaur from 2000 to 2020. And we have also developed some of the models when I was working with WWF in India in the Reckong area or the Sangla Valley. And I worked with the Indian Army also when I was working with this the high altitude wetland conservation program in the Samdo Poo area, and evenly I have a lot of interaction with the people in the Nako area when we were working with the Nako wetland area. So what I do that I will continue wherever my previous colleagues have left. Although I have prepared a very long PPT, but I may not be able to share with you, but I can share. The first important thing is a very important here that my previous speaker has highlighted, that the colonial kind of the mindset that the tribals and whatever it. So being a tribal, I can understand that the tribal people need not to be any kind of the empowerment kind of thing or the knowledge. They are the more knowledgeable people. And I will also very happy to share with you that I have learned many things from only the tribal people, because my work is totally dedicated to the tribal people in the Western Himalaya, Uttaranchal, Jammu and Kashmir, Leh and Ladakh, and all my PhD students belong to these area. So मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पे बड़ा गर्व के साथ कि अगर शेर की हिस्ट्री दूसरा लिखेगा तो वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए अगर ट्राइबल के बारे में लिखना है तो वो ट्राइबल को ही समझना पड़ेगा और ट्राइबल को ही लिखना पड़ेगा, इसलिए हमें आना पड़ेगा। इधर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द ट्राइबल का अस्मिता। मैं ट्राइबल वर्ड थोड़ा सा वो करता हूं क्योंकि ट्राइबल वर्ड जो दिया है वही कॉलोनियल एक माइंडसेट था। बेसिकली जनजाति जो वर्ड है, क्योंकि ये एक सामाजिक व्यवस्था थी, कुछ और ज्योग्राफिकल हिसाब से कुछ लोग वन में रहते थे, कुछ ग्रामवासी थे और कुछ शहरवासी थे। इंडिजिनियस पीपल की बात करते हैं, एवरीवन इज द इंडिजिनियस, आई विल नॉट गो इन डिटेल, बट आई एम हियर टॉकिंग अबाउट दैट वी नीड टू बी थिंक अबाउट दैट द ट्राइबल की अस्मिता, अस्तित्व और विकास की, how we are trying to see that that the development that is a very, very important, we need to think. The another point which I need to be also trying to indicate with, as I was listening the vice chancellor lecture, and that
other previous scholar also, they talked about this, the sustainability, they talked about this, the indigenous knowledge system. But when the other people are writing and they are thinking about this, the tribal community, they said that the tribal having this kind of the medical system, the tribal have this kind of the ecological system. But no one is talking about that, the how these, the Janjati people, they are living with the society, at the societal organization, how they are living with the sustainable way. The sustainable development terms comes in the 1983. But we have the sustainable way of living since the time immemorial, which we are trying to use. They have adopted the sustainable development way from us, not we are trying to develop in that way. So we are talking about, see, there is a two thing. The knowledge is not more than the wisdom. It doesn't mean that कोई आदमी पढ़ा लिखा है वो ज्यादा knowledgeable हो सकता. Wisdom is a very, very important that we need to be think about that. And this wisdom is a very important, and being a tribal community, being a Janjatiya community, you can see that there the wisdom. In the tribal community, no one lived without hunger. Everyone, the sharing practices they have, the sustaining practices they have. You can see any kind of the phenomena, whether the grazing, rotating system, all these people, they may be having in that the particular area. So I think the only my point is that because our identity is linked with that, the culture, that is a very, very important. If our culture is not there, our identity is not there. But the culture is related with that, the environment of that particular area. किन्नौरी आदमी टोपी पहनता है, भरमौर का आदमी अगर दोड़ू चोड़ू पहनता है, लौल का आदमी पहनता, so that having the relationship with the nature also, that having the relation with that the society, and our identity is that, our identity is day to day on the basis of that. So that was only the one point which I need to be highlight, that we need to see from our lenses, not from the other lenses. That is a very, very important. So whether we are trying to see that what is the development. So development, whatever all the policy maker, the planner, the bureaucrats, maybe here participating in that area, they are trying to see the development in the tribal area from their perspective, not from our perspective. I am very quickly, I will share you one, please give me access to share PPT. I am not able to share that, the PPT. But the only point is that share, because, so see, that sometime that many hundred of the studies are conducted in the tribal area, there may be the thousands of the paper are also published on that, the tribal area. But my question here being an academician, that how much the publication of the papers, the books are benefiting to the tribal peoples. That is also very, very important. But kind of the policies are developing in that tribal area, how much the participation of the local people, that is also the very, very important is that area. So because I have prepared a PPT, which I am not able to share, but see, the question is that I was visiting one Nitimana area, we have done one project there, and evenly in my Bharmor area or the Kannauр area, एक गवर्नमेंट का स्कीम आया कि वहां पे एक बहुत अच्छा हेल्थ सेंटर और सर्विसेज सेंटर बनाना है, एंड द लोकल कम्युनिटी वाज नॉट रेडी टू गो विद दैट प्रपोजल, एंड द लोकल कम्युनिटी से दैट कि हमें ये नहीं चाहिए, वी हैव ऑलरेडी द सब सेंटर इन दैट एरिया. सो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आवर पीपल दे आर ट्राइंग टू से दैट भी कैसे लोग हैं, उनको हेल्थ नहीं चाहिए, हेल्थ सर्विस नहीं चाहिए. तो लोकल ने बोला हमारे यहाँ लोग बीमार कम पड़ते हैं, लेकिन 7 किलोमीटर के एरिया पे आगे है, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए अगर प्ले ग्राउंड बना दें, वो हमारा नीड है. And they are ready to give the land of that area. So trying to see that what kind of the needs they have, what kind of the developmental aspects these people they may be having. So there is a very, very important that the one thing is very, because if we can divide it into the protection of the culture and that the security of the people area, that is a very, very important, which we need to be think with the in and out migration. So how that out migration is also like influencing the culture of that area. There may be some in migration is also there. So we also think about that, what kind of the culture heritage is there, what kind of the traditional system is there. We also think about that, what are the livelihood or the food security system. I was reading about that, the Kannauр area, that because the Forest Right Act is also very, very important act, which can be also strengthen the tribal community and that area. But you know that again, which my earlier speaker was also sharing with you, that the colonial mindset, the bureaucracy is there.
the people are like applying for the many claims, but they are not able to get the claim. But another side, if there may be some developmental hydropower projects can be go in that area, so that all they are trying to allow in that particular area, but they are not giving the claim for the Forest Right Act in that area. Although in the tribal area, more than 2/3 of that the land is comes under the forest area. So this is a very important that we need to think about that what kind of the environmental ecology is there. So we need to think and rethink about this, what is the developmental perspective for the local community, whether that kind of the development is hampering the culture identity of that area, how we can promote the participatory governance, how we can also develop the self-governance and the autonomy of that area, or how we are trying to do such kind of the collective well-being, and that can be enhanced by the wisdom of the local community in that particular area. So this is very important that we need to integrate our the indigenous wisdom in that area. We also need to think about that how we can develop the ecological stewardship in that particular area. So these are the very important issues which we can be also trying to discuss with that area. And the one important point which is also very highlighting there, that everyone is talking about the sustainability, the sustainable development. But here the question comes that what is the meaning for the sustainable development of the local community in that area? Whether or the projects are working in that area, but whether they are talking about that the carrying capacity of that area, whether they are also respecting the local culture of that area, because our dependency is also the forest area, our dependency is also the grazing land or the grazing area. Most of the forest products we are also collecting from the forest area. So this is a very important that we need to think the issues, when we need to integrate developmental program with the society, the culture, or the environment and that area. We also need to consult public in the public developmental program area. We also be talking about the individual with the community, that how we can be protect in that the particular area. So carrying capacity is also very important factor in that area. So someone earlier that discussing about that this kind of the changes may be happened, but you know that the local community is also developing some the resilience of that area. They are also adapting in that area. But the question here is not that they are adapting in this area, but the question is also important that what kind of the policy they are trying to develop, that how much they are taking the consideration of the local community of that area. I'm again and again talking about that because the culture, the community, and conservation and development, they are integrated part of each other. So development cannot be compromised at the cost of the local community and the culture area. That is also very important. The another point is also very important here, that the tribal community cannot be considered just like a guinea pigs. They are not for the experimental side, but they need to be involved from the planning stage of any kind of the development, the policy or the project, and they can be also involved during the execution of the project, implementation of the project, and after completion of the project. That is a very important, because they need to be develop some policy, the planning of that area, then they can be only responsible that area. Although I have incorporated some of the study which we have conducted with the Gaddi community, that how they are changing with the livestock. We have also conducted one study in the Kishtwar High Altitude National Park area with the Gujarat and Bakarwal community, and another study which we have also conducted in the Nubra area. So I was sharing this these points, but here only my point I'm concluding with this line only, that whatever the policy, the planning which can local community should be considered as a main stockholder in that area. And we need to understand the perspective of development from the local perspective point of view, from their lenses point of view, not from the other, those who are not belong to that area, or they cannot be understanding, not having that the experience of that area. So I am concluding with this line only, that we need to think our level only, we need not to be depend upon the other. So thank you, the organizer, for giving me this opportunity. Namaste to all. Thank you very much, Professor Mark, for sharing your insights and explanations and delving deep into your topic. Thank you very much, sir. Our next speaker is Dr. Uttam Lal, Associate Professor in Department of Geography, School of Human Science, Sikkim University, Gangtok.
He has done his PhD from Jawaharlal Nehru University in New Delhi. Areas of his research are mountains ecology, cultural research of island societies, Himalayan language, dynamics, and animal geography and borderland space relations. He is also a recipient of China India Cultural Exchange Program of Scholars Award ICSSR New Delhi and CASS Beijing. To his credit, he has also published many research papers in international and national journals of repute. May I request Sir Dr. Reckong kindly delegate upon your topic. Custodians of the clouds, cultural pathways to sustainability in the Himalayan region. Your time limit is 10 minutes, sir. I will try to conclude within this 10 minutes. Thank you, sir. Please continue. Well, thank you very much. Is my presentation visible? No. Is it visible? No. Hello? Hello? Am I audible? Can you see my presentation? No, sir. No, sir. You haven't have shared it yet. I have. ठीक है आ रहे हैं ठीक है विजिबल ओके विजिबल थोड़ा टाइम लगता है ना इन किसी चीज इन शेयरिंग कर हाँ Is it still not visible? Hello? Is it visible now? Yes, sir. Okay. Well, thank you very much. Well, thank you very much for having me here. So I'll cut down on the formalities because the time is less. I'll straight away, go to my presentation, and I wish to, talk on the custodians of the clouds, the cultural pathways to sustainability in the Himalayan region. Well, mountains in general, as we understand mountains, as we see it, it means to different people as we engage it or as we live it. Since all of you are sitting over there and I'm talking from a remote place, I'll not talk much about Kinnaur per se because you have been interacting with it day in day out. Rather, I'll try to take a synoptic view and then come back to Kinnaur and the topic that I'm talking to. I hope all of you can see this picture. Hello, is it visible, this picture? Yes, sir. Yes, sir. We can see it. Yeah, so this is a picture which was clicked in the year 1863 by Samuel Bourne. He was a photographer from Nottingham, United Kingdom. At the point when this picture was taken, in the year 1863, this was the highest point anywhere in the world where this picture was taken, and this is Manirang Pass in the divide between Spiti and Kinnaur. So it's from the Ropa side in Kinnaur, and so at that point in time in 1863, because back then the camera used to be extremely big, it used to be almost 1 ton, so it was obvious why this picture in 1863 it remained anywhere in the world the highest point where this picture was taken. And then this picture I clicked of Manirang Pass in the year 2007. So you see how much changes that have unfolded. So if we see this from the perspective, because a mountain we see it vertically and horizontally. So often we see community live vertically, but their experiences go horizontally. Whereas the sciences that we do,
we try and do horizontally, and then we try to implement it vertically. With this, I'll try to attract a little bit more attention of you. In the beginning of 19th century, Chimborazo was a volcanic peak in Ecuador in South America that used to be considered the highest mountain in the world at that point in time. Around 20 years after that, in 1822, it was Dholagiri that world believed that the Dholagiri is the highest mountain, and then it was Nanda Devi for some time, then it was Kanchenjunga from where I'm speaking in Sikkim. People used to think these are the mountains, and the world used to believe that, the mountains, these are the highest mountain. And it was only in the year 1856 when Everest was believed to be the highest mountain in the world. So you see how our understanding has, changed over time, the general understanding of the mountain. But what about the people? Did they not live back then, or did anything matter to them whether their mountain was highest or it was not highest? People continue to interact with the mountains and the elements of the mountains and lived accordingly. You see, the science that I'm talking about, there has been scientific paper which talks about that the Himalaya was a much warmer space about 1,000 years back. And after that, there has been, cold snaps when the Himalaya started getting again colder. And now we are increasingly dealing with the problem of, global warming. We already know that there have been, seasonal villages. People used to go graze their animal higher up. And in between, there are religions, there are stories, and there are sciences which has been, dealing with, high altitude and low altitude, villages and the places. Again, the mountain, a lot of nuances gets filtered in because of how we see the Indian Himalaya in terms of our borders. So if you see the border with, Nepal, we have still, except for the Sikkim, we have all the Himalayan states which shares border with Nepal. We have undemarcated border as well. And then we have with, India and Bhutan, we still have undemarcated border, even with Bhutan. So there's with Arunachal, with Sikkim, there's our, patch of it, which is undemarcated border. And then with the China, we all know that, all our borders are undemarcated except for the border with Sikkim. So we see there are, political differences, there are, scientific, ways of looking things differently, and there are indigenous way of understanding our, world, understanding our, environmental repercussions. So this is what I want to, I wish to talk about it. So about 6 or 7 different points, but because there's less time, I'll talk, only about selective of this point. So first, I wanted to talk about dissecting the role of the culture in the Himalayan sustainability and the Himalaya Arunachal sacred ecology. And of course, I'll cut down on Kinnaur because this is something a lot of you are more aware of it because you live there and day in, day out. And then the cultural strategies, cultural practices, and what's threatening the sustainability, and finally the cultural renaissance that I wish to talk about. Well, so to begin with, what I wish to talk about is, what we have been thinking in terms of, culture, that normally it's different and the way it is lived is different. Normally, how the culture out of the mountains is looked at is more of a decorative and, day-to-day activities. But culture has, in reality, it has been, adaptive more so of the high altitude, the, mountainous culture when we talk about it. Well, in the mountains and higher up as we go, the culture, the, communities have been a living index of survival strategy. So it's more about, sustainability rather than mere academic concepts that, some of us, we engage, quite often. So what we see is, when we talk about the survival strategy, it implies that we need to do, a lot of learning from the people of how they have, lived with their, changing nature of the, their immediate surrounding.
over the same, thousands of years, as we saw from some of the scientific paper that, Himalaya have both seen a period of warming and then period of cooling, and again we are in the period of, warming again. Society have survived all this while. We have a problem of adaptability, and that when we see from the, outside, or when we see the, top down approach of managing this, we see, more of a challenge. With this, I move to, my second point is Arunachal sacred ecology. And when I talk about it, you will all be able to find a lot of similarity, a lot of analogy back in Himachal or back in Kinnaur per se. There is a valley in Arunachal called Siang Valley. Siang is the same river which we know it as Yarlung Sangpo, the Brahmaputra. So lower down we know it Brahmaputra, and higher up in Tibet we know it as Yarlung Sangpo. When it enters Arunachal, we know it as Siang Valley. Many of us, we would be surprised to know that this particular valley has been a valley which is considered as a valley which is the sanctuary of evolution. Why I say that? Because scientifically there have been paper which is produced which talks about this is the only valley where you see that the vegetation which is subalpine and vegetation which is subtropical grows side by side. It is mind-numbing. Those of us who have done some bit of sciences, we know that this is just not possible. That subalpine vegetation and subtropical vegetation, how will it grow side by side? But this valley is such a special valley that at short distances there's a lot of diversity. The biodiversity has been there, and this valley has been a kind of laboratory for evolution scientists as well as the social and the religious scholars. So there is, we know that there are, from the Buddhist cosmology, there are sacred places. We talk about, what in the Western concept people talked about El Dorado. In the Buddhist concept, people talk about, the cultural course. But then in this valley, there is something called, Pemako, which is, one of the hub of the, Buddhist belief system, or rather the, most pious Buddhist sacred core. All lies here, and on top of that, if you see the evolutionary area of this Siang Valley, the 4 big cats have evolved in Siang Valley. So lower down you have tigers, then you have clouded leopard, then you have wolf, and you have snow leopard. Scientists believe that all these 4 big cats have evolved in Siang Valley, and then it moved to other parts of the world and other parts of the Himalaya. With this, we still see that when we talk about science and the politics horizontally, we see that there is still a lot of less information or less understanding about this valley has been. Rather, it should have been one of the most talked about area in the Himalaya, but rather there's less talked about because right now the main dialogue in the media which is going on is about China making the biggest dam on the Brahmaputra, and the part of this Siang Valley lies inside China, and part of it lies with us. Chinese side, they have been producing a lot of scientific papers. There's a lot of new species is being discovered almost every second week, every fortnight. Our side, scientific papers are coming, but not matching up to that level of frequency. So every 1 to 2 months we discover new species in this valley. And then comes the geopolitics, then comes the dams and the dams related issues. And I am talking Arunachal per se to the audience who is largely from Arunachal or from Kinnaur, also because of the fact that the dam experience or the experiences or the efforts which has been put in the dams in the rivers of Himachal and Kinnaur
it has been replicated to else part of the Indian Himalaya, including Sikkim, including parts of Bhutan, and including Arunachal. So coming back to the biggest dam, which is as the media reports, which is being created by China on Brahmaputra, which is factually incorrect. Despite our media writing that, what is happening is they are not making the biggest dam on Brahmaputra. What they are making is the biggest hydel power project. Now, there's a difference between the two. Biggest dam means you have to have the biggest reservoir, which they are not doing. Why they are not doing? Because this particular river has the deepest gorge anywhere in the world. No, because there's a deepest gorge and there's about 3,000 meters shear drop. China is trying to take advantage of that, and they want to have the biggest, electricity generation because of the shear drop of the water. And to match that, because obviously it's a security concern, to match that, what we are trying to do is we are trying to put in our side of Himalaya, which is in Siang Valley, our side, we are trying to make the biggest dam in the Indian Himalaya, and that's the communities they are opposing. Why they are opposing? Because there are a lot of indigenous community which live there. There are Adis, there are Nisis, there are Pema Kopa, there are other communities who live there, and there's Mismis also. So what they are saying is that their sacred landscape. So the sacred landscape is going to undergo changes. They are going to be submerged. Plus, this is environmentally very precarious land, and it receives a lot of landfall. It gets a lot of landslides. So the communities have been opposing this. And this particular, you will see that this kind of scenario exists in the else part of the Himalaya as well. That because there is a version of top-down approach where from the center some bit of development issues comes, and then there is a disconnect with the local population where local population is not able to connect with the development issues which is being handed down to us. So what I'm trying to bring in here is, sometimes the local geography is not talked about as much as it should be talked about. Say for that matter, we hear a lot about Kinnaur per se, but in many ways, Kinnaur district is a unique district in the sense 80% of this district is a high altitude district, high altitude area. And only about 2 to 3% lies in subtropical area. You will see that Kinnaur is a district which showcases almost every type of Himalayan climate which is there. So Kinnaur, in a certain sense, it's a yes, please. Hello? Yes, please. Uttam sir, Yeah, please. please will you please conclude now? Okay. Thank you, please. Okay, so if you give me a minute, I'll. Yeah, please. Yeah. So in conclusion, what I'm trying to say that I said the custodians of the cloud. What I basically means, the cloud does not only means the moisture. Cloud also carries memories of the communities of Himachal, communities of Arunachal, communities all along and beyond. So it in many ways it offers a great deal of prayers and the learning, and there are people who have been massive victims of the climate change, but nonetheless the same people have also been the guardians of biocultural heritage, and the people, because of their adaptability, they have been unsung warriors of climate strategies. So this is where I want to pitch in my debate that whenever it comes to the science that we do, whether vertically or horizontally, we need to take into the account the custodians of the cloud, as the previous speaker was also talking about, from length and breadth of the Himalaya. Unless until we take into account the local experiences, it becomes increasingly clear that only the science is not going to lead
the way unless until we work with the custodians of the cloud. Well, thank you very much. Thank you, sir. All right, I have already invited you and I have introduced you with the participants. You will speak through this telephone or through Google Zoom link. Okay, so okay, okay. Yes, you can start with. Yes, yes. Okay, Irina is from Moscow, Russia. You and, have to be very, very she is particular. member of This is not an easy the job. Please take care of your duty. of concepts of longevity of life, and now she will speak on wellness and fitness and wellness Russian view. All right, then you can start, Irina. Namaste to all. Hello from Russia, from Siberia. I'm actually living now in Altai Mountain. This is a part of Russia where you can find beautiful nature like in Himalaya. And it's the central part of the continent, actually. I live close to Mount Beluga now. Mount Beluga, we can consider that this is Russian Kailas and Holy Mount. And previously, I spent more than 15 years in India learning Ayurveda, spirituality. My Gurudev from India, Mahayogi Pilot Babaji, and more than 50 years, I was learning meditation, yoga, Ayurveda, and now my mission is to spread this knowledge in Russia. But as also, I'm an Ayurvedic expert. I just would like to tell you about our Russian fitness and wellness tradition. Actually,
most of you who just traveled to Russia or maybe saw some videos about Russia, you know that Russia is a very cold country. We have long winter. At least 6 months per year we have snow in our area. And we have very interesting approach to the wellness because we live in cold country. And we love hot banya. Banya, this is a sort of steam bath, but it look like a wooden house. And when we go there, we go together with our friends, relatives. We wear a special hat, and we use special herbal herbs to make massage for our body. And after very hot 90 degrees steam, we go out and put our body to the snow. Just imagine. For many of you, it's very strange that people after hot, they put their body in the cold. We also used to swim in cold rivers in winter. Especially we have a holiday like Jesus Christ. This is 19 January, and all people go to the river and swim in a cold river. The temperature is -5, something like this, and people cut the ice and put their body inside the cold river. Yes, we are strange people, we are Russian, but that makes us healthy and happy. This is very good for stress and for change actually the state of mind, because cold water rejuvenate our body, rejuvenate our mind, brain, and also give us power to survive in a cold climate. Telling the truth, we have so many common things with Indian Ayurveda, because Russia, this is a country of herbs, and plenty of herbs in Altai Mountains, in Karelia, in central Russia, and every summer people goes and collect herbs and make herbal teas and use herbal medicine for different diseases. So it's very common with Ayurveda, but we have different herbs here because different place. We very oftenly we use something like for example roots and roots which for example rhodiola rose, which is very healthy and protect our body and mind from stress. Stress relief, and also very good to go to mountain and high altitude. So many of people in Russia, they use herbs to become stronger and more powerful. And Russian people love hiking. At least once per year we go to mountain. We have our Russian mountains, and as well we travel to Mount Kailas. We travel to Himalaya, to Nepal, India, and for those purposes we but herbal medicine, and most of the time we take it from Russia. We also believe that traditional wellness is much better to protect our health than actually normal allopathic medicine. So to preserve our health with herbs, hot bath, cold bath, hiking. Also, we go to the forest. And in general, Russian people believe that if you go for a walk at least 2-3 times per week and walk at least 10 kilometers and more, our health become much stronger. So this is our concept of wellness. Of course, in big cities like Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg, Nizhny Novgorod in Russia, people now use fitness clubs, and they more about yoga and meditation, and they know about
Eastern and Western wellness culture as well. But in remote areas like mountain areas and villages, people live mostly according Russian traditional wellness. And as I already told, that our climate is very cold, and we have all 4 seasons, very clear summer, 3 months summer, when the weather is very hot, especially in Siberia, sun is very bright and temperature plus 30 in daytime. After that, autumn come. Autumn is very beautiful, red, yellow leaves in the forest, and people go for mushroom. This is our also wellness activity when all the family or friends, we just take one holiday and go for forest and collect mushrooms. And this is very healthy habit. So mushroom, we love mushroom. We know about mushroom a lot in Russia. This is our like herbals and mushrooms and berries, the main food which we collect from the forest. And we mainly use this during winter time. And actually people also love to create their own garden, and in the garden they also oftenly produce herbs and different berries. So summertime रितिका कौन स्क्रीन शेयर किया है ना रितिका ने? Who is रितिका? स्क्रीन शेयर थोड़ा ऑफ करो अपना. एक बार इसमें करो, मोबाइल से करो, एक सेकंड मोबाइल से करो, मोबाइल से है ना, बोलो यहाँ से. मोबाइल से करो. highlight arena, we can't see. Okay, no issue. We want to ask 2 questions. One is, like you said that in Russia you have that procedure for newborn baby. You put them in cold water. This is one process by which they don't get much disease in coming age. Similarly, in science, we study that those plants they give good fruits which get good chilling temperature during winter. So same is perhaps applicable to human beings also. One more thing we want to ask from you is, hello? Okay, hearing. We saw your face here on screen. You don't have any wrinkles on your face, and your face is glowing too much. Tell us, in old age in India, particularly in hilly areas, we get lot of wrinkles on our face. Though I am not having much in 60 years of age. What you do in Russia?
हेलो, नमस्कार सभी को। क्योंकि बहुभाषी लोग जुड़े हैं, तो आई वुड ट्राई टू कीप माय प्रेजेंटेशन मल्टीलिंगुअल so that everybody can understand। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हैं, हमारा मेजर काम स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, तो चाहूंगे कि स्टूडेंट्स भी अच्छे से सुने और हमारे साथ जुड़े। सो मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिजिनस कल्चर, क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस फ्रॉम जेटल्स, अ यूथ लेड डिजिटल आर्काइव इन द वेस्टर्न हिमालयस। तो इससे पहले जितनी चर्चा हुई थी उसमें काफी बात की गई थी कि कैसे हम होमोजेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के टाइम में हम होमोजेनिटी से कैसे बचे। So Zetels is a small attempt towards that। एक छोटी सी कोशिश है। तो इस प्रेजेंटेशन को आप एक केस स्टडी की तरह ले सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के थीम में जितनी अपकमिंग डिबेट्स है, चाहे वो बात हो इंडिजिनस एजेंसी की, चाहे बात हो क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस की, तो वो हम कैसे सोच सकते हैं विद इन द चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। जेटल्स क्या है? सो जेटल्स इज बेसिकली अ डिजिटल आर्काइव। तो हम लोग किन्नौर की जो समझ है, इंडिजिनस नॉलेज जिसे हम बोलते हैं, उसको हम डिजिटाइज कर रहे हैं। क्योंकि हम आज के जिस होमोजेनिटी, जैसे हम बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट सब जगह है, राइट? तो कहीं ना कहीं उसको हम लेवरेज भी कर सकते हैं, उसको हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, या फिर उससे हम कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो समझ है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। सो इट्स अ गेम how you manage or how you leverage technology to sort of build up an understanding where indigenous people can get more agency in today's globalized times। So Zetels is an initiative towards that। So हम लोगों का जो है basically you can also Google and check www.zetels.com। तो हमारे जो indigenous cultures है, ज्यादातर क्योंकि हमारी मतलब बोली है, स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कल्चर का रस है वो ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा आता है। जैसे एक सर जिन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी पहले, उन्होंने बोला था कि इतनी सारी पब्लिकेशन है ट्राइबल कल्चर्स पे, इतने सारे बुक्स लिखे हैं, बट उसका ट्राइबल लोगों पे क्या इम्पैक्ट जा रहा है, राइट? तो कहीं ना कहीं हम वो बुक्स नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम वो देख नहीं पा रहे कि किस तरह के रिसर्च हो रहे हैं आज के टाइम पे, चाहे वो इकोलॉजिकल फील्ड में हो, क्योंकि ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज भी ट्राइबल कल्चर्स में बहुत ज्यादा है। तो Zetels इज अ मीडियम फॉर दैट, क्योंकि सब कुछ ओपन सोर्स है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी देख सकता है। गाने जो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के साथ बाकायदा वीडियोस डाल रहे हैं। बहुत सारा लिंग्विस्टिक डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, होपफुली एक ऑनलाइन डिक्शनरी के टूवर्ड्स भी बिल्ड कर रहे हैं। So that is the idea, how to leverage technology so that we can build up more indigenous agency, a very ground up approach, नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच है। ये नहीं कि रिसर्च स्कॉलर्स आके रिसर्च करके लेके जा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करके जा रहे हैं, बट बहुत ही कम्युनिटी कंसल्टेशन के साथ काम हो रहा है। जो हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से होता है। स्टोरी टेलिंग कहीं ना कहीं आज की जनरेशन को बहुत ज्यादा अपील करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पोस्ट लगाया था कुछ दिन पहले, तो चामका जो बोलते हैं, हमारी टोपी पे, सर ने टोपी पहनी है यहाँ पे, तो चामका इसके ऊपर लगा हुआ है। तो चामका का अगर हम एटमोलॉजी देखें, यानी उसका वो वर्ड आया कहाँ से है, तो इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चाम जो हम्स का है हमारा, that means wool, because it reminded people that it looked like a combed wool। और खा जो बोटी किन्नौरी है, जो अपर किन्नौर में बोलते हैं, उसका मतलब होता है स्नोफ्लेक, स्नो। सो बेसिकली वहां के लोगों ने देखा तो उनको लगा अरे ये तो स्नोफ्लेक जैसा दिखता है। सो कामखा, which is not even a native species of Kinnaur or Xylem indicum, जो बाहर से आया है shepherds के साथ, it tells so many stories। So storytelling is one of the major ways through which we try to communicate to the people
give the knowledge back to the indigenous communities. तो social media platforms एक हो गया और website जो हो गया, we use very open source और cost effective online tools जो है हम use करते हैं ताकि सारे लोग देख सके, समझ सके और contribute भी कर सके। उसके अलावा जरूरी ये है कि आप जब भी इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन या आर्काइविंग कर रहे हो तो आप हमेशा कम्युनिटी के साथ कंसल्ट करो। आप ये नहीं कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी डाल रहे हो, आप चर्चा करो, आप बात करो, जिसके लिए हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, काफी टाइम से इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल फिल्म स्क्रीनिंग्स हो या फिर मैगजीन लॉन्च इवेंट्स हो या फिर जिस भी स्पेस में हम चर्चा कर सके कम्युनिटी एल्डर्स के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, क्योंकि वो ही हमारे नॉलेज रिपोजिटरी है। So community dialogue is a very important part of this archiving process. And then another thing that I want to say कि आज के टाइम पे जैसे हम बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है एंड वी आर सीइंग कि किस तरह से कल्चरल होमोजेनिटी भी बढ़ी है, बट देन एट द सेम टाइम वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्सेस टू नॉलेज जो बाहर का नॉलेज है। एंड देन वी ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि ट्राइबल कल्चर में भी हर चीज अच्छी नहीं है। दैट इज वाई डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या चीज हमें आगे लेके जानी है, क्या चीज को हमें छोड़ना है, क्योंकि वी एज यंगस्टर्स we are negotiating within a changing times, within a very global perspective and all that. So these are some of the like questions that you need to ask, and they can only be asked when you are working in a community like setup. जब आप बातचीत और डायलॉग कर रहे हैं, जब आप समन्वय बना रहे हैं, समझ बना रहे हैं सबके साथ में, सो दैट इज आवर होल इनिशिएटिव। और आशा है कि मोर एंड मोर पीपल कैन कनेक्ट टू इट, यंग पीपल कैन कनेक्ट टू इट, और यहाँ पे बहुत अच्छे स्कॉलर्स भी बैठे हैं जो ट्राइबल कल्चर्स पे रिसर्च करें। सो वी वुड लव टू हैव योर इनपुट, and this is like our small sort of case study how indigenous cultures can have more agency and have more ground up approach in a very global times and leverage technology to sort of mediate their understanding and build a larger narrative within very radically polarized times. So thank you. I don't know many time here. Thank you. If any participant or any host to ask a question. हमने अभी नॉर्मल स्टार्ट किया है, बट आशा है कि और जुड़े, तो हम नहीं चाहते कि हम सबकी जगह में घुस के उनके लिए काम करें। If somebody is in Chamba or somebody is in Lahore, तो उनको कल्चर का अपने पता है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं विद इन कैसे वो लोग यूज कर सकते हैं, mythology, but then the idea is local people take charge of their own. So Thank you. आपको सलाम देना चाहेंगे, आप अपने कम एज में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे और कैसे हमारे शूरवीर हमारे साथ हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और साथ में थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जो आप यहाँ से चर्चा करेंगे वो कम्युनिटी ध्यान देना, थोड़ा सा आपको समय भी लग सकता है, लेकिन आप हमारा आशीर्वाद और हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Morphology to machine learning, the part of innovation in ecology research. नहीं ठीक है।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है, सबको भूख लग गई होगी, अब लंच टाइम भी हो गया है, सो आई विल नॉट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है, ऑल्दो इट्स वेरी एकेडमिक, बट देन द आइडिया दैट आई वांट टू ब्रिंग फोर्थ इज कि जो सुबह सर बता रहे थे कि कोलैबोरेशन का टाइम है, राइट, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन का टाइम है, सो हाउ डू वी ब्रिंग दैट अबाउट। तो मैं उसे एक इकोलॉजिकल रिसर्च में हम कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी, और फिर एक वेरी बेसिक साइंस जैसे टेक्सोनॉमी है उसमें हम मशीन लर्निंग जैसी जो अप्रोच है वो कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ डू वी आस्क क्वेश्चन, हाउ डू वी ब्रिंग दैट फोर्थ, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ आज के टॉक में। So let's start with how ecology connects to many different fields. So I can't include everything today here, but then I've listed down a few subjects, like let's say chemistry. So an ecologist asks questions like how does the chemical signaling evolve in plants or in animals, right? So there you need to study कि कौन-कौन से chemicals हैं, what kind of how do we extract those chemicals, उनको stabilize कैसे करना है, etc. So there it requires you to know the tools from chemistry. Then we also use tools from mathematics to understand predator-prey dynamics. So here I'm just going to list down like a very few questions. So there are many other questions that you can ask. बस एक example देने के लिए मैंने बस एक questions डाले हुए हैं. Then if you want to link history with ecology, how do we do it? So let's say we talk about apples, right? Kinnaur में Kinnaur का apple crunchy होता है, अच्छा होता है. Then what is the history of that apple? Where did it originate? वो evolve कहाँ हुआ, and how is it कि आज के time पे वो पूरे temperate world में फैला हुआ, even like not just temperate world, like most countries are growing apples right now, right? So how did that flow came into picture? वो कैसे एक country से दूसरे country में move हुआ, and उसका ecology कैसे बदला? Then comes the field of economics, and it's one of the most fascinating fields, and जिसका आपको ecology and especially evolution में बहुत application देखने को मिलता है. तो यहाँ पर क्या है कि ecologists और evolutionary biologists वो ऐसे question पूछते हैं कि how does the species decide कि उस जैसे एक मधुमक्खी है, ठीक है, उसको कैसे पता कि कितना टाइम वो एक फ्लावर पे फोरेज करे और कितने टाइम बाद उसको दूसरे फ्लावर पे जाना है. अब एक खेत में फ्लावर्स खत्म हो गए हैं तो एट व्हाट पॉइंट शी डिसाइड कि नेक्स्ट फील्ड में जाए, राइट? और या फिर हम बर्ड्स के अंडे देखते हैं ना, तो फिर कि किसी चिड़िया के 4 अंडे ही क्यों देती है वो, राइट? व्हाई नॉट मोर? सो ऑल दीज answering all these questions requires you to have tools from economics. Then comes geography, and evolution without geography is very difficult to study. क्योंकि जैसे बायोजियोग्राफिक थ्योरीज है, राइट, कि जैसे जैसे माउंटेन्स बने या फिर लैंड अपलिफ्टमेंट हुआ तो प्लांट्स कैसे चेंज हुए, उनका इकोलॉजी कैसे बदला, है ना? तो फिर लेट्स से इन केस ऑफ हिमालयन अपलिफ्टमेंट जब हुआ तो उससे बहुत सारे और स्पीशीज को क्या इफेक्ट हुआ, तो वो सब चीजें हम लोग उसमें ज्योग्राफी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसको यूज करते हैं. एंड देन कमिंग टू फिजिक्स, right? Physics तो हमारे आसपास है. Even when I'm talking, I also require laws of physics, right? So in case of ecology, now people are asking questions like flying के बारे में तो पता ही है, चिड़िया fly कैसे करती है, right? Wings flap करती है. But then there are gliding lizards, gliding squirrels. So वो कैसे लोकोमोशन उनका कैसे होता है कि how do they decide कि कहाँ से perch होना है, कहाँ से वो glide करे कि वो अपने destination पे पहुंचे, right? तो वो एक angle calculation the insect is the organism is doing on its own. तो ये सब एक बेसिक टाइप के क्वेश्चंस है जो सब इकोलॉजी से ओरिजिनेट होते हैं, सब बिहेवियर से ओरिजिनेट होते हैं, बट देन उनको टूल्स बहुत सारे डिफरेंट एरिया से चाहिए. सो आज आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन जो मैं लेने वाली हूँ वो है वेरी बेसिक क्वेश्चन कि हाउ डू यू टेल स्पीशीज अपार्ट. ठीक है, आप अपने आसपास देखते हो, एक पेड़, 2 पेड़, 4 पेड़, हाउ डू यू टेल कि वो अलग है कि नहीं है, राइट? तो that's a very basic question in botany or zoology. तो एक जो उसमें प्रॉब्लम होता है वो होता है स्पेशली जैसे बहुत डिफरेंट लुकिंग है तो देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट देन व्हेन दे आर वेरी सिमिलर लुकिंग दे मेक अ स्पीशीज कॉम्प्लेक्स. सो स्पीशीज कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि द कंटिन्यूम ऑफ ट्रेट्स व्हाट यू सी हियर ऑन द स्क्रीन, राइट, द लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट फ्लावर्स लुक वेरी डिफरेंट. तो आप उनको पता चल रहा है वो जब आप 2 फ्लावर्स को देख रहे हो कि वो 2 अलग स्पीशीज है, बट देन वो जो बीच में जो रेंज है where does that go?
क्या वो लेफ्ट साइड की स्पीशीज है कि राइट साइड की स्पीशीज है. सो ये इस टाइप के जो स्पीशीज कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है. एंड हाउ डू दे ओरिजिनेट? वो टेक्सोनमिक इश्यूज की वजह से हो सकते हैं कि किसी टेक्सोनमी ने जब जंगल गया तो उसने देखा कि वो ये बीच वाला जो लेट्स से दिस फ्लावर, तो बीच वाले फ्लावर को लिया, इट लुक वेरी डिफरेंट, तो उसने उसको नया स्पीशीज प्रपोज कर दिया. बट देन ही डिडंट लुक एट ऑल द अदर कंटिन्यूम, राइट? एंड दिस काइंड ऑफ कंटिन्यूम कैन आल्सो अराइज बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. तो इस टाइप के स्पीशीज कॉम्प्लेक्सेस आपको एनिमल सिस्टम में भी मिलेंगे और प्लांट सिस्टम में भी मिलेंगे. So why is it important to resolve these species complexes? So it is important क्योंकि आप जब species diversity assessment करते हो, then you need to know कि कितने species थे, right? तो अगर मैं दो end वाले species को ही अलग species बोलूँगी तो then we will say कि there are two different species. But then if I start like telling कि every single individual is a different species, तो इतने सारे species हो जाएंगे, तो diversity बहुत high हो जाएगा, which is not correct. Right? So and let's say ecological studies है, तो ecological studies के लिए भी मुझे पता होना चाहिए. If I want to say कि ये species इस तरीके से behave करता है, then I need to know what am I calling a species. वो species है क्या, right? तो अभी I'm going to only talk about the morphology, क्योंकि morphology हम सबसे पहले देखते हैं. मैं अगर बोलूँ कि needle like leaf है, तो आपको सीधे पता चल जाएगा I'm talking about some conifer, right? क्योंकि हमको वो दिखता है. Nobody is going to go do the genetic analysis की देखने के लिए कि वो conifer है कि नहीं है. तो इसलिए my today's rest of the talk is going to be only on morphology. But the technique that I'm going to talk about, वो हम morphology को genetic data के साथ भी combine कर सकते हैं, floral fragrance data के साथ जो उनके VOCs है, volatile compounds, उनके साथ भी combine कर सकते हैं. So the technique is very versatile. So I'm going to talk about two species complexes. Here in the pink bracket, you can see coronarium complex and spicatum complex. हमने वहाँ पर उनके लिए we measured multiple morphological traits, and सबसे पहले हमने like what we usually do PC analysis किया, and then PC analysis में हमने देखा कि वहाँ पर there's some overlap. coronarium complex जो है ठीक से resolve नहीं हो रहा था. Then we thought okay, let's do NMDS. क्या पता NMDS में we are able to do it. And then yes, in NMDS में हम लोग उसको resolve कर पा रहे थे. Morphologically we could tell कि कौन-कौन से different clusters कैसे बन रहे हैं. But the main problem with these two methods or statistical methods is कि उसमें हम लोगों को हर एक क्लस्टर का कैरेक्टराइजेशन नहीं मिल रहा है. एंड प्लस जो भी कलरिंग किया हुआ है ना, इट्स अ ह्यूमन बायस. मैं बोल रही हूँ कि वो येलो डॉट हैज टू बी दिस पर्टिकुलर स्पीशीज. It's not unsupervised learning. So although PCA and NMDS both are unsupervised method, but then हम उसको biology में उसको unsupervised way में use नहीं करते. So we propose this new method, spectral clustering. So spectral clustering computer science वाले बहुत use करते हैं, but ecology में हमने उसको पहली बार use किया है. And so I'm not going to go into the detail of how this clustering is done. अगर आप लोगों में से किसी को भी interest है, especially students or faculties, we can discuss in details later on. But the overall idea is कि हम लोग classification नहीं कर रहे हैं, हम लोग clustering कर रहे हैं. And clustering, because clustering में आप उसको एक identity नहीं देते हो, and you allow this program to tell you what the ID or the clustering of each individual needs to be. तो K-means clustering सबसे common. How is that different from spectral clustering? जब हम K-means clustering करते हैं, so we are basically drawing circles, multiple circles जितने cluster चाहिए. But then फिर उसमें आपका ना pattern lose हो जाता है. So let's say like I'm just showing you here. So if I show you like this, तो आपको लगेगा कि it's a one single cluster, right? It's a viewpoint. But then if I rotate it, you are seeing different clusters. है ना? तो spectral clustering allows you to have that kind of arbitrary detection in your data shape. That's why it's very workable. And इसमें क्या है कि जो overall workflow है, we collect the morphological data or any other data that you have for different species, and you need to have multiple individuals for each species. आप उसको clustering में डालो. Then there are two parameters which is basically gamma and this K, that is the number of clusters आपको कितने चाहिए. You vary gamma, which is tuning parameter. For every gamma आपको एक अलग-अलग clusters आएंगे. And then फिर उसके बाद आप उसको validate भी करते हो, because as an biologist, I also want to know कि whatever the computer is giving me, is it making sense to me as a taxonomist? Because at least as a taxonomist, I have some confidence in some of the IDs, right? जैसे मैं आपको पहले दिखा रही थी जो दो flowers थे,
that I know for sure are 2 different species. तो उसका जो validation है वो हमने किया, and then we also perform some feature analysis जहाँ पर हम लोग एक क्लस्टर में कौन सा ट्रेट है जो उसको डिफरेंट करता है वो हमने फिगर आउट करा. तो अब कैसे हम गामा और क्लस्टर्स को चूज करें, राइट, कि हाउ डू वी नो वेदर देयर आर 4 स्पीशीज इन द कॉम्प्लेक्स और 10 स्पीशीज इन द कॉम्प्लेक्स. तो उसके लिए वी यूज समथिंग कॉल्ड आइगन गैप प्लॉट. तो आइगन गैप प्लॉट क्या है कि वो आपको क्लस्टर का कोहेसिविटी देखता है, यानी कि एक क्लस्टर से अगर आप पॉइंट्स निकालो तो उसमें बहुत सारा चेंज होगा, तो यानी कि वो क्लस्टर बहुत ही ज्यादा कोहेसिव है. ठीक है, सो वेरेवर यू सी द पीक्स इज वेयर वी, यहाँ पे एरो से जो देख रहा है, जो पीक्स आ रहे हैं वो पीक्स जो है वो आपका मोस्ट स्टेबल क्लस्टर्स को दिखाते हैं. बट देन देयर आर मल्टीपल गामा वैल्यूज व्हाट यू सी हियर, राइट, डिफरेंट कलर लाइंस. तो उसमें से यू हैव टू चूज कौन सा गामा वैल्यू वर्क्स फॉर यू. So what when we went through it, so 0.35 and 0.45, they gave us similar kind of results. So we take one of the gamma values and then वहाँ पर हमने देखा कि अच्छा 5, 9 और 12 clusters जो हैं वो कैसे दिख रहे हैं, whether they make biological sense or not. And फिर उसमें यहाँ पर सब जो है machine learning part सब हो चुका है. So now you need biological expertise, and that's why this kind of collaborative work is very important. क्योंकि अगर ऐसा काम सिर्फ ecologist करता है, then it becomes difficult कि यार जो whether it is mathematically sound or not. But then अगर सिर्फ एक computer science वाला student करता है, then it becomes difficult कि यार species को कैसे ID करें, right? Whether which clusters to choose from. So that's why it has to have a collaborative approach. कि दोनों को एक दूसरे से सुन के we have to figure out what works for us. And then, so what we figured कि हमारे for our species 9 clusters were the best number of clusters. And then now within these clusters, we did the cluster characterization. तो जिसमें अगर मैं बोलूँ कि ये जैसे पिंक कलर का क्लस्टर है, आई एम इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग कि पिंक कलर का क्लस्टर रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर वालों से कैसे डिफरेंट है, राइट. सो उसके लिए हमने जो यहाँ पर टेस्ट किया है, व्हाट यू सी ऑन द अदर साइड, कि पिंक कलर के क्लस्टर की साइड में ऊपर में सारी मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स लिखे हुए हैं. Wherever you see the color, जितना डार्क है यानी कि उस ट्रेट का इम्पैक्ट उतना ज्यादा है. सो लेट्स से फॉर द पिंक कलर, नेक्टरी रेशो, नेक्टरी लेंथ वर्सेस विड्थ रेशो, लेबलम रेशो, क्योंकि हिडिकियम में जो फ्लावर का विजिबल पार्ट होता है उसके लिए ये यूज होता है, सॉरी उसे लेबलम कहते हैं. एंड फिर नाउ कम्स वैलिडेशन पार्ट. ठीक है, तो हमको कैरेक्टराइजेशन करना आ गया उससे, अब हम करेंगे वैलिडेशन. तो उसके लिए वी लुक एट NMI स्कोर एंड रैंक स्कोर, सो विच बेसिकली लुक्स एट कि जो हर एक पॉइंट को जो हमने जो मशीन लर्निंग ने उसको आईडी दिया है वर्सेस जो एज अ टेक्सोनोमिस्ट हमने आईडी दिया है, उनके बीच में कितना रिलेशन है. सो 75% ऑफ आवर डेटा वाज collaborating with whatever we knew, so we see this as a positive sign. So to summarize all these steps, so firstly we have to look for how many clusters are there. The program is going to help us spectral clustering say. Once we know what the number of clusters are, then we basically look at the composition of the clusters, ki how different clusters, कौन कौन सी species कौन से cluster में जा रही हैं. And then third is once we know कि ये clusters हैं, फिर उसके बाद हम उसका feature selection करते हैं कि ये species और ये individuals दूसरे individual से इसलिए different है because of these traits, these measurements या जो भी हम use कर रहे हैं. So इस टाइप का काम जो है, so this is basically just a summary, you don't have to worry about all is written there, so just look at the first column. तो ये सारे जो first column है, these are different fields of biology, right, जो हम लोग use करते हैं. phenology हो गया, whether they are fertile or not, breeding ecology हो गया, volatiles यानी हम chemistry को भी use कर रहे हैं, morphology को भी, genetic data को भी, उसको use करके we figure out कि कौन से species जो हैं they are different species delimiting station के लिए use करते हैं. And then this is the present state. अगर आप taxonomy में हो and you want to say what is the new species, then you need to be able to do all these things and then put it all together, and then that's when it gets accepted as a paper. And even if the paper doesn't require you to do all these things, as an ecologist I would say कि ecological studies and all these studies are very important, ताकि आपका जो species जो आपने ID करा है, जो आपने propose कर रहे हो as a new species, it remains a new species for a very long time.
ऐसा ना हो कि आज हमने न्यूज़ पीरियड किया एंड देन कल को बोल दिया कि नहीं तो ये volatiles ऐसे थे and then they merge it with something else, right? So I would like to acknowledge Dr. Vinita Gowda and many other organizations who has helped fund this project, and thank you. I think. Yes. Thank you, ma'am. Priti Sadyan. Any questions from the audience, please? That's fine. अभी अभी तो नहीं अभी but then there are many species जो This insightful thoughts in sustainable development for the culture of area and caring capacity of area is very important. The focus on cultural development is integrated part of area. Planning should be concerned with that local area. But keynote speaker was Dr. Uttam Lal, Associate Professor, Department of Geography, University of Bangalore. His topic was on custodian of clouds. He covered important points, dissecting of role of culture in the Himalayas, sustainability, climate strategy in cultural practices. Local geography is very important. Cloud carries memories of community and victims of disaster. He focused all on. Importance of size is very important according to him. For 13 quicker war, Irana Dvalilova, Moscow, Russia, her insightful views regarding
fitness and well-being of Reckong people. She inspired all of us बड़ी about देर से मेरे को fitness and नहीं पता natural. Yeah, she is tough on available in mountains. She focuses on our all seasons. She focuses there all our seasons like summer, autumn, winter, and all are very important for us. Seasons act like momentum. Russian people are fortunate by nature, so they are very strong, healthy by physically and mentally. Following participants has presented their papers with their objectives. First one was Pramiti Negi, who focus on jet tails. She stressed on including folklore, folk songs, art for Himalayan, for flora and fauna, etc. She stressed on moral courage. 516 Second one is Dr. Stuti Saral, focused on integration in ecological research, chemistry, physics, maths, geography, history, economics regarding upliftment of landscapes and different species complexes all are result of integration of ecological relationship of our morphology of Earth. You also focus on spectral clustering with character analysis. At last, not least, best wishes to organizer, and thank you so much. Thank you for person, co-chairperson of the first section, Dr. Smita Negi, for your report on the first session. You concluded the session effectively. Now we are going to begin with the technical session one, and I announce with great pleasure Dr. K.K. Negi, Vishnu Kumar Negi, Assistant Professor of Commerce. Our coordinator person, so you are welcome as the additional person of technical session one, and co-chairperson is Professor Reckong, Assistant Professor of Commerce from Government College of Fukushima, and consultant is Professor Angela. So, sir, I request you to please take charge of your meeting. First, online. offline now technical session start. And College for City Mother, District Shimla. The topic of our deliberation is the green path forward, navigating climate challenges with sustainable solutions. Professor Shefali Dhanda, you are welcome and invited to deliberate upon the topic, please. So much, sir. मनीषा चंदेल है तो मनीषा चंदेल है है ही नहीं ये आ सर क्या मेरी आवाज ऑडिबल है? कौन है Sir, am I audible? yes Sir, I'll be sharing my screen now.
Very good afternoon to Dr. Mahendra Singh, Honorable VC, Himachal Pradesh University, the principal and esteemed faculty members of Thakur Sain Negi Government College, and all the delegates from across the world. It is an opportunity for me to present my topic here on this platform of an international conference. My name is Shafali Thanta. I am assistant professor from the Department of Botany from Lal Bahadur Shastri Government Degree College, Saraswati Nagar. The topic of my presentation is the green path forward, navigating climate challenges with sustainable solutions. The climate change is an accelerating crisis which is affecting ecosystems, economies, and communities all over the world. So through this presentation, I'll be emphasizing on the green path forward. Basically, it symbolifies the hopefulness or the proactiveness where we as a society need to come together and adopt sustainable solutions to combat climate challenges. The climate crisis of the 21st century is basically the climate change, which is the shift in the climatic patterns caused by the greenhouse gas emission, which can be natural, which can be anthropogenic. But in today's world, it's dominated by anthropogenic activities such as burning of the fossil fuels. The automobiles that we use, the industries are running actually on fossil fuels. And deforestation, there is large-scale clearing up of the forest to generate more and more space for urbanization. Industrial processes, a large number of industrial processes are dependent upon renewable sources of energy, such as coal and petroleum, on the non-renewable sources. And urbanization, there is extension of the urbanized areas into forest areas, wetlands, and traditional or conventional agricultural practices. So all of these processes are releasing a large amount of greenhouse gases such as carbon dioxide and methane into the atmosphere. So the result of this is that there is increase in the global temperature. There has been the highest temperature that has been recorded has been in the recent decades. So there is rise in the global temperature, then the polar ice caps or the glaciers are melting at an alarming rate. This is increasing the level of sea water, and because of which majority of the coastal areas, especially islands, are at the risk of sinking. And at the same time, there is loss of biodiversity, large-scale loss of biodiversity. So these are some of the causes and effects of our high dependence on these sources of energy such as coal and petroleum. So basically, climate change is mainly driven by the anthropogenic activities. Now, digging deeper into the impact of climate change, we see that there is a lot of human and economic loss. See, according to the data which has been provided by the government of India, we see that from 2015 to 2024 alone, 32 million people have been displaced in India. So that is the level of displacement that people are facing because of climate change. We've all heard about the Dharali flash floods in Uttarkashi recently, the Joshimath land subsidence, and the major slides that are happening in Himachal Pradesh. So these are the major causes of migration or the displacement of population. At the same time, then there is loss of infrastructure. There is the loss of infrastructure can be in terms of the roads, the national highways, the public places, even the private homes. So that is how we are facing human and economic loss. Environmental degradation, large amount of area is turning into deserts. So there is large-scale desertification, then coral bleaching is also evident, and biodiversity losses. Economic consequences, if we see that the food production is also being hampered, and the transport of that food to the their supply chains are also being affected. Food comes with a short lifespan. So the food material, all the kind of foods are also not reaching the marketplaces of the consumers on time because the climate change is a big hindrance here again.
weather extremes, torrential rain, something which we are experiencing in current month as well, flash floods, heat waves, these are very, very common these days. So the rise of sustainability. Now, sustainability is no longer an academic term. It's the present necessity. Why do I say so? Because sustainability and ecological balance will go hand in hand. There is no way out. Sustainability is, as I've mentioned here, it refers to our ability to limit our needs in a way that we enjoy these resources and we leave sufficient for the upcoming generations. And the environmental sustainability and ecological balance will always go hand in hand. It is very important for the critical health of our planet. And it's just in recent years that sustainability or sustainable development goals, they are the need of the hour. Why is it today that we need them more than ever? See, firstly, because our planet is under pressure. Forests are vanishing, oceans are warming up, species are being extinct at an alarming rate, air and water is being polluted. So I think all of these are the signals which are telling us that the planet is under pressure and it's high time to switch over to sustainable sources. Then climate risk is also business risk. Our economies throughout the world are being threatened. Resource scarcity is increasing at an alarming rate. So these are the reasons we say that if the climate alters, so will be our business models and it affect the business considerably. And lastly, it's our shared responsibility. No one individual or one agency or one government can undo the damage that has happened. So sustainability is a concept which it's in itself a shared concept. In this, participation of individuals from across the world is mandatory, otherwise it won't be a success. Now, climate mitigation strategies. Now, as I've mentioned that we need to go ahead with a green path. So what is that green path? Switching to the low carbon energy systems, installation of solar panels or wind turbines. So it's very important that we switch from non-renewable sources of energy towards renewable sources of energy. Sustainable land use. The land should be used in a sustainable manner. There should be terraced farming, reforestation, afforestation should be encouraged, and green landscaping. These are required for the sustainable land use. And resilient infrastructure. We cannot predict the weather conditions, but we know that these weather conditions are going to be a common phenomenon. So we can at least build our infrastructure which is resilient. Like I'll take up an example from Bangladesh. They have recently built elevated homes in flood-prone areas, which has actually helped them in mitigating the flood conditions. Similarly, in Rotterdam, climate resilient cities have been built. They have the storm surge barriers which close whenever the sea level rise above the normal criteria. And adoption of hydrogen as clean energy. Hydrogen should be adopted as a source of clean energy. Why do I say so? Because it's clean and a versatile source of energy. There is zero carbon emission when we switch on to hydrogen, and the only byproduct that it leaves is water vapor. So hydrogen-powered public transport should be promoted. And in the coming years, if private automobiles will also be switching over to hydrogen as a source of energy, then we should, with open hands, accept this as a step towards sustainability. Now, what is the importance of policy innovation? See, different countries have come up with different kind of innovations which are sustainable, and taking up case studies from different countries, let me introduce to you the concept of Denmark. See, in Denmark, wind energy is harvested or is harnessed. Excess of the onshore of the offshore wind energy is used for the production of hydrogen gas. And I told you that hydrogen is a very clean source of energy, no carbon footprint, no carbon dioxide emission, and only water vapor as the byproduct. So hydrogen can be a very, very sustainable source of energy for the upcoming generations. So they're extensively using wind energy to generate another sort of a renewable energy, that is hydrogen.
In India itself, we have the solar mission, in which we have installed solar panels in many states, and our mission is to produce around 100 gigawatts of this solar energy. Because in India also we lie in the tropical belt, and there are many areas which which have the potential to harvest the solar energy. So this is again that renewable source of energy which we can tap effectively in the coming times. Netherlands. In Netherlands, we see a state-of-art resilient infrastructure. Here, there are long-term strategies have already been implemented to reduce carbon dioxide, and there are storm surge barriers which have been installed, which automatically closes whenever the level of water goes dangerously high. And at the same time, they have water squares installed in their major cities. So these water squares, what do? They are the basins for heavy rainfall. Whenever there's heavy rainfall, these basins will fill first, and then there are no chances for the city to get flood. And floating architecture. They promote a lot of floating architecture near the shores, wherever they feel that because of the rise in the temperature, glaciers are melting and the sea level is rising. So in the upcoming years, there are chances that some part of the city might sink. So they're already promoting the concept of floating architecture in these areas. Finally, I'm coming to the path forward, where I'll emphasize again that the only path, or the green path, is the sustainable path. And sustainability can only be attained when there are investments in greener technology and in the cross-sectorial collaboration and governance. All the governments across the world, all the societies, units have to come together to pave... Ma'am, please try to conclude. Sorry, sir. Ma'am, please आप conclude करेंगे. We are running short of time. Sure, sir. Just a minute, sir. So the green path is the sustainable path. So I'll end by saying that we have an urgency for transformative actions, and it's everybody's role, governments, industries, individuals, to come together and to lead towards a green, sustainable path. Thank you so much, sir. Thank you. Are you hearing that? एक बार बोलो सर. आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे.
is not connected. He has not joined. So we are now next invite the Miss Shah Kumari, Assistant Professor of Public Administration, Lal Bahadur Shastri, Government College, Saraswati Nagar, District Shimla, to deliberate upon a topic learning from tribes, simple ways to live sustainability. Hello, thank you so much, sir. Am I audible, sir? Yes, ma'am. Please continue. Okay, sir. I'll share my screen. Good afternoon, everyone. Respected Vice Chancellor of Himachal Pradesh University, Principal Government College Reckong, and other esteemed dignitaries. My name is Diksha Chauhan, and I'm an Assistant Professor of Public Administration at Lal Bahadur Shastri Government College, Saraswati Nagar. So my topic for today's conference is Learning from Tribes, Simple Way to Live Sustainably. So let's start with the introduction. Today, the world faces many environmental problems such as pollution, deforestation, and climate change, which are increasing day by day. And in our modern life, we are focusing on the fast consumption of the resources, and which leads to more waste and harm to nature. However, the tribal communities live sustainably by using their traditional practices, and the research paper explores how we can learn from their way of life to solve today's sustainability challenges. So there are many traditional practices which are using by the tribal communities to live sustainably. I will be talking about the major one. First is organic farming. The tribal communities are not using so much of chemical fertilizers or pesticides because they want to avoid the synthetic chemicals and protect their soil. They also rely on the traditional knowledge which is passed through the generation to generation. And the tribal communities are using compost and natural pest control by decomposing the plant leaves, animal manure, especially the cow's dung, crop residue, and forest litter. They are also using plant-based sprays to keep their soil healthy and prevents from pollution. The other traditional practice, the important practice is forest conservation. The tribal communities live in harmony with the forest. क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए फॉरेस्ट कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी फॉरेस्ट पर डिपेंड करती है, जंगलों पर डिपेंड करती है फॉर देयर फूड, देयर फायरवुड, मेडिसिन, fruits, and many other things. They are also their daily life is connected to the natural cycle of forest. For example, the animal migration. समर से विंटर में वो एनिमल को माइग्रेट करते हैं जंगलों की तरफ, एंड विंटर से वो नीचे की तरफ आते हैं. So totally their life is connected to the natural cycle of the forest, and that is why they try to avoid the unnecessary cutting of the trees. And this prevents deforestation and keeping the forest healthy. And the tribal community also understand the importance of forest for the upcoming generation also. The next traditional practice, important practice is the cultural value. The stories, rituals, and customs in tribal societies emphasizes the importance of living in balance with nature. कई तरह के ऐसे पवित्र उपवन होते हैं, पवित्र जगहें होती है, बाग होती है जिन्हें वो स्पिरिचुअली मानते हैं तथा उनकी कटिंग नहीं करते हैं. हिमाचल में ऐसे बहुत सारे देव वन है जिन्हें हम सेक्रेड ग्रोव की वजह से क्या है उन्हें प्रिजर्व किया जा रहा है और आगे आने वाली जनरेशन उनको यूज कर सकती है. एंड इट ensure long term caring for the environment. So besides all these traditional practices, there are some major challenges which are facing by the tribal communities. जैसे कि loss of land due to the deforestation and industrial projects,
देयर आर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लगते हैं, डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो प्रॉपर अपनी एंसेस्ट्रल लैंड को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से जो भी डिजास्टर हो रहा है, आपदा जो आज की डेट में हम फेस कर रहे हैं, स्पेशली इन ट्राइबल एरियाज, तो ये भी बहुत सारे चैलेंजेस है जो फेस करने पड़ रहे हैं हम लोगों को। एंड द अदर रीजन इज कल्चरल इरोजन एज मॉडर्न लाइफ स्प्रेड। डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर, पीपल आर मूविंग फ्रॉम द विलेजेस टुवर्ड्स सिटी लाइफ for the modern technology and urban lifestyle, and this leads to a gradual loss of their unique culture, language and environmental wisdom. So this is the conclusion of my whole study, that tribal communities offer simple and effective ways to live sustainably by adopting their practice of organic farming, forest conservation, using natural material, and respecting nature. We can reduce waste and environmental harm. Understanding their culture helps us rethink how we interact with the environment, and we can learn from tribes for the better future. So this is all about my presentation. Thank you so much. Professor Shah Mohammed said, Hello, sir. Am I audible? Hello, am I audible, sir? Hello? 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 Am I audible, sir? विशाल जी, Hello? यू आर ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है ना? प्लीज, सॉरी, थैंक यू। विशाल सर प्लीज आप शुरू कीजिए। Okay, so good afternoon, everyone. My name is Vishal Rangta, and today I am going to present my views on preserving cultural identity, proverbs as repositories of folk wisdom in Shimla district of Himachal Pradesh. Oral traditions are one of the most enduring modes of cultural expression. They ensure that values, beliefs, and practices are created, preserved, and transmitted across generations. Among these traditions, proverbs occupy a special place. They may be brief, but they are condensed philosophies, carrying centuries of communal wisdom in memorable and reproducible forms. In Shimla district of Himachal Pradesh, where oral traditions still thrive even amid rapid modernization, proverbs perform a dual role. On one level, they are practical tools in everyday life, guiding, correcting, or even resolving disputes. On another level, they are symbolic reminders of identity, embedding ecological knowledge, agricultural imagery, kinship values, and moral lessons into a shaped cultural framework. So I have chosen four proverbs for this paper, which some proverbs will give us. One is one exemplifies the pragmatic guidance. The second one exemplifies the instructive role that the proverbs perform, and the third proverb that I have chosen as an example for this paper, it proves that proverb acts as social regulators. And the fourth proverb which I have used in this paper
proves that ecological wisdom is also embedded in our proverbs. So I'm just take for instance a proverb from Jubbal Tehsil. Mushedu or lagdo tabolad ke chhar. So if the mouse could pull the plow, why would we keep the ox? At one level, this is pragmatic guidance used when someone makes an unrealistic suggestion. It reminds us that certain tasks require proper means and effort. But at another level, it encodes the agrarian worldview of the community. The plow and ox are not just farming tools, they are emblems of subsistence, labor, and identity. Only those rooted in this landscape immediately grasp its layered meaning. Proverb also acts as indirect teachers. When elders say, "Chordu bera godo nai mildo," uh, a horse cannot be found at the time of riding. Or the second variant of this proverb is that "Chordu bera godo ke himila," who can find the horse at the time of riding? They are not merely describing a situation, but instilling foresight. Such sayings discipline children gently without open criticism, teaching preparedness and responsibility and foresightedness. In community disputes too, proverbs serve as instruments of social regulation. For example, "Apri shahi ke koi na bol do khato." No one claims their buttermilk to be sour. Captures human bias, our tendency to defend our own side. This proverb points to a common human tendency. Individuals rarely admit faults in their own possessions, actions, or decisions. Just as no one would call their own buttermilk sour, people naturally defend their interests and avoid acknowledging shortcomings. This observation becomes highly relevant in situations of conflict or dispute within a community. When disagreements arise, whether over property, resources, or personal conduct, each party is likely to justify their own position and deny any weakness. By invoking this proverb, elders and mediators remind disputants that such partiality is natural but must be recognized and checked. The saying works as a social regulator. It exposes the bias inherent in self defense, cautions participants not to take their own claims as unquestionable truth, and encourages them to consider matters more objectively. Its authority lies in being a shared piece of communal wisdom. Since everyone knows the proverb, no one can refute its point. Himachali proverbs also carry ecological wisdom. They reflect an intimate knowledge of weather patterns, farming cycles, and the behavior of animals. Knowledge crucial for survival in the Himalayan terrain. One proverb like "Jatra de Theude, Shaunaro Bolad, Gora Kinayan Natsai." Never bring home a woman from the Jatra, because a woman will come to Jatra festival um, mm, uh, by grooming herself artificially. And an ox should never be brought in the month of Shravan, because in the month of Shravan, an ox will be very healthy. It cautions against being deceived by surface appearances, whether of people or livestock, reminding us that lasting values lies beyond temporary beauty or strength. To conclude, preserving and revitalizing such oral traditions is not only essential for maintaining cultural identity, but also for bringing indigenous perspectives into global conversations on culture, sustainability, and community life. Proverbs, in their brevity, carry the weight of centuries, ensuring that the wisdom of the hills continues to guide future generations. Thank you. Thank you very much.
I think I'm done with my presentation. Thank you, sir. Okay. Next, it is our privilege to invite Dr. Shalu, Assistant Professor of Chemistry, Government Degree College, LBS, Saraswati Nagar, and शांता जी को बोलिए अपना बंद करें. I request Professor Vishal Bhanta, Assistant Professor of English, to please close this microphone. Thank you, sir. Okay, next. अब बोलो बोलो. Next, I invite Dr. Shalu, Assistant Professor, Government Degree College, LBS. अब बोलो. Sorry for the interruption. Next, I invite Dr. Shalu, Assistant Professor, Chemistry, Government Degree College, LBS, Saraswati Nagar, and her title is From Orchards to Algorithms, Travel Partners, Sustainable Prosperity in Urban Market. Dr. Shalu, Assistant Professor, Government Degree College, LBS, Saraswati Nagar. Unmute your microphone. I hope I'm audible. Professor Divya Rana, Assistant Professor, Sri Sai University, Palakkad. You can hear, ma'am. I invite you. आगे आगे आगे. Okay, next. Ma'am, please say something. Next, I invite Dr. Krishan Nag, Assistant Professor, NSCBM, Government College, Hamirpur, and his title is Status of
Ikhtar Konul, Conservation in Himachal Pradesh Issues and Measures. Dr. Krishan Lal, Assistant Professor, Zoology, NS CBM, Government College, Hamirpur. बोल रहा उनको बोल रहे हैं हम यहाँ से तो बोल रहे हैं I request Dr. Krishan Lal to please unmute his microphone, please, sir. हाँ सर ये मैसेज इधर यहाँ तो मैसेज डॉक्टर कृष्ण पिछले बैटरी कितना है बैटरी कितना है आपकी अभी तक आया नहीं सर कोई भी नहीं प्रेजेंट खाना खाने गया आ नहीं रहे Next I invite Dr. Sanjit Singh Thakur, Assistant Professor Chemistry, Government College, Hamirpur. And his title is Holistic Perspectives in Lifestyle Sciences, Health, Environment and Society. संजीत ठाकुर Hello, sir. Am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes. Are you getting my screen on share? Can you see my PPT? Can you see my presentation? Yes, sir. Yes, sir. So shall I start? Yes. Yeah. So very good afternoon to everyone. Today I am speaking on holistic perspectives in lifestyle sciences, health, environment, and society. First of all, I wanted to thank you, the team of Reckong College, who are organizing this international conference on community culture and conservation with respect to tribal pathway to sustainable prosperity. So I am going to start my presentation on, the lifestyle sciences, which directly or indirectly affects the health, environment, and society. So here is my outline of the presentation. First of all, I wanted to show introduction, the concept of lifestyle and how it does affect health, lifestyle with respect to environment, lifestyle with respect to society, and how we can manage stress and time management, current perspectives on lifestyle, health issues, challenges, way forward, and conclusion. So in introduction part, lifestyle sciences is nothing but the study of human behaviors, habits, and patterns. Its holistic view leads to the integration of health, environment, and society. Why it is relevant? Since because rising non-communicable diseases, uh, disturbance in climate changes and social inequalities. Its aim is to explore interconnection between perspectives for sustainable well-being. Now, the concept of lifestyle, since daily practices are related to diet,
activity, mode of taking rest, and social interactions. Because human beings are social animals, lifestyle is an intersection of personal choices, environment, and society. It is not only about individual health, but it also affects ecology and society. So therefore, it is also about ecological and sociological balances. Lifestyle can be affected by health. Lifestyle affects our health also. For example, balanced nutrition, physical activity, mental wellness, they're also part of lifestyle. Prevention of lifestyle related diseases can keep us fit. The importance of stress and time management. Stress and time management is very important in individual's life. Therefore, lifestyle is too affected by stress and time. Holistic health means physical well-being, mental well-being, and social well-being. Lifestyle with respect to environment. Since human choices affect everyone, so we too affect ecological systems. For example, our diet can affect sustainable food systems. Our extraordinary transportations can affect carbon, can increase the carbon emissions in the environment. And what we do every day, wastage, it affects whole of the environment. Pollution and biodiversity loss can be there. So in in terms planetary health perspective, human well-being tied to Earth, our blue planet's health. Lifestyle impact society also, since we are shaped by culture, economy, education, and policies. Social determinants of health are income, gender, inequalities. Community network and tradition influences our lifestyles. So there is need for equity and inclusivity in lifestyle opportunities. So lifestyle always it leads to bad lifestyle leads to stressed beings and bad time managers. So healthy lifestyle helps us to reduce our stress by doing exercise, good sleep, and mindfulness. And eco-conscious choices like cycling, minimalism reduce time and stress. Social support network buffer our stress and improve resilience. Now the current perspective on this lifestyle related activities, it shifts from individualistic to system thinking. We cannot say ki, we are individually, we cannot impact much, but since we are part of the society, so it eventually it leads to the systems. Integration of health, sustainability, and equity are very important for creating good lifestyle. Linked to United Nations Sustainable Development Goals is another very good perspective. Multi-sectoral approach. We should have multi-sectoral approach. For example, with respect to healthcare, environment, and policy makers. So the challenges before us are, since lifestyle diseases rising globally. For example, bad lifestyle leads to diabetic people and yes sir. And संजीत आपकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो है ना सब आगे में क्या आपने उसको मैम इधर तो मूव कर रहा है चलो सब ठीक है स्लाइड शो के लिए but I'm changing the slide because I'm already on 10th slide. So the challenges before us are lifestyle diseases rising globally, environmental degradation and climate change, socioeconomic inequalities, limiting healthy choices. There is a need for integrated policy and community engagement. So the way forward for this lifestyle related activities are to, we have to promote preventive health practices. We have to nurture sustainable consumption and production. We have to strengthen community and policy frameworks, and we have to encourage responsible digital lifestyles. We have to focus on equity and inclusion as well. So, in conclusion, lifestyle is a bridge between health, environment, and society. Its holistic perspective promotes personal, planetary, and collective well-being, and its uh, eventually sustainable lifestyles ensures resilience for the future generations. So, thank you very much. Question.
हेल्थ एनवायरनमेंट और इसको आपने क्लब किया है टुगेदर। तो आपके टिप्स क्या है, तीन चार बातें अगर आप हमें बताना चाहें अबाउट दिस पेपर और रिसर्च, व्हाट यू वांट टू कन्वे अबाउट हेल्थ and environment and lifestyle, whatever you are saying, because we are not seeing your presentation. Ma'am, तो क्या था आपका? lifestyle, it impacts, health of the individual or the society. It impacts the whole environment. And you must be teaching students together. हमें थोड़ी आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से। मैम इधर तो सिग्नल ठीक है. I was changing the slides, but I don't know how it is that you are telling me that slides were not changing. Hello, am I audible? करना चाहते हो, one important thing. Dr. Saab, you are a very dedicated scholar. I know you personally. And your NAC contribution and your role at Government College Gundarnagar in the NAC application was commendable. And recently you have been blessed with the full baby voice. So many congratulations for that, sir. I know you are a dedicated scholar and you are always engaged in scholarly pursuits. Thank you very much, sir, for your detailed and elaborate presentation. Thank you, sir. Thank you. Can I now invite Dr. Kishan Kumar Negi, the chairperson of technical session 1, to present the concluding remarks, please. Respected Vice Chancellor Sir H.P. Shimla, Professor Mahavir, convener of this 3-day international conference, Dr. Uttam Jan, PS Negi Government Degree College Reckong. The special guest, Dr. Basudhara sir, who is just that principal government college. Chauhan sir, Department of Coordinator, Dr. Janpan sir, the organizing secretaries, the Deputy sir, Shaka sir, and Mani sir, and all the organizing committee members, other faculty members of this college, students, teaching and non-teaching members. First of all, I want to extend my heartfelt thanks to organizing committee for giving me opportunity to chair the first technical session of this 3-day international conference, and this was the first day. In this first technical session, all speakers presented their topics. First was Professor Shifali Thanda, who is Assistant Professor at Botany, Government College, Saraswati, Europe, presented her topic, the green path forward navigating climate changes, sustainable solutions. Highlighted some of the reasons of climate changes, and in conclusion, she suggested some of the measures how can we overcome these challenges. Then next presenter was Diksha Kumari, Assistant Professor Public Administration, Government College, Saraswati. Our topic was renewable lives, simple ways to give sustainability. Again, the topic is related that how we can sustain the current scenario. And the next presenter was. Thank you. Next presenter was Vishal Rangaji, Assistant Professor of English, Government College, Sanjeevani. The topic was preserving cultural identity, proverbs, and responsibility of wisdom in Shimla district of Himachal Pradesh. And the last topic, which was just presented by Dr. Sanjeev Singh Thakur, Assistant Professor of Chemistry, Government College, Hamirpur. The topic was holistic perspective in lifestyle sciences and environment. These were the topics, 4 topics which were presented in first technical session of the day. All the presenters presented their topics very nicely,
and enlightened us with deep understanding of their topics. I'm sure these PhDs will definitely and really work in our future for further understanding and making further research. And then I again want to extend our thanks to for giving me the opportunity to chair this first technical session of the first day of this 3-day international conference. And then I forgot to thank Dr. Hirabhakti ma'am also, who was also chairing with me. She was co-chair of the first technical session of the day. Thank you so much once again. Thank you. Thank you, respected participants of technical session 1, and thank you very much, Dr. J.K. Yogi, for your concluding remarks as a chairperson of technical session 1. Now let's move on to the next session, that is technical session 2. And I feel immensely delighted to announce Charles Sharma, Assistant Professor of Mathematics, Government College, Bangalore, as chairperson, and Professor Ranju Bala, Department of Journalism and Mass Communication, Government College, Bangalore, as co-chairperson. So both are welcome, and I request you to start the proceedings of technical session number 2. May I now invite you on stage online the first super presenter, Resident School Forensic Science, Himachal Pradesh University, Shimla, to deliberate upon a topic forensic approaches to drug abuse, prevention, addressing emerging synthetic opioids, with a focus on Cheetah in Himachal Pradesh. Sir, you are invited on your conference. Yes. Can you hear me? Yes, sir. Good afternoon, sir. Yes. You are busy by points name. Please continue. Good afternoon, everyone. I am Suraj Garg, Research Scholar, Department of Forensic Science, HP University, Shimla. Today, I will be presenting on forensic approaches to drug abuse prevention, addressing emerging synthetic opioids with the focus on Cheetah in Himachal Pradesh. This is the abstract of my review paper. In this review paper, the emergence of synthetic opioids has reshaped global drug abuse patterns, with Cheetah becoming a critical concern in Himachal Pradesh. This study explored the narcotic composition and adulteration and trafficking pattern of Cheetah, which highlighted the forensic challenges posed by its complex composition. And in this review paper, we will access the gaps in toxicological data, forensic infrastructure, and coordination among law enforcement, judiciary, and healthcare system. And by this, we will find the research gaps, and we will discuss about the advances in toxicology and intelligence sharing are discussed to strengthen early detection and integrated response to synthetic opioid abuse. This is the introduction part. Synthetic opioids are the major drug abuse in the worldwide, and in India, Cheetah has emerged as a growing concern. Cheetah is also known as the heroin. Cheetah is a mixture of heroin and synthetic opioids and adulterants and some cutting agents. Himachal is severely affected due to trafficking routes and socio-economic vulnerabilities, and the adolescents and the young adults are the most vulnerable users.
The aim of this study is to investigate the prevalence and the composition and the trafficking patterns and forensic challenges of cheetah in Himachal Pradesh. And the second aim is to evaluate prevention, enforcement, and rehabilitation strategies within the regional context. And the objective of this study is to analyze the various chemical composition and the adulteration practices associated with the cheetah. And the second objective is to study the pattern of trafficking and distribution network in Himachal Pradesh and the routes by which the cheetah is reaching the Himachal Pradesh, and to examine the forensic challenges in detection and toxicological analysis and the casework. And epidemiology and consumption trends. Cheetah has surpassed cannabis as the most common addictive substance among youth in the Himachal Pradesh. And survey data from the various de-addiction centers show opioid dependence widespread among young adults. And the heroin-related offenses arise from 29% to nearly 50% by 2024. And the cheetah use grew sharply over 5 years. Seizures of these drugs is from 2017 is 3.5 kg approx to nearly 15 kg in 2022. Rising seizures reflect both increased prevalence and improved law enforcement vigilance. And these are the graph which showing the recent trends of the heroin-related offenses and the cheetah seizures. And in 2019, the approximate 29% of heroin cases are lodged in the police stations, and 2020, and there is a rise in the cases per year, and the cheetah seizures also increases. And this is the literature review. In this review, we study various research papers, and we find out that there is the need of the various guidelines, and we find there is lack of the technology in the region of Himachal. And from 2017 to 2022, the author, the research paper of NCB Data and Regional Reports, we find research gap from that is the limited detail about the chemical adulterants or trafficking network and weak forensic lab structure. And from 2019 research paper of Rajesh Kumar, we find out that there is lacks of toxicological analysis and prevalence surveys. And from 2020 research papers, we find out that there is a focus on only on pharmaceutical drugs, not on elite mixture like cheetah and the synthetic opioids. And from 2021 research paper, we find out that the state level heterogeneity ignored, and there is little forensic detail on the street mixture. And from 2021 research, we find out that the global or US focus lacks Indian regional trafficking or mixture specific data about the opioids. And from 2022 research paper, we find out that there is not Indian specific or cheetah focused composition data regarding the Indian community. And from 2025 research paper, we find out this was the survey. We find out the research gap about the treatment centers data not community representative and lacks of forensic chemical confirmation. And this is the bar graph of the district wise cheetah cases in Himachal Pradesh. In this bar graph, Shimla is at the top of about 51 cases, and Kinnaur and Lahaul Spiti is about the 0 cases. And this data is taken from the Himachal Pradesh Police Citizen Portal, crime statistics. And now we'll discuss about the chemical composition and adulteration. Cheetah is very dangerous and having the complex composition. Basically, it includes if we will talk about the Punjab sourced heroin, they contain trimethorphan and megaloblastic agents which causing the
fatal drops in platelets. And if we talk about the Delhi sourced heroin, they consist of the paracetamol, dextromethorphan, and these are the less lethal but still highly addictive. If we talk about the Himachal sourced heroin, which one is the low grade street form, but typically containing the diacetyl morphine mixed with caffeine, paracetamol, or other bulking agents. And it consists 40 to 60% non-active material, but it reduces the purity of the heroin, but it heightens the toxicity risk. Various cutting agents are also used for reducing the purity, but that heightens the toxicity risk. The complex and evolving chemistry of chitta demands advanced detection and highly clandestine or homemade mixtures. If we talk about the trafficking pattern and the organized crime in Himachal, the chitta reaches by the famous two organized route, the Golden Triangle and the Golden Crescent. The Golden Triangle is the route through the Madrid, Laos, and Thailand to Delhi, and from Delhi it is further distributed in India, and from the Golden Crescent route, the Afghanistan, Iran, and Pakistan to Punjab, and from Punjab it comes to the Himachal Pradesh. The organized crime groups play a very significant role in this. The distribution model. If we talk about the distribution model, some drug users become the street dealers. In order to finance their addiction, some addicts turn to small-scale dealing, which fosters the networks among youth people. And if we talk about the concealment techniques, to avoid detection, drugs are carried in shoes, pens, cell phone covers, and other commonplace objects. Enforcement is made more difficult by the smaller package and drone-based deliveries. If we talk about the trends in the arrest, Himachal has seen 538 arrests in recent years, including the foreigners. This is the image of the district level chitta hotspots. If we talk about the Punjab, from Punjab region, it comes to Himachal. From Punjab, it's firstly came to Unna, and then Kangra, then Mandi, and then Shimla. And if we talk about the cases, most number of cases is reported in the Shimla, and zero number cases are registered from Lahaul Spiti and Kinnaur. If we talk about the forensic and toxicological challenges, the forensic laboratories faces so many challenges to deal with this, because nowadays the chitta is formed by the complex composition, and the adulteration and metabolite tracing is very difficult due to the lack of the analytical methods and due to the deficiency of the data regarding the complex composition of the opioids. And there is also infrastructure gaps. Like there is no proper guidelines in laboratories. And for prevention strategies, Himachal Pradesh requires a multi-tiered approach. And first of all, we need a community-based awareness campaign, particularly in schools and colleges, that can reduce experimentation among adolescents. And next is the strengthening supply-side controls. It includes the surveillance of the pharmaceutical units and routine audits in the pharmaceutical companies. If we talk about the cross-border intelligence sharing, it helps curb diversion of prescription opioids. And next is the expanding treatment infrastructure. There are so many de-addiction centers, and opioid substitution therapy is needed, and integrating them with the primary health services improves accessibility for the users. If next we will talk about the training law enforcement and forensic personnel in emerging opioid trends, and rapid on-site testing enhance the rapid detection. And finally, the policy measures promoting research, data sharing, and public-private partnership support sustainable prevention and rehabilitation frameworks, which tailor the socio-cultural context of Himachal Pradesh. And next is the technological advancement in toxicology. For rapid detection of the heroin
or we can say cheetah, we need the advanced instrumentation, and in that advanced instrumentation we use high resonance mass spectrometry, liquid chromatography mass spectrometry, gas chromatography mass spectrometry, which enable the sensitive and high throughput drug detection. And ambient ionization, we use DART MS, DESI MS, that allow rapid and minimal preparation for the screening. And after that, we also use the portable analyzer like Raman and FTIR devices, which support on-site testing and rapid testing. And after that, we also use imaging tools, hyperspectral imaging aids in non-destructive analysis. And on the current scenario, we also integrate the AI, in which we machine learning enhance spectral interpretation and early identification of the drugs, and intelligence sharing, interstate and cross-border platform track emerging opioids, and support coordinated enforcement needed. For future direction and international perspective, synthetic opioids crisis require multidisciplinary and international collaboration. We have to adapt lessons from the global best practices like the non-targeted testing, rapid sample mining, and enhanced reporting pipelines to catch the drugs before they become endemic. And research into novel rehabilitation strategies, AI-powered forensic workflows, scalable community programs is underway. International conferences and collaborative research will integrate the latest scientific, legal, and clinical approaches. And at the end, we'll conclude that the cheetah crisis in Himachal Pradesh is at the intersection of chemistry, crime, public health, and social change. It requires a modern forensic technology and regionally informed policy framework, which enhance and also enhancement of the mental health care of the adults and sustained cross-disciplinary collaboration. Only through a comprehensive and well-resourced and empathetic approach can Indian society and forensic science meets challenges of synthetic opioid abuse. And we also require the high-end instrumentation in the forensic laboratory, and we need the integration of healthcare frameworks and the adaptive policy to needed to address this evolving threat. And these are the references of my study. Thank you. Thank you so much, sir, for your presentation on your topic. May I now invite our next speaker, Drishti West, Resident School Forensic Science, Himachal Pradesh University, Shimla. Your topic, sir, is Emerging Technologies and Global Ethics, Big Data, Digital Communication in Forensic Science. Drishti, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो, yes. Continue. Good afternoon, everyone. Am I audible? Good afternoon, everyone. I'm Drishti Naresh, research scholar at the Department of Forensic Science, Himachal Pradesh University, Shimla. And I'm very happy to present my review paper titled Emerging Technologies in Global Ethics, AI, Big Data, Digital Communication, and Forensic Science, co-authored with my research guide, Dr. Deepika Bhandari, assistant professor in the same department. In this presentation, I will discuss how artificial intelligence, big data, and digital communication tools are transforming forensic science, not only enhancing accuracy and efficiency, but also raising important global ethical questions. I will also highlight key challenges such as bias, privacy concerns, and deepfakes, and suggest possible solutions in future directions. Forensic science has always relied on technology,
But the recent growth of artificial intelligence, AI, big data, and digital communication platforms has transformed how evidence is collected, analyzed, and presented. Those tools allow investigators to recognize patterns, construct events, and process complex forms of evidence more efficiently than ever before. In short, it provides a faster and accurate investigation. Now let's talk about the artificial intelligence. AI is being applied in many areas of forensic work. It helps compare fingerprints and palm prints, recognize faces and voices, and detect image or video tampering. These systems can handle huge amounts of evidence faster than humans and often with impressive accuracy. However, AI is not free from problems. Black box systems such as deep neural networks are difficult to explain in code. If a system produces a match, investigators and judges need to know how reliable that result is. Scholars argue that forensic AI should build interpretable models, those that provide explanations as well as results. Another issue is bias. If training data are unbalanced, AI can unfairly misidentify people of certain groups, leading to discrimination. Big data in forensics. Forensic investigations now make use of big data from many sources. For example, CCTV footage, mobile phone logs, biometric databases, online transaction, and social media. By cross-referencing these data sets, investigators can link suspects to crime scenes, detect patterns, and even predict future crime hotspots. But there are also risks. Sensitive personal data may be misused or exposed, and evidence from social media is not always reliable. International regulations such as the GDPR, that is General Data Protection Regulation in Europe, place strict limits on how data can be collected and used. This means forensic terms must balance investigative needs with the rights of individuals. Digital communications. Digital communications platforms such as encrypted messaging apps, email, and social networks have become both sources of evidence and tools for collaboration. On one hand, they allow international forensic teams to share evidence quickly. On the other, they raise issues of jurisdiction, data privacy, and cross-border cooperation. Deepfakes challenge. A new challenge in this area is the spread of deepfakes. AI-generated fake images, audio, or video can be realistic that may fool both investigators and courts. Detecting deepfakes is an ongoing arms race between creators and forensic analysts. Preserving original files, metadata, and using blockchain-based logging systems are some ways to strengthen the credibility of digital evidence. There are ethical and legal standards also with the use of these ethical with the use of these AI, big data, and other technological tools. The use of AI and big data in forensics raises major ethical concerns. Algorithmic bias threatens fairness, poor transparency underdetermines accountability, and mass surveillance risk violating civil rights. Global organizations such as UNESCO stress that AI must respect principles of fairness, transparency, and human dignity. GDPR gives individuals right over their personal data, which investigators must respect. The challenge is that laws differ across countries, making cross-border cooperation difficult. Now let's talk about the emerging solutions. The emerging solution, we can say federated learning, which allows investigators in different locations to train AI models without sharing raw data, helping protect privacy. We can also use blockchain systems that can secure evidence by creating tamper-proof records of how digital fires were handled. And thirdly, interdisciplinary collaboration. The interdisciplinary collaboration between forensic scientists, data experts, lawyers, and ethicists is crucial to make more technologies are tested, explainable, and used fairly. Future perspectives. In future, we can develop standard databases and benchmarks for validating AI tools.
We can also build global agreements for evidence sharing and ethical technology use. We can also train forensic professionals to understand AI outputs and avoid over-reliance, and to continue improving detection methods for deepfakes and other digital threats. Now, at last, I want to conclude that emerging technologies are reshaping forensic science in powerful ways, but innovation must always be balanced with fairness, accountability, and respect for human rights. By adopting global ethical standards and encouraging this interdisciplinary collaboration, we can ensure that these technologies truly serve justice. Thank you for your attention. You, Dristy, and for your thought-provoking and insightful deliberations. Your topics. Hello. May I now like to invite Dr. Rajan Negi, Associate Professor of Commerce from Government College, Nilband, District, Kullu, Himachal Pradesh, to present a topic, determinants of buying behavior of customers in the retail sector and analytical study. Dr. Ranjan ma'am, if you can hear you, please. Go ahead with your presentation, ma'am. Hello. सुन रही हो मैम, कृपया अपने टॉपिक के साथ टॉपिक प्रेजेंट करें. टॉपिक सभी प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज निर्माण डिस्ट्रिक्ट कुल्लू. राजन नहीं है कोई. Our next participant is Mr. Satish Kumar, Assistant Professor of Physics, Government College, Jhanduta. Sir, you also, if you can hear me, be prepared for your presentation. If Ranjan Madam is not available, Yes, sir. she is invited. Yes, sir. Am I audible, sir? Ranjan is not available. Sir, am I audible? Government College, Jhanduta, sir, you are invited to deliver your talk on the topic digital communication, evolution, applications, and future prospects. Good afternoon, respected chairperson, co-chairperson, and fellow participants of this technical session. My name is Satish Kumar. I am associate professor in Government College, Jhanduta. It is my privilege to present my paper on the topic digital communication, evolution, application, and future prospects. In today's world, digital communication is not just a technological advancement, but a powerful tool that connects societies, drive economies, and saves the future of human interaction. Communication is the cornerstone of human civilization. From early cave paintings to the invention of the printing press, telegraph, telephone, radio, and television, each advancement has brought people closer. However, the most significant revolution came with digital communication, the transmission of information in discrete binary form, that is in terms of zeros and ones. The rapid adoption of smartphones, high-speed internet, and cloud-based applications has made digital communication indispensable for personal, educational, commercial, and governmental activities. For example, online education platforms such as Coursera and Swam have democratized learning, while telemedicine has transformed healthcare accessibility. Thus, digital communication is not just a technological advancement, but also a socio-economic enabler shaping modern society. Fundamentals of digital communication. Digital communication is a process of transmitting information between a sender and a receiver using digital signals. The process involves several stages. For instance, first stage is source encoding.
Raw data, that is human speech, images, or video, is first converted into digital signal. For example, a microphone converts voice into electrical signals, which are then digitized using pulse code modulation. This makes the signal suitable for further processing and transmission. Next stage is channel encoding. To ensure reliability, redundancy is added to detect and correct errors caused by noise. Techniques such as Hamming codes, Reed-Solomon codes, and turbo codes play a crucial role in maintaining data integrity in long-distance communications. Third stage is modulation. Digital data is mapped into carrier signals for efficient transmission. Different schemes such as amplitude shift keying, frequency shift keying, phase shift keying, and quadrature amplitude modulation are used depending on the application. For example, modern 4G and 5G mobile networks use orthogonal frequency division multiplexing for high efficiency. Another stage is multiplexing. Multiple signals are combined and transmitted over a single channel. Time division multiplexing, frequency division multiplexing, and code division multiple access are widely used techniques that maximize the use of bandwidth. Last stage is decoding and demodulation. At the receiver's end, the signals is demodulated and decoded to reconstruct the original information with minimum error. Advanced errors correction ensures that even if the transmitted signal is partially corrupted, the receiver can accurately interpret the message. Advantages over analog systems. The first may be noise immunity. Digital signals can be regenerated, reducing the effect of noise. Another one is compression. Digital formats enable compression techniques, for example, MP3, JPEG, that save bandwidth and storage. Another feature is security. Encryption makes digital communication more secure. Another one is scalability, supports multimedia transmission and global connectivity. Evolution of digital communications. There are 4 or 5 generations of digital communication. The first one is early computing and telegraphy. It is from 1940s to 1960s. Another one is networking and satellites. It ranges from 1970s to 1980s. Then third one is internet and mobile revolution from 1990s to 2000s. And last one may be the modern era, which is from 2010 to 2020s. Applications of digital communication. In the field of education, e-learning platforms like SWAYAM, Coursera, and Khan Academy provide interactive and accessible education globally. Digital classrooms with smart boards and online assessments enhance learning outcomes. Healthcare, telemedicine platforms allow remote consultations, reducing the burden on hospitals. Electronic health records enable secure data storage and retrieval. AI-based chatbots provide primary healthcare advice and appointment scheduling. In the field of business and commerce, e-commerce platforms like Amazon and Flipkart use digital communication for order tracking, payments, and customer services. Digital marketing and social media ads are now more effective than traditional marketing. Cloud-based platforms allow global collaboration and outsourcing. Applications of digital communication in the field of governance. E-governance initiatives like Digital India use digital communication to provide services such as Aadhaar verification, online tax filing, and direct benefit transfer. Social media and society. Platforms like WhatsApp, Facebook have redefined personal communication. Digital platforms have also been instrumental in social movements, enabling citizens to mobilize and express their views. In the field of defense and security, military communication systems rely on encrypted digital networks. Satellites and drones provide real-time surveillance and intelligence. Challenges in digital communication. Digital divide. Unequal access to digital infrastructure creates disparities between rural and urban India. Cybersecurity is another threat. Increasing cyber attacks, data breaches, and misuse of personal data raise concerns. Information overload. Fake news and misinformation spread rapidly via digital platforms. Infrastructure gaps.
developing nations still face issues of poor connectivity and lack of digital literacy. Environmental concerns, data centers and communication networks consume huge amount of energy, contributing to carbon emissions. Future prospects, 6G networks. Expected by 2030, 6G will provide ultra-high data rates, near zero latency, and global coverage. This will enable immersive technologies like holographic communication, artificial intelligence integration. AI will optimize communication systems through predictive analytics, network trafficking management, and personalized content delivery. Quantum communication. Quantum key distribution offers unbreakable encryption, ensuring maximum security in communication. Sustainable communication. The push for green communication systems will encourage energy-efficient technologies, renewable power data centers, and eco-friendly digital services. In the end, we can conclude that digital communication has emerged as the backbone of modern civilization. From education to governance, healthcare to defense, it permeates every sector of society. While challenges such as cyber threats, misinformation, the digital divide remains. Future technologies like AI, 6G, and quantum communication hold promise to overcome these barriers. The focus should be on making digital communication more inclusive, secure, and sustainable to ensure equitable benefits across the globe. This is all from my side. Thank you. From Government College Janata Artistic Passport for your valuable presentation and information provided by you in your detailed talk. Thank you very much, sir. May I now invite our next speaker, Ashish. Mr. Ashish, research scholar, Department of History, Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala district, Kanada. Yes, Topic sir. of his discussion is society and governance, drug abuse, prevention, focus on cheetah, disaster, resilience, and social justice. Ashish sir, you are Yes, sir. invited on the floor. Thank you, sir. Respected Yes, sir. teacher. Thank you, sir. Respected teachers, dignitaries, and my dear friends. Good afternoon to everyone present here. My name is Ashish Ranjan, and I am a student of Central Institute of Himachal Pradesh, currently pursuing my master in history. Today, I am going to speak about important themes, society and governance, with a special focus on drug abuse prevention, especially the menace of chitta disaster, resilience, and social justice. First, drug abuse prevention. One of the greatest threats to our youth today is drug addiction. In many parts of our country, especially in North India, the deadly drug cheetah has destroyed countless lives. It is not only a health issues but also social and governance challenges. Addiction breaks families, ruins careers, and increases crime. The government has launched awareness campaign, rehabilitation centers, and strict law enforcement to curb smuggling. But governance alone cannot succeed without society participations. Schools, parents, communities, and religious institutions must work together to educate young minds, spread awareness, and provide emotional supports. After all, a healthy youth means a strong nation. Second, disaster resilience. We are talking about the disaster resilience, natural disaster, be it floods, earthquakes, or cyclones, remind us of the unpredictability of nature. Good governance means not only responding to disaster but also building a resilience beforehand. This includes early warning system, a strong infrastructure, climate sensitive policies, and trained local communities. Society too plays a vital role through community volunteers, local NGOs, and mutual supports in time of crisis. A resilient society is one where no one is left behind during disaster and recovery. Third, social justice. A just society is the foundation of democracy. Social justice ensures equality of opportunity, protection of right, and empowerment of the marginalized, whether they are women, the lead, tribals, or person with disabilities. Governance should not only be about laws and policies, but also about compassion and inclusion and fairness. Society must discriminated in all forms and embrace the values harmony, dignity, and brotherhood. Only they can India move towards the vision of true social justice as enshrined in our constitution. To conclude, society and governance are like two wheels of the same chariot. Neither can succeed alone.
Together, by preventing drug abuse, preparing for disasters, and ensuring social justice, we can create a healthier, safer, and fairer India. Let us pledge today that we will contribute, whether as students, citizens, or future leaders, towards building such a nation. Thank you and have a nice day. That's also. Ashim ji. Ji, sir. Thank you very much for your deliberations. It was very meaningful, informative, and thought-provoking. Thank you very much, Ashish ji. Thank you, We sir. are now invite our next speaker, Dr. Sujeet Kumar, Assistant Professor of English, Government College, Arki, District Solid, Himachal Pradesh. The topic of his discussion is the role of tribalism in traditional water conservation practices in Himachal Pradesh. Not present, sir. He's not Dr. Sanjeev. He's not. In which GC Arki that is not available. He has not joined. This conference. So we are going to the next speaker, Mr. Gupta, Assistant Professor of Geology, Kasar District, Mandi, Himachal Pradesh. No, he is not present. He too is not available, present, joined the conference online. Let's move on to the next speaker. Kumar Chauhan, Assistant Professor of Mathematics, Lal Bahadur Shastri Government College, Saraswati Nagar, Shimla. Climate change and its impact on apple farming in Himachal Pradesh. Gordon, sir. Not available. Gordon is sir. He too is not available. One penultimate speaker, Ms. Meera Sharma, Assistant Professor of Commerce, Government College, District Mandi. He is not. He too is not available. Hello, sir. Hello. Good afternoon, sir. Sir, I am Krishan Lal from Hamirpur College. May I present my presentation, sir? Krishan Lal. No. सर मेरे हिसाब से शेड्यूल तो आपका है नहीं आता वैसे ऐसे कोई भी क्या नाम बताया सर आपने? My name is Krishan Lal. My presentation was in the beginning. अच्छा हाँ yes you session one Dr. Krishan Assistant Professor Geology Neताजी सुभाष चंद्र बोस गवर्नमेंट कॉलेज में Sign your topic status of conservation in Himachal Pradesh issues and measures. So I should. Our prepared sir, please continue with the topic. Should I start, sir? Yes, of course. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. So I am sharing my topic, sir. So I hope it is visible, sir. Is my slide visible, sir? And here you please continue with your discussion. Okay, sir. Okay, thank you very much, sir. So topic of my presentation is status of ethiofaunal conservation in Himachal Pradesh. Ethiofauna means fish fauna. So introduction. Himachal Pradesh has many hill streams and many dams have been created across different rivers in Himachal Pradesh. And these dams are obstacles for fish migration. Actually, there are many fish which undergo local migration in these rivers. So these dams create problem for these local migrations, and fish need this migration for breeding and feeding purpose. Besides it, stones, sand, gravel, etc. are being removed for construction purpose from the beds of the rivers. This paper is based on the information obtained from Fisheries Department and Fishermen and Fisheries Department of Himachal Pradesh government. So ethiofauna in Himachal Pradesh includes these fish. These are the scientific names: Torputitora,
This is locally known as golden mahashir, also called as Himalayan mahashir. This is the state fish of Himachal Pradesh. Besides it, Labio rohita, rohu fish is there. Labio darrow fish is there. Labio bata, Labio diocylus is there. Labio calvasu fish is there. Gara gotyla, Crossochelus latius, Katla, Srihana mrigala. Then hypothalamic molotrex, silver carp. Himachal Pradesh is famous for this carp. This carp has got accidentally introduced in Govind Sagar Reservoir. And Pong Reservoir is also famous for Spiretta singhada fish. Fish provides cheap animal protein to the poor people, and many poor people they have this profession of fishing. Here it is the Torputitora, golden mahashir, state fish of Himachal Pradesh, and these fish are called as Indian major carps. Indian major carps are katla, rohu, and mrigala fish, and these are exotic carps. These are of Chinese origin. Common carp is one of them. Other one is silver carp, which is silvery in color, and lower one is grass carp. It eats grass. Here it is the scenario in different rivers where damming is there and almost drying of rivers is there. This photograph is one of the photographs of Nathpa Jhakdi area, and this scenario is there in different places, even in Chamba also, in Ravi River where Chamera projects are there, and at other places also. So there are different conservation issues. One is irregular flow of water in rivers, then shortage of water, no fish passes are there. There should be fish passes or fish passes at the dams so that fish can migrate from lower part to lower part to upper part and upper to lower part of the river. The destructive fishing is also there. In some places, people use dynamite to kill fish indiscriminately. Besides that, silt deposition is there because removal of soil is there for different purposes, and otherwise also with the rainwater, silt got washed into the water bodies, and this silt causes trouble for fisheries. Actually, it destroys the breeding grounds of the fish. Here, one of the measures in fisheries in Himachal Pradesh is there that any fish which has not attained a particular size, which is known as minimum harvestable size. If such a fish or any fish which has not attained this size got trapped in the gill nets of the fishermen, then that fish is to be released again in the reservoir without harming and without killing that. So this size in case of Katla is 45 centimeter. In case of Torputitora, it is 50 centimeter. In case of silver carp, that is Hypothalamic molotrex, it is 45 centimeter. In case of grass carp, it is 45 centimeters. So different sizes, harvestable sizes are there, and these have been calculated in such a way that any fish which has attained this size has definitely breeding has been, or spawning has been done by that fish. Here it is Hypothalamic nobilis, big head carp, almost similar as the silver carp is there. Different species is there. Here different fish are there. These are Labio, Torputitora, and common carp in photograph. This is common carp in Govind Sagar Reservoir. Here it is Srihana Ribba, again from Govind Sagar Reservoir. It is grass carp. In a report which was published in 2024, it was related to the catch of global catch till 2022. 2022 तक जो भी कैच हुआ उसकी रिपोर्ट FAO ने 2024 में पब्लिश की है. तो उस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा अगर फिश पकड़ी गई है, कैच में आई है, तो वो ग्रास कार्प थी. यही इसको और भी नाम से इसको जाना जाता है. तो ये टीनोफेरेंगोडॉन आइडला मैक्सिमम कैच में थी.
and this is Labiobata. This is Labiocalbasu, Calbans, and this one is Cyprinus carpio, common carp. This is mirror carp, and here it is Labiodaro. This is Labiodiochilus. This is Rohita, Labiorohita, Rui or Rohu fish. And this is Cystomus sarana, sarana fish के नाम से इसको जानते हैं. This is Pontius sophor, ये ornamental value भी इस fish की है. This one is Pethia ticto, small fish. This one is Salmostoma bacella, रिजर्वायर में काफी ज्यादा पाई जाती है, पोंग रिजर्वायर में और गोविंद सागर रिजर्वायर में, और दूसरे रिजर्वायर्स में भी हिमाचल में काफी है. This is Beris berilla, again a fish of ornamental value. This fish, this one and this one, are called as hill trouts. Hill trouts. This is different to the trouts, but these are hill trouts. Berlius species हैं ये Berlius vagra है, and this one is Denio. This is the fish on which different types of the experiments are being conducted at different places at molecular level. ये Denio है, zebra Denio भी इसको माना जाता है. Zebra like strips are there on the body of this fish. And this one is Rasbora deniconius, and this one is Cyzothorax richardsoni. इसको स्नो ट्राउट के नाम से जाना जाता है. ये ठंडे पानी में, ठंडा पानी जहाँ कहीं भी है, उधर शिमला के एरियाज में, कुल्लू के एरियाज में, वहाँ भी ये काफी पाई जाती है. दिस इज स्नो ट्राउट. दिस वन इज क्रोसोचिलस डिप्लोकाइलस, ये हिल स्ट्रीम्स में पाई जाती है काफी. एंड दिस वन इज आल्सो वेरी मच कॉमन इन हिल स्ट्रीम्स. इसमें देख रहे हैं शक्कर है इसके माउथ के नीचे की तरफ, सो दैट इट कैन अटैच इटसेल्फ टू द stones available there in hill streams, and it can avoid or it can tolerate fast flow of the water of the hill streams. Garagotila is the name. Here it is Botia birdi. This one is Botia loha chatta. This one is Sipirata singhala. Singhada fish के लिए पोंग रिजर्वायर बहुत फेमस है. पोंग रिजर्वायर में ये फिश कैच को डोमिनेट कर रही है. मैक्सिमम कैच इसी फिश का है, स्पिराटा सिंघाला का, पोंग रिजर्वायर में. एंड दिस इज रिटा. दिस वन इज यूट्रोपिस्थाइज वाचा, रिवर्स में, रिवराइन एरिया में होती है. दिस वन ऑफ द कैट फिशेस. दिस इज एम्ब्लिसेप्स मंगोयस. दिस वन इज ग्लिप्टोथोरैक्स केविया, ये भी हिल स्ट्रीम्स में काफी पाया जाता है. दिस वन इज ग्लिप्टोथोरैक्स कोनिरोस्ट्रेस. This one is Glyptothorax pectinopaterus. This one is Calerias batrachus. This one Channa gachua. This is Channa punctata. Channa striata. Sol के नाम से भी इसको जानते हैं कई बार. Solfish. ये snake head commonly इसको बोला जाता है. This one is Mast assemblus armatus. These are different measures. Awareness camp should be there for the conservation, for creating awareness for regarding fish conservation among the fishermen and laymen. So welfare schemes are also there for the fishermen. Mess size regulation is also there. Any net which is not having mess size, not mess size more than 5 centimeter cannot be used. 5 सेंटीमीटर जिस नेट का मेस टू मेस साइज नहीं है, ऐसा स्मॉल साइज का नेट कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं. एंड दोज पीपल हु डू नॉट हैव लाइसेंस कैन नॉट इवन हैव these nets. They cannot do fishing. There are fisheries cooperative societies also at different reservoirs in Himachal Pradesh, and scientific management of fisheries is there. Even sale of fish is under the supervision of State Department of Fisheries. Seed stocking is also being done by State Department of Fisheries for conservation reasons. And for 2 months in general waters during the monsoon season, no fishing is allowed in general waters. And in those areas where trout fishing is there, for 4 months during the winter season, no fishing is allowed. So these are some measures, different measures for fish conservation in Himachal Pradesh. So conservation measures are effective. These are very effective because after the closed season, when no fishing is allowed for 2 months, after that period, production of fish increases. So thank you very much.
Thank you, Dr. Vishwanath from Government College Hamidpur. May I now invite our next speaker, the last one, Dr. Deepti Sharma from Assistant Professor of English, Rajiv Gandhi Memorial Government Degree College of Vidyanagar. He is not present. He is not present. The topic is literary reflections on community, culture, and ecology, indigenous pathway to prosperity. I think Dr. Deepti hasn't joined this conference. May I now invite Professor Kushal Sharma, Department of Mathematics, to present on 20 remarks on technical session 2 of this international conference. Vice Chancellor, Professor Mavi Singh, who is today's chief guest of this international conference organized by PS Negi Government College, Campio. Convener Dr. Utuman, Principal of Government College, Campio. Special guest Dr. Brijesh Chauhan, who is a renowned physicist. Coordinator Professor Jaran Negi, who is coordinating this international conference. And our star is ex-Mission Magistrate Sri B.S. Goldar Negiji, who hails from village Viru of the district Innor. He is a renowned magistrate and has written a lot of books. Then is among us District Welfare Officer and co-chairperson Ranju Bala, Faculty of Tourism and Travel Management at Government College Rampur. Other faculty members from different colleges who have joined this international conference through offline and online mode. I thank you all. We present in the technical session number 2 of day 1 of this international conference. I present before you the report of section 2. Total 6 persons delivered their lectures. Mr. Suraj Girl, who is a research scholar at Forensic Science Department in University, he delivered his paper on forensic approaches to drug abuse presentation, with focus on cheetah, which is prevailing is in these days. हम देख रहे हैं कि इसके बारे में बहुत जो है लोग अफेक्टेड हैं, बच्चे अफेक्टेड हैं, पैडलर्स हैं इसमें बहुत सारे लोग, तो बहुत अच्छा इन्होंने बताया है. एंड आई एनकरेज यू मिस्टर सूरजगढ़, आपका थोड़ा एनर्जी लेवल थोड़ा हाई रखना है जब भी आप कभी प्रेजेंट करते हैं. You have concluded your lecture within time span. That's good. And second presenter was Drishti Gare. She delivered her talk along with Dr. Deepika Bhandari on emerging technologies and global ethics and the use of AI, big data, digital communications in forest. Again, now also she explained challenges arising out of these new technologies. The third presenter was Satish Kumar, Associate Professor of Physics from Government Degree College, Jambuta. Sir also gave his lecture on digital communication, its evolution, application, and future prospects. Sir also explained fundamentals of digital communication. He also delivered his lecture in detail on online education platforms, digitization, which is becoming nowadays backbone of education. Then was another research scholar, Mr. Ashish. He is a research scholar of history. He delivered from, I think he is from Central University. He delivered his lecture on
digital communication, like a view, mention focusing on theta again. Then in the concluding lecture, Dr. Krishna, Associate Professor from Government College of Maypur, who is the Associate Professor of Geology, he also delivered his talk on status on phenomenal. That is some, I think, related to biosciences, fish species, which I could understand. He delivered a deliberate lecture on this. Thank you so much. Thank you, Professor Tushar Sharma, for your concluding remarks on technical session day 1 of this conference and session 2. It has really been an absolute pleasure to be your host of the day. Being a part of the first day of this international conference, the energy, participation, and curiosity have made the opening day truly absorbing and memorable. And I invite our college principal, Dr. Chauhan, to concluding remarks of Q1. Thank you, Professor Gyan Sharma. आज के इनॉग्रल सेशन से हम शुरुआत करें। हमारे आज के जो मुख्य गेस्ट रहे हैं, बहुत ही प्रमुख है, जीनियस, वन ऑफ द मोस्ट जीनियस पर्सन, वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, डॉक्टर प्रोफेसर मेरे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, मेरे गुरु भी रहे हैं। वही मेरा विषय भाषा से रिलेटेड रहा हो। मैं उनका आज का जो वक्तव्य था, उन्होंने एक ही अपील की, नाम ही पता है आपको, नाम ही है महावीर सिंह। तो हमारे जो, मैं अभी भी जब बात करता हूँ अपने नई जनरेशन से कि आपका हीरो कौन है, आपका इंस्पायरिंग कैरेक्टर कौन है, तो किसके नाम लेते हो? सेलिब्रिटीज के। हमारा सेलिब्रिटी कौन होना चाहिए जो हमें सच में इंस्पायर करे? और हमारे वाइस चांसलर साहब, इज रियली इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी महावीर जी। इस तरह से आपने हमें इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के चैलेंजेस की बात की, और जिस तरह से आपने हुंकार भरा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मीन्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसके लिए सालों लगते हैं। हमारा अगर आज का सुबह से लेके और अभी तक की हम बात करें, तीनों सत्र की बात करें, मुझे लगता हम प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं। हमारा जो विषय है, तो हमारा जो टॉपिक है, बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है। इतनी व्यापकता है इसमें कि हमने समुदाय को जोड़ा है। कहां से दिया? सभ्यता, संस्कृति, समुदाय, उन्नति, तरक्की, मॉडर्नाइजेशन, एआई, इवन हमने बहुत सारी बातें। तो इस मंच से मुख्य अतिथि महोदय को मैं आश्वस्त कराना चाहूंगा कि ये जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा सम्मेलन हो रहा है, एक नए आयाम को स्थापित करेगा हमारे इस महाविद्यालय की महाविद्यालय के सानिध्य में। हम इसका आपसे भरपूर एक सहयोग भी चाहते हैं, जैसे आपने हमें आज बात की है कि अगले महीने आप हमारे महाविद्यालय में आ रहे हैं और हमारे विद्यार्थियों के साथ और हमारे फैकल्टी के साथ आप एक प्रेस वार्ता भी करेंगे और अपना उद्बोधन भी देंगे। उसके लिए महाविद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा और आपका इंतजार है। बात हमेशा हम गांव से संबंध रखता हूं, मैं भी छोटे से गांव से, हमारे यहाँ पंचायतें होती है छोटी छोटी चीजों के लिए। इससे पहले हम कहाँ जाते हैं? शिमला की बात कर रहा हूँ, सोलन की बात करूं, पंचायत। लेकिन दैव योग से हमारे यहाँ क्या है? देव समाज। और इस क्षेत्र विशेष के लिए देव समाज का होना अपने आप में एक ऐसा आशीर्वाद है
कि एक आवाज से, देव समाज की एक आवाज से पूरा समाज एकत्रित हो जाता है। इसके लिए मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। एक मेरुदंड का काम कर रहा है। तो जिस क्षेत्र विशेष की हम समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं, और जहां पर एक डिसिप्लिन की बात करें, अनुशासन की बात करें, सीधा देव समाज से जुड़ा है, तो उस समस्या, उस क्षेत्र विशेष की समस्या को अगर सुलझाने की बात करें, डिस्कशन की बात करें, जैसे हमारे साथ बहुत सारे हमारे स्पीकर जुड़े हैं, उनके मैं नाम बात में कहूंगा, क्या यहाँ के लोगों को डायरेक्टली इन्वॉल्व करके समस्याएं सॉल्व होगी, या दिल्ली में बैठकर या उत्तर प्रदेश में या बाहर पे बैठकर ये समस्याएं सॉल्व होगी? यही चैलेंज हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय ने हमसे किया था। मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी जो 3 दिवसीय हमारा ये जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, एक खाली बातचीत करके घर में जाना, खाना पीना सो जाना, मुझे विश्वास है। और क्यों विश्वास है? हमारे यहाँ पर सबसे सीनियर सिटीजन हमारे बीच बैठे हैं, जो बहुत ही रिनोल्ड पर्सनैलिटी है, माननीय डीएस गोदास। यहाँ के सीनियर सिटीजन हमारे आज के इस अगर कॉन्फ्रेंस की बात करें, सबसे अनुभव, सबसे एक्सपीरियंस्ड आप यहाँ के हैं। और सबसे अच्छी बात है, इन्होंने यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और सभी की परिस्थितियों की बात करें, खासकर आर्थिक स्थिति की भी आपने बात की है, तो इन्होंने बहुत सारी कुछ लिखी। और इसके विपरीत जो हमारी आज की जो सबसे यंगेस्ट की बात करें, यंग जनरेशन की बात करें, उसमें हमारे पास परिमिति, जिसने अपना यहाँ शोध पत्र प्रस्तुत किया, परिमिति जी, जो जयपुर से इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और साथ ही में प्रीति सरयान, जो सरयान फाउंडेशन में बहुत अच्छा काम कर रही है। दोनों जनरेशन को हमने साथ लिया है। एक तरफ हमारे सीनियर मोस्ट यहाँ के जो हमारे रेनोल्ड पर्सनैलिटी है, और दूसरी तरफ यंगेस्ट पर्सनैलिटी। मुझे लगता है पढ़ने की तो मुझे लगता है 20-25 के बीच में होगा उम्र। यहां पर हम एकत्रित हुए हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा निकले। इस तरह से हम मक्खन निकालते हैं, नीचे मक्खन निकालते हैं, उसके बाद घी निकालते हैं, उसके बाद उस घी का क्या क्या प्रयोग होता है, उस सारे सिनेरियो को, उस सारे प्रोसेस को हम अलग अलग विषय के रूप में, अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग एक्सपर्ट्स के रूप में हमने आज भले ऑनलाइन और ऑफलाइन में हमने आपके समक्ष देखा होगा। मैं हैरान हूं, मेरी ये तीसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो मैं खुद कर रहा हूं। 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी हुई है, लेकिन जो जज्बा, कंटिन्यूटी, जो निरंतरता और जो मोरल की बात करें, जो यहाँ था, मैं कहना चाहूंगा जो ऑनलाइन में हमारे साथ लोग जुड़े हैं, कि जैसे ही हमारा एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, ठीक 10-10:30 बजे शुरू हुआ था, और अभी टाइम मुझे लगता है 3:30 के आसपास, विदाउट गिविंग एनी ब्रेक, ये हमारा कंटिन्यू चल रहा है। और इसके लिए में पूरे हमारे जो आयोजक, हमारी मंडली है जो इस कार्य को कर रही है, और आप सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो हमारे बाहर से प्रोफेसर आए हैं, और बाकी जो हमारे मीडिया के जो लोग बैठे हैं, आप सबको बधाई करना चाहता हूं। आई सैल्यूट योर पेशेंस। एक भी मैंने कोई ये नहीं देखा कि कोई उबासी लेता लिखा या किसी को सुस्ती आ रही। क्यों? द ऑडियंस एज वेल एज हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है, हम यहाँ बातचीत करने, चाय पीने या खाना खाने के लिए एकत्रित नहीं हुए। हम एक ऐसे विषय को लेकर, चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसका प्रैक्टिकल शेप आपने अभी देखा है। 14 दिन तक हमारा ये जो क्षेत्र है, सड़क हमारी बारी हुई। 14 दिन तक हम क्या सोचते रहे, ट्राइबल एरिया में क्या हो रहा है। मुझे यहाँ 14 महीने हुए, 1 साल 2 महीने, मैंने इतना बारिश यहाँ नहीं देखी। फिर जब मैं लोकल लोगों से बात कर रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, पहली बार हो रहा है, इसका मतलब ये चैलेंज है। और देखिए, संयोग देखिए, कोइंसिडेंस देखिए, हम किस विषय को लेकर बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली हमें अपने आप को सुदृढ़ बनाना होगा, इसलिए हम यहाँ एकत्रित हुए। अच्छे स्कॉलर्स हैं, जिनके मैं 2-3 के मैं नाम ले रहा हूँ। हमारे पास सबसे पहले मिस्टर कंवर चंद्रदीप सिंह जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में सीयू हिमाचल प्रदेश में प्रोफेसर है। इन्होंने प्रेजेंट सिनेरियो को थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जिस विषय को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ का जो लोकेलिटी है, अगर लोकेलिटी की इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ होगी,
तो उनके साथ चर्चा करने के साथ हमें लगता है कि निचोड़ कुछ निकलेगा। हमारे बीच में डॉक्टर संजय शर्मा जी, एसोसिएट प्रोफेसर, CSRD स्कूल ऑफ सोशल साइंस, JNU से जुड़े थे। मूलतः जिनका संबंध चंबा से, दलित समुदाय से है। मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूं। यहाँ प्रैक्टिकल बात की उन्होंने कि उन्होंने 2022 और 23 के आसपास पूरा 2020 से और 23 के बीच में यहाँ का पूरा क्षेत्र एक एक गांव उन्होंने नाम बताए कि वहां पर क्या समस्या हो सकती है क्या नहीं। लेकिन मैं उनको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि अब अगर प्रकृति के प्रकोप की बात करें तो 2023 वाली जो सिचुएशन थी, आज से कितना समय हुआ है, 2 साल हुए, 25 में बदल गई। शिमला में आपको मैं बताना चाहूंगा, पैदल चलना लोगों को मुश्किल हो गया, लगता है कि पेड़ गिर जाएगा, लगता है कि बड़ी बिल्डिंग गिरने वाली है। कभी आपने सोचा है जो हमारे लिए 4 लेनिंग का काम चला है, बड़े बड़े ब्रिजेस बने हैं, उनका लाइफ तो होगा कुछ, हम उसके ऊपर से अपनी गाड़ी लगाते निकलेंगे या उसके नीचे से हम पैदल चलेंगे, उसका परिणाम सोचा है क्या हमारे वहां? नहीं सोचा। से बात करता हूँ, यहाँ लोग कहते हैं गंगा, गंगा का सेब बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। कुछ लोगों से बात करता हूँ कि नहीं, गंगा का सेब बहुत अच्छा होता था, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं। मैं 1987 में आया था किलवा, चोलिंग के जुड़ा था, जुड़े से मुझे, वहां जब सेब देखा तो हमारे लिए वो एक ड्रीम लैंड था। ऐसा सेब कैसे हो सकता है? परिवर्तन देखिए, 87 से 87 और 25 के बीच में कितना अंतराल है? सिर्फ कितना? 3 दशक का, 35 साल का। सिर्फ 35 साल, मतलब 35 साल पहले जो किन्नौर मैंने देखा था, और अब 35 साल बाद जब मैं किन्नौर को जीने का प्रयास कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि अब जीना दुर्भर हो रहा है। ऐसा ना हो कि जो गलबा वाले का जो सेब था, सॉरी किलवा वालों का सेब जैसा जो क्वालिटी था, अब वो कंधा में जाते नहीं। लेकिन कंधा के बाद क्या है? व्हाट इज दैट? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी सेंसिटिव। हम क्या कर रहे हैं इसको, इसके इसके बचाव के लिए हम क्या कर पा रहे हैं? हमें अपने आप अपने भीतर सोचना पड़ेगा। हम लोग सर्च, कलर्स, हिस्ट्री, वर्तमान, फ्यूचर हमारे भीतर है। कैसे? हिस्ट्री की बात करते हैं, ये गोलदार जी हमारे पास बैठे। जब इनसे मैं बात की, पहली बार जब मैं इनसे मिला, खुद अपनी पहले बुक जो इनका बुक का जो पहला उनका बुक है, खुद मुझे देके गए कि इसको लाइब्रेरी में रखा। पूरी नहीं पढ़ी अभी, लेकिन पढ़ा, उसके बाद लगता है कि ये कैसे संभव हो सका। मैं इनसे बात कर रहा था कि हम पढ़ना पाते अगर यहाँ पर मिशनरी समूह ना। इमेजिन, यहाँ से लोग अढ़ाल, कहाँ है अढ़ाल, में वहां पढ़ने जाते थे। एक यहाँ स्कूल है हमारा चीनी में, और बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज यहाँ से निकली है, और वो हिस्टोरिकल स्कूल है। उस वक्त जो परिस्थिति देखिएगा आप लोग, कितना किलोमीटर पैदल चलता हुआ है, कोई डर नहीं था, जंगल था, डर कोई नहीं था, कोई पत्थर नहीं गिरता था। हमने विकास किया, डेवलपमेंट किया। क्या किया डेवलपमेंट में? चलते चलते कितनी कैजुअलिटी सुनता हूं मैं कि यहाँ गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरा, कैजुअलिटी, खासकर अपनी की बात कर। यहाँ अभी समय करेगा नहीं, ये बिना पंख की तरह, जैसे बिना पंख का अपना जो समय होता है ना पक्षी, उसकी तरह चलता रहेगा। फिर ह्यूमन बीइंग हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता दी गई है। हमें सोचना पड़ेगा, हमको एक्चुअली हमें अपने फ्यूचर को बचाने के लिए, अपने नई जनरेशन को, नए भावी अपने भविष्य को बचाने के लिए इस क्षेत्र विशेष को हमें क्या करना है, किस चीज की जरूरत है? तो इस क्षेत्र विशेष के लिए वर्तमान में क्या हम क्या कर सकते हैं? खाली किताबों में, भाषण में, यूट्यूब में, या जैसे आजकल जो भी चला है सोशल मीडिया में, इससे आने से कुछ होने वाला। हमें अब समय आ गया है कि हमें हम जाते ऐसी निंदा हम क्या करें। अब एक ह्यूमन बीइंग बनकर हमको क्या करना है? पढ़िए, हम क्या थे क्या हो गए हैं, क्या होंगे अभी, और विचारे, और हम क्या थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, और विचारे आज ये समस्या भी प्रश्न। ये पंक्ति है 1980-82 में किसी ने, एक टीचर होते थे, उन्होंने कहा था कि एक ऐसा समय आएगा फिर हम विचार करेंगे आपस में बैठ के कि क्या थे हम, कल क्या थे, आज क्या हो गए हैं, और अभी कितने वाले हैं।
अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये बादल फटना, ये सहयोग है क्या? ये सहयोग नहीं है, बादल का फटना सहयोग नहीं है, ये अभी भी हमें सचेत कर रहा है, तीसरी शक्ति हमें सचेत कर रही है कि जागो, वो क्या रहा है। आपने देखा कितने जंगल काट लिए गए हिमाचल की बात कर रहे हैं, ये लगा दी, पौधे लगा दिए और कुछ उनके फोटो को काटा जा रहा है, लेकिन उससे होने वाला क्या है? अब आ गया है समय किस चीज का, जमीन से जुड़ने का। अब आ गया है कि हम इस धरती से जुड़े, इस धरती के बाहर को जो हमने अपना बोझा बना दिया है, धरती के ऊपर हम बोझा बन के दौड़ रहे हैं, इस धरती के भार को थोड़ा हम अपने साथ, अपने अपने ऊपर, अपने शोल्डर के ऊपर ले, ताकि एक बैलेंस बन सके। और बैलेंस तभी बन सकता है जब आत्मसात करें। आत्मसात किसको करें? ह्यूमैनिटी को। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है कि वो जंतु पक्षी जितनी भी बढ़ती राखी होती है, उस सबकी सुनते हम लोग, हम सबका संरक्षण करें और सबसे पहला संरक्षण अपने आप का करें। अपने आप संरक्षण कब होगा? हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की होती है? ऑक्सीजन की। जब सांस ही नहीं रहेगा, अगर आपने हनुमान नाटक आता था बहुत पहले, छोटे देखा करते थे, तो पवन सुत हनुमान थोड़ी देर के लिए की सांस लेना बंद हो जाएगा, दुनिया का क्या हुआ कि एक पल के लिए जो ऑक्सीजन वायु उसको बंद कर, ये उन्नति नहीं है। अगर आप थोड़ा इतिहास देखेंगे, उसमें कुछ क्षण के लिए, सेकंड ही कुछ क्षण के लिए, जैसे ही हवा बंद होगी, ऑक्सीजन बंद होगी, क्या हुआ? क्या जीव जंतु पशु पक्षी वृक्ष तरु सब मुरझाना शुरू, एक सेकंड में। उस वक्त की कहानी कही, कितने दूरदर्शिता थी हमारी, सीधा विजन देखिए हमारे बुजुर्गों का, उसका कि ऐसा होता है। यहाँ जंगल भी आती, हमारे यहाँ जंगल सुना है आपने? जंगल शंकर जी के, शंकर भोलेनाथ शंकर जी के वो कथा है, सुना? एक दिन ऐसा आएगा, फिर ऐसा होगा। हमें बताया गया था जब हम पढ़ते थे, पिताजी कहते थे एक दिन आएगा जब दूध जो है पैकेट में लाएंगे आप, और नमक पैकेट में लाएंगे। और आप खाली बात, हम दूध और उसकी बात करते हैं, ग्रोसरी आइटम की बात करें आप, बड़े बड़े मॉल उसमें जाते हैं लोग, टोकरी उठाते हैं उसकी सारी मटेरियलिस्टिक तो हो गए, लेकिन इंसानियत को, भगवान कृष्ण जी को अपने मामा जी का वध करने के लिए क्या करना पड़ा? अवतार लेना पड़ा। माँ बाप देखा आपने? सबसे पहले अम्बी क्यों मारा गया? मामा को क्यों मारा? कंस को क्यों मारा? क्यों कंस का वध क्यों किया? मानवता की रक्षा करनी थी। हमारा धर्म बाद की बात है, मानवता की रक्षा करनी थी। और हम एक दूसरे की बात करें, अगर हम लोगों में आज ह्यूमैनिटी जाग जाएगी, तो ये जो जितनी भी रिसर्च है, ये सारी ये ओजोन लेयर ऐसा हो रहा है, कोई चीटा खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, और भीतर पनप रहे हैं, हमारे भीतर जो आत्मा है, जितनी उसको, उसके प्रति हम सजग हो जाएंगे कि जितनी वो निकल जाएगा, उसी हम शरीर में हमारा शव बनकर रह जाएगा, तब तक हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। तो दोनों शिक्षा क्या हो, नैतिक और सैद्धांतिक शिक्षा। मुझे लगता है कि जो हमारा 3 दिवसीय जो हमारा ये हमारी जो ये कार्यशाला चल रही है या संगोष्ठी चल रही है, इसमें हम खाली मेटेरियलिस्ट ना होकर यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के पशु पक्षी के साथ, यहाँ के वातावरण के साथ उसको आत्मसात करें, उसको जीना सीखें, उसको आलिंगन करें। और मुझे लगता है कि ऐसा समय बहुत जल्दी आने वाला है जब हमको दोबारा से ये मोटरसाइकिल, ये गाड़ी, ये सारी चीजें सब देखा ना आपने, पेट्रोल कम हो गया, पानी में क्या पी रहे हम लोग, ऐसा समय इससे पहले, क्योंकि अभी तो उम्र हमारी, तो चलो हम तो 60s में आ रहे हैं, लेकिन मैं उनके लिए अपील कर रहा हूं जो अभी 20 वर्ष के हैं, 18 वर्ष के हैं, जो हमारे भाव आए, हम एक संकल्प करें, आज पहला दिन है कि सबसे पहले हम इससे सीख लेंगे जो हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने अपने जो भाषण दिया है या पेपर प्रेजेंट किया है, और सबसे बड़ी सीख हमें किससे लेनी है? आज के हमारे जो महोदय थे, हमें महावीर जी से, जिन्होंने कहा है कि बी प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि भाई अब ये उड़ना छोड़ दो, जमीन के साथ जुड़ो। हैरानी होती है जब एक बच्चे से हम पूछते कि करता हूँ या सेब कहाँ रहता है,
शुक्र है आपके पास नहीं बची, ऐसे ही कहा, ये तो कुछ पढ़नी पड़ेगी। और सबसे बड़ी समस्या जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जो आई है, दैट इज जनरेशन गैप। बुजुर्ग बेचारा हो गया है, क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी खत्म हो गई। बुजुर्ग बेचारा हो गया है क्योंकि हमने संपन्नता के सारे साधन जुटा लिए, लेकिन नैतिकता को छोड़ दिया। जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती है, सबके पीछे अगर बात करें हम, एक बात जरूर आती है कि ह्यूमैनिटी हम छोड़ रहे हैं, और कर्पूसों की तरह हम कर्पूस से मतलब जैसे स्टफ नहीं होता गाड़ी का, उसकी तरह पंच हुआ, दूसरा लगा दिया, फट गया, दूसरा हुआ, तरह की ह्यूमन बीइंग भी ऐसे हो गया, ऐसा होना नहीं, तो भागे हमारा। तो मैं बात बड़ी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आज का ये जो हमारा पहला दिन है, इसमें अलग अलग जितने भी हमारे पास उपमान या पाठ या जो हमारी शिक्षा या जो हमारा नॉलेज वाली जो हमने बात सीखी है, तो रिपोर्ट तीसरे दिन बनेगी, सब पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि खाली हम सुन के और यहाँ से सिर्फ श्रवण करें और चले जाए, ऐसा ना। अपने जीवन में सबको पूर्ण करना पड़ेगा, और वो क्या है? नेचर से प्यार। नेचर से प्यार करने का मतलब है, आपको पता ही है, नेचर की द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ नेचर क्या है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ही अब अपने आप को सोच ही रहा है, मैं क्या करूं? धरती के ऊपर हम इतराते हैं, अपने ऊपर बोलते हैं हमने, हम प्रोफेसर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, डीसी हो गए। आपको पता है आकाश है, आकाश, उसके सामने धरती का रूप क्या है? एक चींटी के आकार। धरती का आकार एक चींटी के आकार की तरह हो, उसके ऊपर हम इतराने की, अब हम बड़े गंभीर हो गए। अब सोचने वाली बात है, तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन सा लग रहा है। तो मेरा आप सबसे यही अपील है, और जो हमारे साथ जुड़ी हुई है उनसे यही अपील है कि हम पहले ही बने, बने, अच्छा हमारा करें, तभी हमारा समाज शिष्ट होगा। समाज शिष्ट होगा तो मतलब पढ़े लिखे लोग होंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, और सबसे बड़ी बात है, जब एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो नेचर की इज्जत, और नेचर की इज्जत करेंगे ना हम पेड़ काटेंगे, बल्कि एक दर किसी को पेड़ काटकर 10 लोग बोलेंगे क्या पाप है। जितने हमारे दिमाग में आ जाएगा कि पेड़ काटना पाप है, उतने पता चलेगा कि हमें सच में बहुत सारे, आप इसमें देख लें कितनी लकड़ी लगी, फिर यहाँ बहुत सारे घर थे जिसमें पेड़ लगे। जो हमारे बुजुर्गों ने फसल बोई थी, हम उसको काट के खत्म कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। हमने आगे आने वाली अपनी भावी पीढ़ी के लिए क्या बोया है, क्या फसल लगाएंगे? यही कहूंगा, ह्यूमैनिटी के रास्ते पे हम चले, और छोटे में बड़ी बात कर रहा हूँ, यहाँ की जो समस्याएं हैं, ये जो हमारा जो टॉपिक है, ये बहुत संवेदनशील है। खाली ये नहीं होना चाहिए कि हमने 3 दिन वर्कशॉप किया, 100 ईयर बना, किया, रिपोर्ट सबमिट किया, रिपोर्ट सबमिट कर दी और खत्म। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं कहूंगा हम इसको कंटिन्यूटी में रखें, और एक दूसरे से सोशल मीडिया है, जैसे भी हम जुड़ते रहे, ताकि आने वाले समय में बहुत जल्दी हम इकट्ठा होंगे, ताकि उसमें हम लेके आए कि पहले तो ऐसा था हमारे गांव में, अब हमने ऐसा किया, कि आपने किया क्या, प्रैक्टिकल क्या किया। बस इतनी सी बात है, ये मेरी अपील रहेगी। और आज मैं फिर पूरे सभी जितने हमारे ऑडियंसेस हैं, खासकर हमारे नीति के विद्यार्थी हैं, हमारे पीजीडीसी के विद्यार्थी हैं, हॉस्टल की हमारी गर्ल्स हैं, और जो हमारे, मैं पहले विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे वॉलंटियर्स हमारे काम कर रहे हैं, काफी दिनों से लगे हैं, और पर्दे के पीछे जैसे हमारे पाचक हैं, खाना बनाने वाले लोग हैं, सर्व करने वाले हमारे सारे कर्मचारी वर्ग, और हमारे परिवार के सभी मेंबर्स, और आप सभी, शिक्षा परिवार सबसे बड़ा है, सभी अलग अलग क्वालिटी से आप आए। मैं महाविद्यालय की ओर से आपको आज के इस सफलतम आयोजन के लिए अपने तीनों ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। Thank you, Principal Sir, for your provocative insights and practically delving deep into the topic of this international conference. We are conclusive. Effective, distinguished dignitaries, esteemed delegates and participants, and last but not the least, dear students of this college. Thank you very much once again for making this opening day of 3 days international conference very absorbing one and memorable.
Thank you very much. Let's discuss, but before that we shall take tea and we shall join tomorrow morning at 10:30 a.m. sharp. Till then, bye bye. Thank you. Jai Hind, Jai Himachal.